Can't hear. Uh, Okay. Namaste, good morning to everyone. Myself, Dr. Janardhan Tripathi, Assistant Professor of Sanskrit Department, Sri University, Cuttack, Odisha. And today I'm going to be present on my topic, Sanskrit, some insights as a computer programming language. So first of all, come to introductions. Just a minute. Okay. So, Sanskrit is a unique language, or it contains not only good kind of wisdom for the people of this country, but it is also an incompatible and right way to acquire proper knowledge and is the significant for the people of the entire world. So Sanskrit is known as Deva Bhasha. We know very well. So it is the language of the gods. So it is also recognized as the mother of the Indian language. So it is mainly classical language also, or it is a great part of our the old culture heritage. So it is obvious that the Sanskrit literature is contain all sorts of vidyas, we can say science or knowledge. So first of all, I'm going to the Vedas. The Vedas are the soul of Indian cultures and tradition. It is the storehouse of all type of gyanas, like exam, wisdom. So which are really useful to maintain a healthy and sensitive life in the society. So it is also widely known as the source of the root of science, including physics, chemistry, architecture, science, geometry, astrology, medicine, meteorology, Ayurvedic also. So all these subjects are also separately discussed in various texts and commentaries of the vast literature of Sanskrit. So as well as traditional as well as the modern Vidyas or the science was exhaustively known as our ancient saints, poets, writers, and the commentators. So next I'm going to be derivations meaning. So Sanskrit is the refined or purified language. It's create some upasar ke dhatu ghan pratyay. It is the insights. So the Sanskrit many verbal adjective Sanskritam may be translated the put together, constructed well or completely formed, refined, add-on and highly elaborate. So come to the point scripts and language. So how is purified or correct language? Two major points is uh, I mentioned here. So we have a scientific grammar traditions with nothing to be changed like comma or full stop. Or this is the specially of Sanskrit language. And the second one is vast dictionary. So next point is as a spoken language. So in the 2001 Census of India, 40,135 people report of the Sanskrit is the native language of the science. And the Sanskrit Varti conducts speaks Sanskrit workshop to popularize the language. And also Indian newspapers have published reports about several villages face the result of the recent events attempts. So all the parts of the populations, including children, learning Sanskrit in other even using to the some extent in everyday communication is important for the Sanskrit. So come to the point Sanskrit efficiency is a major point. So Sanskrit makes use of the declension in nearly every part of speech. This meaning the end of the words, every single one of them change depending on the part of the speech they are the supposed to be. So even proper nouns are not exempt. So the ends of the people names change the sentence depending on whether they are the subject or object. So this is the bit of a problem for people whose name don't end with the vowels, and there is the provisions for that in Sanskrit. So whatever the rules are there. So the rules of the inflection are the precise. Just by knowing the ends of a word, one could know is the role in a sentence. This make the word or a non-issue. So a three-word sentence could be the written 6 with the four-word sentence in the 24. So it is the particular the time mentions. So come to the inside focus on the claim. I mentioned my topic. So the paper does not at all any content in the claim. So mention or indication in Sanskrit can we use, how will we use programming language? So in fact, the one and only instance of the world program. So every single use of the word code or variations therefore have been the used to the describe sentence construction rules or grammatical syntax. So next one is Sanskrit as a computer language NLP. So there is a lot of difference between the Sanskrit being suitable for the NLP and being the best perfect language for the computer programming. So for Sanskrit to be truly best language for computer programming, a majority of computer users should be fluent enough in it. So otherwise, it is a much easier to learn computer friendly language. So how we can use
we will learn Sanskrit and then use it for the programming computer. Yes. So here I mentioned Sanskrit is a language that has not been explored for NLP like English, Spanish, or even Hindi. Absent evidence is seldom the evidence of the absence. So in my opinion, here I mentioned here. So is the computerly if it is the simple like you say. So the thing with Sanskrit, as I understand, is that all sentences can be very simple. Thereby the making is the semantic pleasures. So, when people say computer frame, they mean it is the simple to create or AI generated sentence. So, without the worrying about contents or grammar mistakes, so all AI can generate full novel in Sanskrit and it will be free any grammatical error. So, compared to English, there will be the less contextual errors as well. So, if a human can understand the Sanskrit, computer will find it treasure to generate response with the simple rules. So it has sadly as for the programming Sanskrit or any natural language will have the same problem. So unless the whole use of the computer is to generate to lot of text, any natural language in a disadvantage. So in simple terms, if we'll apply novel writing would work better in the Sanskrit then contextually completed language. So it also advantage of using Sanskrit. So at the same time will be includes some learning activities also. So we know that the Sanskrit is the most structures in construction language which naturally any default. So these things make it a good language of computer programming. So, but the Sanskrit is also one of the most empirical language. What we at Trin English has many words for the Sanskrit like vrikshaha, taru, padaha, nagaha, kujaha. So which makes it not good for programming. So unless the ambiguity is removed, Sanskrit cannot be used for computer programming. Yes, next slide I have mentioned here. Sanskrit and multi-strategy literacy of languages. Huh? So right from the Vedic times, there has been the India a tradition of synthesis of knowledge. Vedas themselves have spoken to celebrate discovery of the knowledge. How will be pronounced like so? How will development of wider high speeds of knowledge? So as a result, Sanskrit has been a vehicle not only for sublime or inspiring literature, but also of yogic science, philosophy, dharma shastra, ethical course, numeric system, or natural science. So we'll apply all the science and pragmatic knowledge. So Sanskrit is also Indo-European language. So Sanskrit stands close to the root of English. We'll call the European language classical and modern. So many English words are related to the words and words form that also exist in Sanskrit. So we'll study like illuminance and a grammar and etymology. So next I am mentioning here the brain exercise and advantage of Devanagari script. So in Devanagari, consonants are written in the line to the right. So order and vowels, but the signs are positioned above, so below or on in either side of consonant. So if will we apply the vowels posted the consonants is writing certain words but the following speech making unique script. Yes, here I mentioned the slide advantage of the today's world. So computer is a friendly language. So we'll made on the Sanskrit language is the proper application in the computer for the propagation of this language as well as for the advantage of the researchers and lovers of the Sanskrit. So in this modern Sanskrit is being the treated is one of the scientific languages of the world. So it's keep Devanagari, which we know very well. So it's also easily accessible by the computer in its various program. So how will know the computer very powerful instruments. So the advantage of the offered by these tools of adapted for the purpose of the Sanskrit studies in India. Last slides yes, here I gave just gave a conclusion in my side. So what of the Panini grammars is what the modern linguists they call it generative grammar, and that is the what they use to describe language grammar themselves and how will the happen. That is the also way to computer scientists describe of and syntax of programming language. So we'll know that others the ancient Indian grammar in Panini describe the structure of the Sanskrit using the rewriting rules similar in script of the English language. So and programming language huge. So in my opinion, computer using the Sanskrit and Devanagari commands would maybe the more efficient or less efficient. Thank you so much, sir.
Thank you, Dr. Jannaran Tripathi. A very well presentation on traditional and advantages of computer science and Sanskrit language. Any observation? Any questions? Any one question? I have a question. My name is Lakshmi. I have a question here. You had earlier mentioned in one of those slides that the ambiguity of the meaning that is prevalent in the language is one of the impediments for using computers as a programming language. It was a very well made observation. But then we also have English, which has got synonyms in it. Right, you have synonyms for many words. So if English could be used, to parse these sentences and come up with a definite meaning, why is it not possible when it comes to Sanskrit? Or how do we actually go about using it somewhat in a similar way, the way English is used, in order to come up with the most appropriate meaning for a sentence? Thank you so much, ma'am. It's the wonderful questions. If I'll go to the font like Sanskrit 19 font and like Unicode font that's available. So if we'll put the English verses, diacritic marks difference, and you will do most ever to go through the fonts difference, Unicode, Mangala, and Akriti font. So if we'll be analysis of the syntax, so many differences coming. So we'll analyze what is the important for us. No, my question was not about the Unicode fonts. My question was about the semantics of the language. Semantics. Yeah, when you talk about the semantics, you talk about multiple meanings for the same command. So if we can work around with English, which has also got synonyms in it, how do we do the same workaround for Sanskrit if we want to use Sanskrit effectively as the language for programming? Yes, ma'am. Very good questions is available. So if we'll go to the sentence format, so many I'm going to the so many topics are available. So if going to the sentence program, though so many conclusions coming like for so many command and clients are coming. So if we go to mention the syntax, so many differences coming like centuries. If we'll think centuries, then my mind like whatever the concludes of the evening that flights are coming. So how many centuries are coming and will for what will the put in index program? I'll present all the script. Just ma'am, just 1 minute. See ma'am, here I just mentions here. Just a minute, ma'am. See, ma'am, here I just mentions the NLP program. So if will the apply for the perfect language of computer programming, so if will be apply for the Sanskrit techniques, it is a truly language for the computer programming. If will be the user for the computer users should be fluent of enough it must easier of to learn computer friendly language. So if will be apply for the sentence, so many different ways coming like commas, then like friendly language, also different ways are coming, ma'am. In the basic topic is my topic is the things ki why how we apply for the NLP program, what will be advanced the computer science in basic. So here I mentioned. Okay, Dr. Tripathi, very thank you and very useful presentation.
Now I would like to invite Jyotish Ranjan Sarkar. Mr. Jyotish Ranjan Sarkar. Jyotish Ranjan Sarkar. Yes, sir. Is he available? Yeah, please. Can I please share my slides? Yes, yes. You cannot start screen share. It is appearing that you cannot start screen share. Yes, please allow me. I would like to share my screen. Dr. Janna Rani Tripathi, please close your presentation. Madam, please. Yes. Yes, sir. Mukang karati vachalang pangum langhayate girim yat kripatamaham vande paramananda madhavam sada shiva samarambham shankaracharya madhamam asmadacharya pariyantam vande guru paramparam. Very I would like to thank Dr. Govind Sharma, my reverend professor, and all the distinguished scholars in the session, along with all the listeners, for allowing me to present my paper here before you. First, I'd like to start with a quotation from our Indian Constitution, Part 4A, that depicts the fundamental duties. Here, in its 51A article, fundamental duties, it is written here to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. This is simply echoing the tone of Indianness, that we are carrying a rich scientific tradition in our blood that we have to carry forward for the future generation to better, more comprehensive and fruitful future for our future generation. Actually, this paper intends to explore the methodologies of science and scientific approaches of Hindu tradition embedded in many Sanskrit literary works and philosophical texts. It is not merely a stock of data regarding the topic, but also an endeavor to find out clues to confront some unsolved paradoxes and proceed on to bridge up the cognitive state to correlate the integrity of consciousness to truth with pedagogical approaches. According to Hindu conscience, the most scientific language or linguistic pattern, a state of humanity, namely Sanskrit, comprises of a higher goal of life altogether, and thus Sanskrit literature too. Actually, when we are talking about science, then sorry, is it not working? What is the desideratum? The desideratum is clear perception to attain the truth, integrity of knowledge kingdom, and oh my god, it is not working. Anyway, I think it's somehow it is paused. And a giant leap towards theory of everything, on which Albert Einstein also allowed a long span of his life. Actually, I'd like to start with the mystery
that depicted in our Rigvedic text in 10th Mandal, that in the Nasadiya Sukta, we all know about all these things. There was neither non-existence nor existence at the beginning of the universe. This is the sentiment. This is the sentiment that tuned by sages or rishis. Oh my God. What is the background? And actually, I am facing a problem to share these slides. Anyway, don't worry. Oh my God. I think it is not properly downloaded. Anyway. If you are facing any problem, then you may present orally. Okay, sir. Actually, it is paused somehow. Anyway, just a minute, sir. Just a minute, sir. I can. Oh. Am I audible to you, sir? Very clearly. Okay. You are audible. Okay, sir. Previously, in our earlier views, the subversive and malevolent foreign foray and invasions, these are actually disturbing the Indians or Bharatiya or Hindu Samskriti that is carrying a rich tradition of scientific and technological approaches towards life altogether to make it more comprehensible and plausible on this planet. The subversive and malevolent foreign foray and inventions, a deep conspiracy to regimentation, attempt to mop up rich tradition with static outlook or satiric outlook towards our Hindu texts, Occidental dominance and lack of traditional practices are the basic hindrances to go forward towards the final destination, that is moksha. But the present scenario is truth cannot be suppressed ever like Akshay butter. Inquisitive minds starts noticing mastery of Oriental knowledges nowadays. And now the seedbed is prepared to touch the crescendo because the mood of the nation and the entire world is now agree with the fact that we are having a rich tradition regarding science and scientific outlook. But the question remains, is there any contrast? Actually, what science and technology does, actually, it is certain that the universe is ruled by certain laws, and it is certain that these laws aren't set by any human being. It is science, that our scientific mind or that state of mind that only discover them, and technology is the applied part of it. But what Hindu Shastras are saying regarding this matter, the whole creation is ultimately intended for the experience of the soul. Ved and Vidya, both are originated from the same verbal root, Vid. And we have already listened that our previous presenters, those who have presented regarding computer science and Shabda and Shastras, they are very masterly trying to do this thing. But the reality is, nowadays, even last few decades, we have witnessed that devastating weapons are the index of scientific achievements, because ethics and aesthetics have a role to play in the domain of modern science, and according to that, a particular section, mostly Marxian theory-oriented philosophies. And as a result, we have seen the devastation of this planet and a rat race regarding creating of dangerous, deadly weapons. Contribution of Hindu
in scientific achievements are clearly depicted in a booklet published by Sanskrit Bharati, that is Science in Sanskrit. All domains of science have been published here. This book has been published in 2007, and we have seen here, we can easily peep into this: astronomy, physics, engineering, aeronautics, chemistry, metallurgy, mathematics, arithmetic, geometry, medicine, Ayurveda, botany, agriculture, irrigation, ecology, cosmetics, art and culture, yoga, everything. All human walks are touched by this. And these are the not. There are so many other books. A History of Hindu Chemistry by Acharya Prafulla Chandra Rai in 1902. The Positive Science of Ancient Hindus, Acharya Brajendranath till 1915. Science in Vedas, Hans Raja in 1956. A Conscience History of Science in India, D.M. Bose, S.N. Sen, and B.V. Subbarappa in 1971. Vedic Cult Applied Science in Human and Health, Happiness and Longevity, V.P. Pandey in 1987, and many more. These are the works. But the present scientific approach, uh, now we are talking about the theory of everything. Theory of everything is the thing theoretical physics is trying to establish. All theories, physical theories, should be unified in a particular part, and that is why they have tried to unify all the force field theories: electronic force, E wave, magnetic force, M wave, electromagnetic wave, and gravitational force field, G field, dark matter force field, weak force field, strong force field. All these are now trying to unify in a single point. Professor Monilal Bhaumik has created a landmark research on this thing. Abdul Salam of Pakistan, they are also trying to do the same thing, and Einstein also tried all these things to unify in the same thing. But ultimately, this is the only theory that is now trying to be closer to the theories established in our Veda. Because in Veda, we have witnessed that Mahamahopadhyay Giridhar Sharma Chaturvedi, he actually now I'm trying to make an equation what he has rightly pointed out. Einstein, what did Einstein? Einstein contributed that E is equal to mc square, means the mass and energy conservation of in this universe. But this mass and energy conservation is not only the way through which he can attain the theory of everything. He requires something more. What is that? Acharya Mahamahopadhyay Giridhar Sharma Chaturvedi rightly mentioned that since consciousness and matter cannot be interchanged directly, the interchange takes place via vital force, that is prana. And when our previous speakers were trying to establish some programmings in computer application regarding Shabda, and Madam asked a very relevant question to it, but due to lack of internet communication, we won't be able to hear it properly. But I would like to point it out in that matter also regarding this, which is associated to this somehow, because prana or existence on this planet are not only confined here on this planet. Nowadays, it is ascertained that pranas are also maybe available in other planets also, or other galaxies also in this universe. Similarly, when we are talking about Sanskrit words, this is not only merely words or a meaning, but also there is something else than word and meaning, because it is not only a mere presentation on a black paper, on some white paper on black ink, because it is not only black and white, but also there are some other things, because when we are creating some word,
there is some intention. Parapashyanti Vaikhari Madhyama is also there. Not only that, along with pitch accent, stress accent and speech accent is equally important. Similarly, matter energy conserved in this universe, certain by Einstein, is challenged by our Veda, and it explains another dimension, that is matter and vital forces, that is also conserved through consciousness. The consciousness, that is very important. It is ascertained by our ancestors, and the holistic approach of Veda, Rishi Aitareya. In Aitareya Brahman, we have from Aitareya Brahman we can gather this thing, and it is rightly mentioned by our predecessor Mahapadhyay Giridhar Sharma Chaturvedi. But here we have to be astonished more how and why this truth can be developed and touched by our ancestors or predecessors. What were the methodologies? Creation of truth, a taste of truth, because you cannot deny the truth in any way. You can conceal it somehow, but ultimately we have to be in that much inquisitive and very much curious, so that we have to reveal the truth. We have to unfold the truth, but we cannot change it. We cannot mold it. We can suppress it for a time, but we cannot ignore it. Ultimately, that is why creation or taste of truth, that is the ultimate aim of our age-old tradition, and still we are carrying the same tradition in our blood. That is why we used to mention every morning that Chaturveda Puranani Sarva Upanishadas Tatha Ramayanam Bharatam Cha Gita Saddarshani Cha Jainagama Tripitaka Guru Grantha Satangiraha Eshaha Gyana Nidhi Shrestha Shraddhaya Hri Sarvada. We used to chant this every morning. Even today, all Hindus are doing all these things. But another thing is Pataka Shiva Je Channe Shastra Chintakaha Sarva Vyashanana Murkhaha Ya Kriyavansa Panditaha in Mahabharata. It is clearly mentioned here. And in terms of methodologies, we have categorized this thing that Hindu methodologies as creation of taste of truth, perception or observation, experiments. Because why experiments? Because we have discovered in the book of History of Science in Ancient India, Professor S.N. Sen have stocked a very clear picture of ancient Indian experimental sciences. He has discovered a lot of experimental laboratories and instruments, and not only that thing, he has preceded by Professor Acharya Brajendranath Shil. Fortunately, Brajendranath Shil has composed this work in the land from where now I am speaking, Kuch Bihar, because he was positioned as the principal of the then Victoria College, now named by his name, Acharya Brajendranath Shil College, Kuch Bihar. From here, he composed these monographs of or forward note of a history of Hindu chemistry, and he also mentioned very clearly, distinctively, what type and what kind of experimental sciences practiced in our land by our ancestors or predecessors. But the thing is, and that is why we have noticed that the first ever glass factory and the preparation of glass and ceramics in the Kapia village of Uttar Pradesh, clearly mentioned in a history of Hindu chemistry, and cannot be denied by anybody else in this academic world nowadays. Even the observation, experiments, fallacies of observation in our different philosophical schools, mostly Sardarshana, Vaisheshika,
Shankha, Yoga, Mimamsa, and Vedanta. Only the Vaisheshika makes the study of nature as its main creation, though others also deal with it when necessary. However, axiomatic thing, axioms are very important here in our Shastras because uh, the observation, that is, we go inward, was previously the observer, later becomes the observed. Philosophically, this feature of the observed and the observer is of seminal importance. It may also be noted in another way. A length is measured by a scale, which is only another length. The another length is an immutable length, which does not undergo any change due to either internal or external agencies. Similarly, a weight is measured only by another immutable weight, and so on. And this is the indication where we can get our Nyaya Vaisheshika and other schools. They are trying to establish this thing and praxis in our life, because in our Indian conscience, we know that Acharya means one who is actually practicing the task that he used to teach his students or disciples. He has to practice in his life. But that is why Swayam Acharya Sa Acharya. Jyotish Here, ji, yes, sir. Jyotish ji, Yes, sir. please try to Yes, sir. please try to conclude. Yes, sir. Yes, sir. Nowadays, we have already seen that in CERN we have a hydro collider that try to create the situation of the beginning of universe. And the Higgs boson already we have got from this hydro collider, the big collision in at CERN. Similar to Veda and Shankar tradition are going towards that direction to add another parameter in the theory of conservation, along with mass, energy, and what else. That was indicating by Mahapadhyay, Giridhar Sharma Chaturvedi. And that is why that actually encourages us that along with mass and energy, there should be a third parameter which is also conserved in this universe. Whether it is because in Shankha we have seen that Sattva Raja Tama Trigunatmakaha Prakriti. Trigunatmak means Sattva actually denotes the property of Sattva. Tamo and Rajo is mentioned here as energy and mass, respectively. Tamo means the entity that is mentioned here in as mass, and energy is rajas. So what is the sattva? That is consciousness, and that is the vital force should be conserved along with this mass and energy. That is the third parameter yet to be revealed. So we'd like to conclude in such a way by enchanting that very important quotation from Acharya Paramananda, Sri Paramananda Bharati Shankaracharya, that ubiquity of Atman as the ultimate observer is the underlying basis of perception. It is that establishes direct contact between the mind and external objects through the indriyas, means our five sense organs, along with the sixth one, mind. It is the field which connects the source and the sink. Without Atman, there is no action, no cognition, and no objects. Within Atman, there is no action, no cognition, and are no objects. Atman is the balance on one side of which is the object, and on the other is the mind. When the measure is equal to the weight in other pan, it is not the measure which perceives the weight, but the balance. And we are also looking for the balance and trying to
proceed on towards a new dimension where we can establish that Hindu or the humanistic approach towards the planet to sustain our for further generations more comfortably, more plausibly towards the final destination, that is moksha. Dhanavad for bearing my words, and thank you all for listening properly. If you have any question, you may put. Thank you, sir. Thank you, Jyotish ji. Thank you very much. Any questions or observation? Only one question. Okay, thank you very much, Jyotish Ranjan Sarkar ji. Now we have Dr. Dr. Bishwajit Purkayast from the Department of Computer Science, NIT Silchar, and I welcome the heartiest welcome to them. Now I would like to invite Madhusmita Shah. Madhusmita madam, are you there? Madhusmita. Okay, Dr. Richa Bhage. Yes, sir, I'm here, sir. Yes, madam. Perfect. Shall I start, sir? Shall I share my screen? Madam, you can start. Thank you, sir, and namaste. My topic is significance of practicing Sam, that is peace, known as peace also, in the governance of internal control system of corporate, in reference to the Shanti Parva of Mahabharata. So my name is Dr. Richa Bagir, Faculty of Management Studies from Srish University. And thank you for giving this opportunity. So this will be my outline. I'll be speaking about the abstract of the study, then introduction, Shanti Parva, model and analysis, and conclusion. So, sir, here the study is about the responsibility, in which is known as Raj Dharma in our Shastra. What I'm trying to do here is currently we all have evolved from the Raj Parampara से अभी जो हम अपने मॉडर्न एरा में हम आ चुके हैं, टेक्निकल एरा में हम आ चुके हैं, बट ये सारा चीज को हम ह्यूमन ही आगे कर रहे हैं इसको, है ना. तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें एक मानवता का जो एक अंश है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ. उसमें मैंने शांति पर्व को लिया है. महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं, उसमें से शांति पर्व 12वें नंबर पे है, तो उसको मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है. So, सर यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात कर रही हूँ. I'm talking about the corporate governance. So corporate governance is about the process, structure of mechanism that influences the control system of the company, because people have to maintain the relationship between all the stakeholders, shareholders, and the employees, and with the state and with the overall country, overall globe. So where people are working together, there's so many things are involved. First of all, the mind is involved. Later on, the man, money, and material. So first of all, the man comes where the mind is involved. So in the corporate governance, it's very important to have disclosure, transparency, and how the responsibility is taken care of. Usually, corporate governance, it's like after all the planning is done, all the when the implementation is taking care. Happening in the field, in the operation. So how the company is managing whatever the planning was there, is it going rightly as per our plan or not? So ये कौन कर सकता है? जो head में है, board of directors, they only do this.
जब हम लोगों को कंट्रोल करते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं कि तुम इस तरह से काम कर रहे हो या नहीं, इस तरह से काम कर रहे हो कि नहीं, तो बहुत सारे क्लैशेस भी आने लगते हैं. सो दैट्स व्हाट इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर्स, corporation stakeholders, employees, creditors, like that. So it is both implicit behavior and explicit behavior, and mainly thing is the moral etiquettes over here. The word again, next one here is the value based governance. जो भी पूरे इंस्टीट्यूट को गवर्न करता है, they are the head of the family. जैसे कि कोई भी घर में जो head of the family होता है, they have to be they have to considerate everyone in the family. सबका जो भी ध्यान रखना होता है. तो at the same time profit भी, at the same time जो right behavior है उसके साथ में goal को हम कैसे achieve कर सकते हैं, by maintaining the integrity between the employees, honesty between the employees. So in the Shanti Parva, it is known as Raj Dharma. The Shanti Parva mein what happens here is when Bhishma Pitama is giving the instruction to Yudhishthir that how a country should be governed. Those other things are known over here. शांति पर्व का मतलब ही होता है a book of peace, है ना. जैसे यहाँ पे सत्य, अहिंसा, अस्त्य, बहुत सारी चीजों को बताया गया कि एक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म क्या है. All these things are not a necessary nowadays. It should be an integral part of a human being who is living with other human beings, because we have to consider each and everyone's feelings, each and everyone's priorities with the profit, with the virtues, everything. So these are the what are the theories of good governance, and the duties of the leaders are written over here. Again, it's more about Shanti Dharma, how to uphold the Dharma. This was my primary research, sir, when I was doing. I could find out of this entire Shanti Parva from the 12th chapter, Sam Dama Danda Bhed. This was the word given by the Chanakya, but here also I was trying to relate it. But later on, I came up with a different model. This was the primary thing. And then this was the model which I could make. And this was when I was making this model. I'll just give you a little bit extra information. I was discussing in my class also. I told to my students, okay, this is I'm trying to build, and how do you see that? Which one is more required for you? So first one, empowerment means Sama, monetary means Dama, punishment is Danda, and discrimination is Bhed. I just use different words because that is the Kautilya's word, but here also some of the things were required. So my students were telling that everything is required because not everybody will understand from the Pyar Ki Bhasha. So that's how we were discussing, and this was the model which I developed along with my students' help. So this Raj Dharma good practices are empowerment, monetary, punishment, and discrimination. Now here, monetary, punishment, and discrimination are the external forces. What happens here is the monetary is some people are expecting something in return. That's why they are like pushed. So it is more of a push factor. And in the punishment also, it's again an external force where the people are fear of punishment or being judged. And in the discrimination also, it's kind of a FOMO, fear of missing out, fear of losing, fear of separation, fear of being judged. But everything has certain ratio to it. But the more prominent thing is the empowerment. When the employees are really empowered, it is an internal force that arises from within. Equality and recreation and moderate behavior, introspection, responding behavior, patience, all these things are the internal things. And so this thing empowers the people when people are really feel that they have the opportunity to work, where they really feel that they are at home and they are valued. Everybody would want to work in that perspective. So each one of the quality, how to empower an employee, that which will be like long term, which will have internal force arises from within. Equality, recreation, moderate behavior, introspection, responding behavior, and patience. So these are the things which I found out, and that's what I could found out in my result also, sir. These are the things we don't have to influence
them again and again. It is a self thing. They experience it. They are more attached when they really feel they are valued. And that's what, sir, when we imply this tactfully, a healthy environment is developed in the organization, and the SAM stands for this only. Equality, joy, happiness, introspection, boundaries, and peace. So when we consider everybody, when we consider every emotion, in the end, everybody wants to be happy. Nobody just wants to stay unhappy or into that clinging space. But we just have to give them the right platform. And who is the better person to do that other than the governance, the corporate governance people who are recruited for that, or the board of directors. It is more of a top to down, bottom in the management. So, sir, I'm really grateful for you to give this wonderful opportunity, and I'm seeing the seminar is going really well. So thank you so much. Thank you, Dr. Richa, for your paper. So, any question from the audience? Namo Namaha, Suprabhatam. My question is that is there any other availability of short-term course-based work with Gita and Chanakya Niti related to management? Please, if you have any idea, can you share it? Yeah, there are many courses which I see online and seminars which we see. If I get to know anything, I'll definitely post it. Thank you so much. Okay, if there is no more question, we can. Yeah, okay. Thank you. Thank you very much, Dr. Richa. Now I would like to invite Mr. Vinay Kumar. Dr. Vinay Kumar. जी विनय जी आप हैं? जी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आप अपना पेपर जी नमो नमः सर। हाँ नमो नमः। हमने जमा किया था सर, रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही जमा कर दिया, 250 शब्द का दिया था सर। नहीं नहीं, आप अभी कुछ बोलना चाहते हैं उस विषय में? हेलो, हाँ, आप उस विषय में कह रहे थे कि हमारा जो हमने नाम के साथ जो हमने शीर्षक दिया था उस पर कुछ आया नहीं था, ब्लैंक रह गया था। आपका विषय क्या था? हमने रिलीजियन और इंथेटिक पर दिए थे, उस पे था जगत जनक सूता जानकी जन्म सूता भूमि सीतामढ़ी पर दिए थे हमने। जनक सूता आप कुछ उस पे अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं क्या? सीतामढ़ी, आप उस विषय में कुछ अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं या आप अपना बाद में पेपर भेजेंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। श्री शुभम कुमार पांडे। शुभम कुमार पांडे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। शुभम कुमार पांडे, मेरा विषय है वैदिक ज्ञान परंपरा में मालवीय मूल्यबोध। क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना पत्र प्रस्तुत कीजिए।
वाग अर्थ थोड़ा समय की भी सीमा है, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए जी सर जी। वाग अर्थावि संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। प्राचीन काल से भारत अपने आप को विश्व के समक्ष प्रतिष्ठित कर पाया है आज तक, जो पिछले कारण सिर्फ इस देश की अपनी संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा में अति उत्तम परंपरा है। यह परंपरा वैदिक परंपरा है जो सदियों पुरानी है, जिसमें वेदों के ज्ञान एवं इसमें बतलाए गए कर्मों के आचरण में प्रयोग होने से हुआ है, जिससे उसके सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यक्तित्व गुण, प्रेम, अहिंसा, नैतिकता, शील, संतोष इत्यादि से दूर हुआ है। संस्कृत में कहा भी गया है, संगच्छध्वम समध्वम शुद्धः पूता भवतः यज्ञज्ञासः। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानवों में एकता व अखंडता की भावना को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। वर्तमान के प्रौद्योगिक युग में जहाँ सब कुछ वैज्ञानिकता के तराजू पर तौलकर परखा जा रहा है, ऐसे समय में मनुष्य के गुण धर्म को सही गलत के लिए विज्ञान से जोड़कर देखा जाने लगा है। मनुष्य जो मानवीय मूल्य है, क्या वह सही है या बस एक पुराने समय के ढोए जाने वाले अंधविश्वास हैं? ऐसा में जो पुरातन मानवीय मूल्य है, जैसे सहज जीवनचर्या, शुद्ध आचरण, आत्म संयम, इंद्रियों का संयम, नियम, आत्मा की शुद्धि इत्यादि है। इसीलिए इन सभी दुर्गुणों को दूर करने एवं दीर्घकालीन मानवीय मूल्यों को संवर्धन करने के लिए प्राचीन भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है, जिसे विज्ञान में पूर्णतया प्रमाणित मानने लगा है। वैदिक ज्ञान मानव जाति के लिए अक्षय धनराशि के रूप में है। सर्व ज्ञानमयो ही सा, इससे इस ज्ञान राशि की महत्ता ज्ञात होती है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद का प्रादुर्भाव ईश्वर के श्वास प्रश्वास के द्वारा हुआ। यस्य निष्पत्तिम वेदो यो वेदोभ्योऽखिलम जगत, जो मानव जीवन के सभी क्रियाकलापों का स्वरूप और मानवीय मूल्यों का स्वरूप वेदों में दिखलाई देता है। वैदिक ज्ञान में संग्रहित कल्याण की भावनाएं यथा शुद्ध आचरण, यही वेद का एक मुख्य विषय रहा है। वेद में मुख्यतया दो प्रकार के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। पहला आध्यात्म ब्रह्म प्राप्ति, दूसरा कर्म कांड, शारीरिक कर्म का मार्ग। ये दूसरा ज्ञान भी प्रथम का ही बोध कराने का दूसरा स्वरूप है। मानव अपने प्रारंभ काल से ही मानता आया है कि कोई दिव्य शक्ति है जो विश्व को संचालित करती है। यदि तथ्य यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद में कहा गया, ईशावासम इदं सर्व यत् किंचित जगत्याम जगत, अर्थात इस चराचर सृष्टि में अदृश्य रूप से ईश्वर नामक शक्ति व्याप्त है। वैदिक ज्ञान में कहा गया है कि इस सर्वत्र संपूर्ण सृष्टि में मुख्य रूप से तीन प्रकार की चीज आधार रूप में है। प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा। प्रकृति जीवात्मा के आश्रयदाता और पोषक हैं। परमात्मा शक्ति मनुष्य को ज्ञान बोध के विषय में ऋग्वेद में कहा गया कि यह श्रेष्ठ ज्ञानवान ईश्वर को पवित्र हृदय वाली मनुष्य की जान सकता है। सखा सखिभ्यो वारिवह कृणोतु, भारतीय चिंतन की धारा में वैदिक मान्यताओं एवं परंपराओं का एक विशिष्ट स्थान है। ऋग्वेद में कहा गया है कि वेद के ज्ञान को ग्रहण करने से मनुष्य के आचार विचारों की शुद्धि होती है। वह कुविचारों से दूर करने की सीख प्रदान करती है। अनुशासन, सदाचार, समानता, आत्मबोध, मर्यादा, सहिष्णुता, सहयोग, भाव, प्रेम, सत्य इत्यादि। वैदिक ज्ञान को अगर मानवीय मूल्य बोध को विषय क्षेत्र के आधार पर विभाजन करें तो वह निम्न प्रकार है। सामाजिक मानव मूल्य, नैतिक, आध्यात्मिक, भौतिक, वैज्ञानिक मूल्य इत्यादि। सामाजिक मूल्य में वेद कहता है, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव इत्यादि। ये सभी वाक्य मनुष्य के सदाचार को तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली 11 में यह सब कहा गया है। वर्तमान परिवेश में इन सभी आदर्श वाक्यों का अत्यंत आवश्यकता है। यजुर्वेद में
कहा भी गया है कि व्यक्ति को वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जो वह किसी अन्य व्यक्ति से अपेक्षा नहीं रखता है। जो उसको अच्छा लगता है वही व्यवहार उसको दूसरे के साथ भी करना चाहिए। मनुष्यों के लिए भी वही खुद की सुख समृद्धि की आशा करें जिनकी वह खुद के लिए चाहत रखता है। भारतीय परंपरा का सर्वश्रेष्ठ है मानवतावादी होना, जहाँ मानव मानव के साथ प्रेम भाव से एकत्र रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके। वेद में कहा भी गया है साथ साथ चलने की चेष्टा करना चाहिए। सम्यक बोलें जो दूसरों को बुरा ना लगे, प्रेम युक्त वाणी हो, परस्पर मनुष्य एक दूसरे के मानसिक स्थिति को समझने वाला हो जिससे विचारधाराएं परस्पर मिलें। कहा भी गया है सामानी वाकूति समाना हृदयानि वह, सामान्यस्तु वै मनो यथा वह सुतहास्ति च। यह वेद की एक परंपरा रही है, यही इसका एक अच्छा तत्व देखने को मिलता है। इसकी विचारधारा हमें वैदिक ज्ञान से लेनी चाहिए और ज्ञान की परंपरा को धर्म की विषयता से रहित, शोषण मुक्त तथा माल्य मूल्यों से युक्त आदर्श समाज की संपदा को चरितार्थ कर सकता है। तदर्थ वैदिक धर्म में वर्णित मालवीय मूल सनातन एवं सार्वभौम है, जिसके मौलिक सिद्धांतों को मनसा वाचा व कर्मणा अपनाए बिना समाज का पूर्ण कल्याण तथा राष्ट्र की उन्नति संभव है। इति अलम नमामि प्रणमामि च। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। धन्यवाद सर। Now I would like to invite S. Lakshmi. Madam. Hari Om, are you able to hear me? Yes. Are you able to see my screen also? Yes. Okay. Just a minute. सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्. I would like to thank Assam University for giving me this wonderful opportunity to present my paper on the division operation of Brahmagupta. When compared to all the other participants who have published their papers on wonderful various topics, I would request all the participants out here to do a little bit of time travel with me to their school days when they were taught the division operation by their mathematics teachers. So we are all used to the long division kind of division, but we are going to take a look at how Brahmagupta has approached this division operation in his work. So even before I could go there, I would like to give a very short introduction about Brahmagupta and some of his works. Brahmagupta belongs to the 7th century. He has written 2 works, Brahmasputa Siddhanta, his magnum opus, and apart from that, he has written another work called as Khandakadyaka. Now, the Brahmasputa Siddhanta consists of 25 chapters, and there are exclusively 2 chapters devoted, one for arithmetic, which is chapter 12, and there is another chapter, chapter 18, which deals with the Khandakadya or the pulverizer. Now, this chapter 12 has got 66 verses. Now, the general question that we ask when we ask many people, do you know about Brahmagupta? Everybody says, no, we do not know about Brahmagupta at all. But everybody knows Aryabhatta because Indian government has named one of the satellites as Aryabhatta. But if you know Brahmagupta, nobody says, I know him. But then if you ask, do you know the person who gave the operations on 0? 0 plus 0 is equal to 0, 0 minus 0 is equal to 0. Then they say, yes, we all know. But then they don't know the name. His name is Brahmagupta. So the commentaries on his works, both the Brahmasputa Siddhanta and Khandakadyaka are available, but only partially. And there is only a single extant scholiast who has done the commentary, and his name is Prithudaka Swamin. He belongs to the 9th century, AD. Now, we are going to exclusively take a look at one of the verses, verse number 12.19, which deals with the Bhaganubandha and the Bhaga Apavaha, kind of the class of fractions. Okay, the verse goes like this: Chedes cheda agmitaha swa amsha yuta unaihi upariga amshaha. So when we do the anvaya, we get the following arrangement: Chedaha chedaihi gunitaha
Uparigamshaha swamshayutonaihi gunitaha. The meaning, roughly translates to like this. The denominators are multiplied by one another. The upper numerators of the fraction are either added to or subtracted by their denominators, and they are multiplied also. So if we have to roughly write the current day notation of this above verse, it translates to this. Now we all have been taught how to take the common factor out of this and then do the savarnana of this, that is find the LCM, and then we will arrive at this particular form which has been taught to us. Madam, we can't hear you. Madam. Hello. Dharmarao sir, how? Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yeah, are you able to hear me? हम विनय कुमार बोल रहे हैं Yes, सर, ma'am. हमें बोलने की मौका नहीं मिल पाया Are you सर। able to hear me? Yes, ma'am. Yes, Carry yes, on. ma'am. I'm sorry, I lost the internet connection here. Okay. I'm sorry about it. Right. So here. Chedena ishta yutena ita yunena aptam bhajyat anashtam ishtagunam prakritista chedahritam labdya yuta yinakam anashtam. So you can see that this particular verse is a direct extension of the Bhaganubandha and the Bhaga Apavaha class of fractions. So I'm not going to go detailedly into the translation of it, but I'm just going to show you how this mathematically is written and how you get the division of two numbers. Here he introduces the Ishta number, which is the X. X represents the Ishta, and he is he's incrementing or decrementing the denominator by this X, and he is just extending the Bhaganubandha and the Bhaga Apavaha Jati of fractions, and then he is just finding out the value of A by B. Prutodaka Swamin, his scholiast, is coming up with a very, very simple example, which we actually will be able to do very easily in our mind itself. He takes the example of 300 by 20 and uses this particular formula where he uses X as 4. So he proceeds to do this particular process and he arrives at the answer 15, which we normally do like this in the case of the long-term, long division method, which is taught to us in the high school. So you can see that there is a variation in the way the solution has been arrived at. When we see that almost all the Bharatiya Ganita texts are using the long division method, very similar to this. Here we have Brahmagupta algorithm, which is entirely different from the regular approach, but nevertheless comes and gives us the very same answer that we have arrived at using the long division method. Now, the beauty of this particular work, the algorithm, is that this is particularly useful when we are actually working with astronomical numbers, and long division method is actually very cumbersome at that particular point of time, and therefore it is very much interesting even for high school children to be introduced to this kind of an algorithm in order to do the division process. Usually division process is construed as one of the very toughest arithmetic processes. So instead of doing this cumbersome way of division, if this can also be introduced to the high school students, probably their way of thinking and their way of finding solutions will be much, much more easier for them. Now, as a conclusion, I see that the long division method was even used in the ancient times. We see this particular methodology being available in Mahavira's Ganitasara Sangraha by Bhaskara II, and everybody else has used the long division method. They have used their own words, shabdas, to explain the long division process. Now,
in the current scenario, if you look at it, this particular method is still in vogue. Even when we look into the high school mathematics textbooks, we also have learned only this kind of a division method in the school mathematics textbooks. Now, the question arises, can there be an alternate way to solve the problem? If there is anything, why are we not introducing and encouraging the children to use that also? So we have seen that if there is one problem, there need not be only one way to solve that problem. Now, this also arises from our own ancient wisdom, where we say that the attainment of the truth is not restricted to only one path. And we can always use any other path which is absolutely applicable and viable, and we can still attain the ultimate truth. So if that can be applied there, it can be applied everywhere else also. And we see that there is not just a single way to solve a problem. And this encourages lateral thinking also. And lateral thinking is something that we will have to encourage in our school children in order to help them become better inventors and scientists. And it comes in handy, especially when there are huge numbers involved and the children are perplexed about when they use the long division method. So with this, I conclude my paper, and I thank all the organizers for giving me this opportunity to present my thoughts here on the operations of Brahmagupta on division. Thank you. Excellent paper, madam. Thank you, sir. Fully on math. And we know that there is a value of pi given up to 31 decimal places in the Sanskrit, what is that? That book, our Sanskrit Bharati book. Yes, yes. 31 decimal places. Can you think? And that is also one single sloka, but it is a prayer for Lord Shiva, Lord Yes. Krishna, Yes. and also the value of pi. Yes. Yeah, Shringiso Shodati Sandhiga Kalagriva Kalajivati Kalajiva Khata Vasandhara. It is there. Yeah, it is very nice. Any other question? Any question from other? Ma'am, it is a humble submission to you that you have rightly pointed out towards the Brahmagupta and Vaskara and others predecessors. But the thing is, the missing link lies where we are conflicting towards the terminologies, because nowadays we are in the Anglo-Sanskrit method, especially the science and scientific progressions and learning is basically based on English language. That is why actually we are dating the knowledge through the Western methodology of approaches. But the thing is, it is don't you think it is inevitable to learn Sanskrit as well, to acquainted to the terminologies through which we can correlate our minds and souls with our predecessors and ancestors? So it is inevitable to learn Sanskrit as well as our scientific progression towards that the goal to achieve. Absolutely, I concur with what you say, sir, because Sanskrit seems to be a very scientific language, and this language seems to have been very prevalent even during the ancient times across our Bharat. And therefore, it is our bounden duty to ensure that we propagate our thoughts in this particular language, which is very, very flexible, especially when it comes to usage of science. And we should be capitalizing on our strengths, and we should work together to bring back Sanskrit to the fore. That is my humble submission. Thank you, ma'am. Mohanji is saying something. Namaste. Namaste, Mahodaya. Namaste. Astu. ब्राह्मस्फुट सिद्धान्तस्य इदानीं तृतीयः अपि गणिताध्यायः ऐఐटि मद्रास् द्वारा महोदय अहं सम्यक्तया श्रोतुं न शक्नोमि महोदय, क्षम्यताम्। छन्दश्चित्यधिकारः इति ऐऐटि मद्रास् द्वारा ब्राह्मस्फुट सिद्धान्तस्य पृथुस्वामिनः व्याख्यानस्य तृतीयः गणिताध्यायः प्राप्तः इति दृश्यते। महोदय अहं सम्यक्तया श्रोतुं न शक्नोमि महोदय, अहं मेसेज् प्रेषयिष्यामि।
मोहन महोदय अत्र नास्ति इति अहं मन्ये। सः आगच्छति मोहन एमवी आगच्छति सः आगतवान्। अस्तु महोदय, सम्यक्तया न श्रूयते महोदय। इदानीं श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते वा? कथं? किञ्चित् क्लेशः अस्ति महोदय, किञ्चित् क्लेशः अस्ति इति अहं मन्ये। अभी ठीक है ना सर? अनन्तरं मास्तु भगिनि। Anything else to be said, Mahodaya? Okay, thank you, madam. Thank you very much. Very good presentation. And thank you. Please, madam, submit your paper, your final revised paper, your final paper to our email address for the publication purpose. Hello. Yes, sir. Yes, Hello. sir. हाँ, हम विनय कुमार बोल रहे हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। हम बोल रहे थे कि जी लिंक हम लोग का गड़बड़ा गया था, बोल नहीं पाए थे। अच्छा ठीक है, अभी नेक्स्ट का होने दीजिए, उसके बाद समय मिलता है क्योंकि नेक्स्ट सेशन के लिए चेयरपर्सन भी आ चुके हैं, तो पहले एक और दूसरा एक पेपर अभी और बचा है। हम विनिवेदयामि यद् मोहन एमवी महोदयं प्रति यद् आगत्य स्वकीय उपस्थापनं कुर्वन्तु। जी जी। ओके सर, तुम के वा? हाँ, श्रूयते महोदय। हम स्क्रीन शेयर करोमि। तुम शक्नुवन्ति वा सर्वे? सम्यक्तया न श्रूयते महोदय। इदानीं श्रोतुं शक्यते वा महोदय? अहं मन्दं वदामि, श्रोतुं शक्नुवन्ति वा? अहं प्रायः वीडियो आफ् करोमि चेत् शक्नुयुः। अस्ति, अहम् इदानीं स्क्रीन् शेर् करोमि। सर्वे द्रष्टुं श्रोतुं शक्नुवन्ति वा? श्रूयते महोदय, किञ्चित् इको अस्ति भवतां दूरवाण्यां, किञ्चित् इको अस्ति। अस्तु समीचीनम्। अस्तु महोदय, अहं किञ्चित् मन्दं वदामि, वेगेन इतोपि मन्दं कृत्वा वदामि। आर्टिस्ट प्रथमम् अहम् आयोजकेभ्यः नमस्कारान् धन्यवादान् च समर्पयामि। सः डॉक्टर लक्ष्मी महोदय, JR सरकार महोदयः एतेषां भारतीयविज्ञानस्य विषये पठनं कृतं, तस्य अनुवर्तनरूपम् अस्ति मम एषः एतत् पठनं। तत्र विशिष्ट भारतीय गणित परम्परा इति अस्ति, तस्य पुस्तकस्य विषये अहम् उपस्थापयितुम् इच्छामि।
एक काम कीजिए, वरना ये जो विनय कुमार महोदय वो बोल सकते हैं, उनके साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। बोले महोदय। हेलो 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 जी। महोदय ध्वनि तु आगच्छति किन्तु सम्यक् रूपेण न आगच्छति, मतलब तस्य नेटवर्क इश्यू अस्ति मन्ये। जी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। हेलो। अच्छा महोदय, भवान् स्वकीयं तत्र पत्रम् एव प्रेषयतु, वयम् अनन्तरं पश्यामः। यदि नेटवर्क सम्यक् भविष्यति चेत् अनन्तरं भवतां प्रेजेंटेशन् भविष्यति। इदानीं इदानीं अग्रे गच्छामः। And thank you all the participants for your presentations, very well presented. Now we are going to our next technical session. The chairperson for the next technical session is Professor Dayashankar Tiwari, Department of Sanskrit, Delhi University. He joined online. Sir, are you there? Sir, Dayashankar sir. Dayashankar sir. Okay, the chairperson will join within 1 minute. So विनय जी आप बताइए क्या था आपका? जी आपका एब्स्ट्रैक्ट हमें मिला जी था। बोले सर। आपका नाम बुलाया था, फिर आप कुछ बोले नहीं उस समय। लिंक सर प्रॉब्लम आ गई थी सर। आदेश हो तो हम कुछ कर सकते हैं सर। हेलो हेलो। शृणोम्यहं, कृपया वदतु। बोले सर। हेलो। हाँ बोलिए विनय जी। जी जी महोदया, हम सीतामढ़ी बिहार से बोल रहे हैं। हम कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्कॉलर्स रिसर्च में हैं। संस्कृत साहित्य से अभी हम लोग शोध में हैं और हम सीतामढ़ी जन्मभूमि धरती सीतामढ़ी से हम बिलोंग करते हैं। इसलिए हम सीता रूपी नारी को इस भारत संस्कृति में प्रतिस्थापित करना चाह रहे हैं, जिसके कारण हमने सीता जन्मभूमि के बारे में मैंने पूरी भारत दर्शन में डालना चाह रहा था। इसलिए मैंने जनक सूता जानकी जन्मभूमो सीतामढ़ी की महिमा और महत्वाकांक्षाओं को वर्णन करने का काम करने जा रहा हूं। चाहता हूं कि मैं नारी के उत्थान को इस देश में पुरुष की भांति नारियों को भी हम लोग काफी अधिक सम्मान और ऊंचा आदर्श त्रेता युग के समान देने का काम करें।
हमने सीतामढ़ी में सीता की जन्मभूमि को पूरे भारत के पटल पर उठाने के लिए मैंने इस सेमिनार में उस तथ्य को उजागर करने के लिए मैंने अपना ब्रीफ डाला है, और वही पंक्ति हमने अपने लेख में भी डालने का प्रयास कर रहा हूं ताकि वो हमारे भारत जगत में पूरी जागृति हो सके। राम पुरुषोत्तम राम की जागृति पूरे देश में जग गई, लेकिन सीतामढ़ी माता सीता की जागृति अभी तक पूरे भारत में नहीं जग पाई। इसलिए मैं चाह रहा था अपने इस पत्र के माध्यम से, इस सेमिनार के माध्यम से, कि माँ सीता जानकी जन्मभूमि को भी पूरी भारत में जग जाहिर किया जाए। ठीक है मैं जी, बहुत मुरारी बढ़िया है, बाप, बहुत अच्छी बात है। माता मुरारी बाप जी, सीता जी जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित हैं, सब उनके बारे में जानते हैं, उनको पुनः उसकी बहुत आवश्यकता वो नहीं है, वो पूरा हर तरह से जो है मैडम सीता जी वो जी पूर्ण रूप से सब उनको जानते हैं और उनकी महिमा को सब जानते हैं। आप अपना पत्र एक बार भेज दीजिएगा, हम नेक्स्ट सेशन की तरफ हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ेंगे अभी, क्योंकि समय ऑलरेडी हमारा 20-22 मिनट लेट चल रहे हैं। अभी हमारे नेक्स्ट चेयरपर्सन आ चुके हैं, एंड आई वेलकम प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी जी। ठीक धन्यवाद सर। प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सर प्रणाम करता हूँ। सर दयाशंकर सर, यस आ जा रही है। हाँ यस सर। हाँ गोविंद सर आई heartiest welcome you for this session. Thank you. And sir, list is with you. List of the participants. अच्छा, okay. Yes, sir. So sir, the first presenter is Dr. Jambu Guhapatia Dhammaloka. He is from Sri Lanka. Okay. So Dhammaloka sir. Dhammaloka. Yes. Can I present now? Yes sir. Okay, thank you. Let me share my screen. இதைத்தான் நான் பார்க்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன். Recreational mathematics in India. Is my screen visible now? Yes sir. Yes sir. Okay. Thank you very much for giving me this opportunity. I am Jambu Guhapatia Dhammaloka from the University of Dehradun, Sri Lanka. Today, I'm going to talk about a little bit about recreational mathematics in India. Actually, this is the outline of my presentation, introduction. I will give a brief introduction about the mathematical literature in Sanskrit. Then some basic information, background information about the recreational mathematics, which is one branch of mathematics. Then I will talk about a little bit some basic topics on recreational mathematics in Sanskrit texts. Some mathematics can be considered as recreational given in Sanskrit texts, and importance of the recreational mathematics and the summary. This is the basic background about Sanskrit mathematical texts. As we know, Indian mathematics has quite long history. It begins with Vedic literature. There are some information
related to mathematics in Vedic literature, even though they are not exactly mathematical rules and operations, but there are some basic information to understand that ancient people knew mathematics as well. There are many mathematical texts written in India. Most of them are in Sanskrit, and the basic and most important texts are also in Sanskrit, but there are many other texts written in other different languages as well. Major mathematical texts, actually, Sulla Sutra also can be considered as mathematical texts, because even though there are some rules and other information related to Vastu Vidya and construction of altars and so on, but there are many mathematical rules are there in Sulla Sutras as well. Therefore, the first mathematical literature that we find in India is Sulla Sutras. However, later on, mathematicians started writing different mathematical literatures and mathematical texts and texts on astronomy as well. In early period of time, actually, mathematics, astronomy, astrology, everything was in the same text, same literature. But later on, mathematics took its own path, and mathematicians started writing mathematical text exclusively. When it comes to major mathematical texts, we can say Aryabhatiya is a mathematical text. One part of Aryabhatiya is dedicated to mathematics, which is Ganitapada, but basically it is astronomical text. But then we have like Ganitsara Sangraha written by Mahavira, Sripatis, Ganitatilaka, Sridharas, Ganita Party Ganita Trishatika, and Leelavati by Bhaskaracharya, Ganita Kaumudi by Narayana Pandit, and so on. Even though there are texts totally dedicated for mathematics, we can find actually mathematical rules in Siddhantas as well. Usually, astronomers dedicate 1 or 2 chapters for mathematics in their Siddhantas. The main branches of Indian mathematics can be actually, there are main 2 branches, arithmetic and algebra, which is known as Pati Ganita and Bija Ganita respectively in Sanskrit. Trigonometry is not actually part of mathematics in Indian context, but it comes under the astronomical discipline. Actually, in mathematical texts, basically in arithmetic, we find 20 parikarmans, which are the basic rules, basic operations, and there are 8 vibhutis, which are the application, the users of these operations in different contexts. And in algebra, they divide them into 2 main branches, which is Bija and Bijopayogi Ganita, the basic concepts, basic rules, and then the application of it in the context of algebra. The main theme I wanted to talk about is recreational mathematics. Mathematics actually, when we heard the term mathematics, we always think about symbols, numbers, diagrams, and so on. But actually, mathematics is basically about the applications and solving problems. And but sometimes mathematicians use mathematics for joy, for pleasure. So when they use mathematics for pleasure, and it is considered to be recreational mathematics. According to mathematicians, modern and ancient mathematicians, these are the kind of characteristics of recreational mathematics. There are many definitions given for these recreational mathematics. I haven't mentioned them all here. These are some basic characteristics of recreational mathematics according to mathematicians. They say if some problems or mathematical rules are a source of fun, they are considered to be recreational mathematics. The playfulness possible to appreciate by non-mathematicians as well.
Those mathematical rules, recreational mathematics, are always in the form of a problem or kind of problems. Some themes that are discussed under the main theme recreational mathematics are magic squares, cryptarium, permutation, combination, number properties, and so on. There are many other themes as well. These are just to mention a few. When it comes to Indian mathematics, Indian mathematical text in Sanskrit, and the way they use mathematics, actually, we can find this explanation, this kind of introduction to mathematics and appreciation of mathematics in Ganitasara Sangraha, written by Mahavira. He actually, in the beginning of Ganitasara Sangraha, listed why this mathematics is important. Among those his importances, actually he mentioned here Chandolankara Kavyeshu Tarkavyakarana Adichu Kalaguneshu Sarveshu Prastutang Ganitang Param. Yeah, mathematics is needed for everything. That's what he actually that was the conclusion made by Mahavira. But here he says mathematics is needed for Chandas, Prosody, even for Alankara, Kavya, Tarkavyakarana, Kalaguneshu, Sarvesu, Prastutang, Ganitam, Param. So it seems like Mahaviracharya thought that mathematics is needed for everything, and it is a kind of source of fun, source of enjoyment, source of joy as well. These kind of topics actually can be considered as recreational mathematics given in Sanskrit text, but what we should actually keep in our mind is that some of these problems given in Sanskrit texts are not exclusively recreational. There might be some applications, some users of them, but mostly it seems like they are used as recreational mathematics, miscellaneous fractional problems, magic squares, arithmetic progressions, Pythagorean triplets, combinations and permutation, just to mention a few. Miscellaneous fractional problems are mentioned in different Sanskrit texts. If I list them in chronological order, Patiganita comes first, written by Sridhara. In Patiganita Sara, Patiganita, there are few verses related to recreational mathematics, miscellaneous fractional problems. Mahavira's Ganitasara Sangraha, in the chapter 3, he mentions these miscellaneous fractional problems. Gantatilaka by Sripati, then Bhaskaracharya's Leelavati, and also Narayana Pandita's Ganita Kaumudi. In those texts, we find these miscellaneous fractional problems. This is one example for this type of recreational mathematics from Ganita Tilaka. Bhagona Rupa Virhute Kaludrushya Mule Drishyat Padarda Harani Sahitat Padeche Mulad Vibhaga Sahite Gamite Krititvam Rashir Bhavet Abhimato Hadiyastodiye. So this equation, this formula is given in this verse by Sri Pati. So this involves many fractions. If we have this sort of problem, we can actually apply this equation and find the solution. For instance, this example is given in Ganita Tilaka. This is quite long verse. Ashtanshaha Kroda Yuta Sagunaka Krute Palvale Pankakelin, and so on. I am not going to read the whole verse, but the problem is given in this verse. What the translation is: clever mathematician, 1/8 of a herd of pigs play with mud in a pond. For the friend, the square root of the number of pigs in the herd increased by its half, that is, half of the square root. Dig grass, a wild sow with 7 piglets straight from the herd and seeking everywhere they are heard are seen. State quickly, if you know arithmetic, with how many pigs is
this herd composed. So what is given in the verse is this. This is the problem. There's a herd of pigs, and 1/8 of this herd is playing in a pond. Then square root of the herd increased by half of the square root is digging somewhere, and 8 pigs of the herd is seen. Then if we take this x to be the number of pigs in the herd, so we have to solve this equation for x. So if we apply the previous equation, we can easily find the solution. Then the total number of pigs in the herd is 16. So it doesn't seem like that this has a very practical application of this solution equation, but it seems like this sort of problems and equation can be used as recreational for joy. And another theme I would like to mention here is that magic squares. Actually, this also has a very long history. We find magic squares in Nagarjuna's Kakshaputta, Barahamihira's Bruhasamhita, some Jain magic squares as well. But it is Narayana who actually dealt with these magic squares in detail in his Ganita Kaumudi, especially in the 14th chapter of Ganita Kaumudi. I will just show one example here. This is from Nagarjuna's Kakshaputta. Here, actually, he first gives this half verse, Arka Indu Nibhanari, Tena Lagna Vivasanam. So, actually, these two lines of a verse say how to actually place the numbers in this 4x4 square. So all the odd places in the first line are empty spaces. So that's why I put 0 there. Then these other numbers actually represented by Katapaya system, represented in Katapaya system. So K means 1, Du means 8, Dha means 9. So we have to put them in these squares in even squares. Then the next line actually begins from the other side. It is inverse. It's in inverse order. So still in odd places we have empty spaces, and the other numbers are represented in Katapaya system. Then we put them in the second half of the square. Then the method for filling empty squares is given in the same text, but is written by Nagarjuna is that we should actually diminish the number next to the immediate number in diagonal order. So if we want to have for instance, here I took actually the sum of these numbers, in each and every line to be 20. So my 2n is 20, half of it is 10, which is n is equal to 10. So what Nagarjuna says is, if you diminish the number right next to the immediate number in diagonal order by the half of the sum, you get the number to be in this empty space. So my n is 10 here. If I decrease 10 by 3, I get 7. This is how I actually fill the gaps of this magic square. Then next, if I take this place, I hope my cursor is visible to you. And if I reduce my 10 by 7, which is the next number here in the diagonal order, I get 3 in this place.
And then I should follow the inverse order for the alternate diagonal line to fill the next empty spaces. So my 6 is here. So if I want to fill this empty space, I should reduce 10 by 6. I get 4. Then my next number is here 4. I diminish 10 by 4. I get 6. If I add, then I could actually fill the other spaces in the same way. Then if I add all together, I get 20. 7 plus 1, 8. 8 plus 4, 12. 12 plus 8, 20. Even if I add horizontally, vertically, diagonally, I still get 20 as the solution. Then actually, if I take only this small 4 squares, adjacent squares, 4 adjacent squares, I still get 20 as the sum. If I add the numbers at corners, I still get the 20 as the sum. So these sort of magic squares are there. This is just one example. There are many magic squares discussed in Narayana Pandita's Ganita Kaumudi as well. And this is the way, the previous example for getting actually even sum. And this he then gives a method for getting odd sum. If you want to get some odd sums, yeah, these sort of magic squares are discussed in Sanskrit mathematical text. This is a kind of, for spending leisure time and have some enjoyment with friends and so on. And there is another aspect of this recreational mathematics, which is a pedagogical aspect, to introduce mathematics to students. This way, this kind of problems are very helpful, and we can, stimulate, entice them to learn mathematics. Another theme I want to mention here is that Pythagorean triplets. This actually has a kind of utility, probably in geometry. If we want to construct right angle triangles, squares, and rectangles, we can use this method to construct these geometrical figures. But the way sometimes they are mentioned in Sanskrit mathematical text, it seems like they can be considered as recreational mathematics. In modern mathematics, this sort of rules are also considered as recreational mathematics. So to find Pythagorean triplets, the rules are given in Aryabhatiya, Brahmasputa Siddhanta, Gantasara Sangraha, Siddhanta Shekara, by Sripati, Lilavati, Ganita Kaumudi, and so on. This is the rule given by Sripati in the Siddhanta Shekara. Ishta bhujha tatkutirishta bhakta hinardita koti rasau sameta pragbhajakena shravanaha sudibhir jatyaya takshetra vidau niruktaha. So he says you can take any length as the length of the base, which is B here. And if you want to find the upright, so you can use this formula, b square over m minus m, and half of it is equal to the upright. Then if you want to find the hypotenuse, you can you have to increase the upright by the divisor of the previous formula. Then you can find any number of Pythagorean triplets, which means where the all numbers are integers. So if we apply those formulas, we can actually generate many Pythagorean triplets. So then I would like to move to the last subtopic of my presentation, which is the importance of recreational mathematics. Actually, this is a way of popularizing mathematics, as I mentioned before, and there's a pedagogical aspect of this as well.
if we look at the first example that we took, the miscellaneous problems of miscellaneous fractional problems. So actually, if we want to introduce fractional problems and different methods to solve them, this way of introduction and this way of formulation of problems are very helpful for students to learn these fractional operations. So there's a pedagogical aspect as well. And challenging aspect, that means sometimes this sort of problems can be used in competitions. For instance, not only for competitions, sometimes this is another way of finding enjoyment. For instance, in Sanskrit mathematical text, it could be Pati Ganita, it could be Ganita Tilaka, even Leelavati. We always see that Mitra, Drah, Vada, Satwarang Vada, Ashu Vada, and so on. So there's a kind of, a live conversation between the student and the teacher, or between the students and the student friends, and so on. This sort of competition, challenging aspects is also there in the Sanskrit mathematical text. It's not just like a very dry conversation. It's the way the problems are given, the way examples are given in these Sanskrit mathematical texts are very, very alive. And the last one is enjoyable aspect, as we saw. And the other point I want to mention under this enjoyment aspect is that these examples are full of aesthetic features, like figures of speech are also there in these examples. Sometimes we see Sabhavokti Alankara, Upama Alankara, Rupaka Alankara, many other Alankaras are there, and they use different very charming meters as well for examples. Mostly they use same type of meters for rules, but many different charming examples are used in examples. So this is a kind of enjoyable aspect. Then I would like to conclude my speech. What I wanted to mention, say is that there are many mathematical rules in Sanskrit text which can be considered as recreational mathematics, even though they actually begin with, or they were formulated for some practical applications. When they reach to some extent, actually, they are beyond the practical applications, and they can be used as pastime exercise and also for pleasure. Some of these rules may be of some utilities, but mostly they are of recreational purpose. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for your presentation. Any questions or observation? Namaste, Namo Namah. My question is that, sir, is the game of Sudoku as well as what you call bingo is related to this recreational mathematics? But I think this is. Yeah, I think actually this is a kind of controversial, I mean, a debatable topic. Some mathematician would like to add those magic square, Sudoku, and those sort of mathematics into recreational mathematics. Some don't agree with that, but mostly, yeah, as a convention, most mathematicians agree with that. Sudoku, these sort of mathematics come under the recreational mathematics. Thank you for your question. I have a small question, sir. I think Jain mathematics like Thakkara, Peru, they also contain some magic squares. I think you can just enlighten if you know anything about that. Okay, sir. Thank you. Thank you for coming.
Okay, thank you, sir. Now, Namaste, sir. Mohan, because of network problem from Chennai, my talk, which was scheduled previously, was not able to be completed. As per your direction, I will just be available, sir. Thank you. Okay. You want me to present now or later? Anyway, I'm available. Sir, after a few presentation, we will see. Okay. 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 Sir, Dayashankar, sir. Yes, yes, sir. Sir, please आप संभाल लीजिए आगे सेशन. हाँ ठीक है. ठीक है सर. Okay. Next कौन है? Hello. Next, sir, Vijay Shri, then Sudarshan Krishna. Vijay Shri is presenting or not? Vijay Shri. सर यदि विजयश्री जी नहीं है तो उनकी जगह पे Mohan, I am ready, sir. Now, if possible, I can complete that. हाँ okay sir. Okay, namaste. What's your good name and you have to mention your topic and good name. Bharatiya Ganita Parampara. Dr. M.V. Ganita Parampara. Ganita Parampara. What's your good name? Dr. M.V. Mohan. अच्छा, M.B. मोहन. हाँ. ठीक है. Start कीजिए. Okay. You will present in Hindi. Okay. Yes. Okay. I'll share my screen. It's my screen. Are you able to see screen, sir? Bharatiya Ganita Parampara. Yes. You are audible and. Yes. Slides are also visible. Okay. Mama nama Mohanaha, Samskrita Samvardhana Pratishtanam, Sanskrit Promotion Foundation has done an enormous amount of work in designing books for SSP series, Sanskrit for specific purpose. In that latest are a couple of books called Bharatiya Ganita Parampara and then Bharatiya Ganita Pravesha. Bharatiya Ganita Pravesha is a primer on Bharatiya Ganitam, and it was spearheaded by Professor M.D. Srinivas from Chennai Center for Policy Studies. He is one of the most sought after person in the IKS also. In fact, M.D. Srinivas Mahodaya, Professor Ram Subramaniam and Professor M.S. Shriram, they are called the Trimurtis of Bharatiya Ganitam. And our team had got the fortune of working under their guidance, exactly right under their nose, actually, literally. Etadika bhagyam asit asmakam. Ataha Bharatiya Ganitam, while doing this work for last four years, we were in this work. We discovered many things. In that, one thing I wanted to share in this particular forum, since it is by Assam University as well as Samskrit Bharati Northeast.
Sanskritasya pradhanyam, the importance of Sanskrit language can well be appreciated if by the study of Bharatiya Ganitam. And the converse is also all the more true. Bharatiya Ganitam will be more appreciated if one knows Samskrita Bhasha. This is what we have, we could all discover amongst many other things. Ataha, Arambe eka lagu prarthana, Ganeshasya prarthanam kurmaha, where you find something related to counting. Karotu. Shovanam. हे हेरम्ब किमम्ब रोदिषि कथं कर्णौ लुठत्यग्निभूः किन्ते स्कन्दविचेष्टितं मम पुरा सङ्ख्या कृता चक्षुषाम् नैतत्तेऽप्युचितं गजास्य चरितं नासामिमीतेऽम्ब मे तावेवं सहसा विलोक्य हसितव्यग्रा शिवा पातु नः. Hasita Vyagra Shiva Naha Patu. Shiva, that is Parvati. Shivaha Strilinge Shiva Naha Patu. Let Goddess Parvati protect us. How is she? She was, in fact, consoling Ganesha and Skanda, who were quarreling over counting. How were they quarreling? Hey Ramba. Parvati is asking, Hey Ramba, Hey Ganesha, Hey Gajanana. And Ganesha replies, Kimamba. Rodishi katham. Kimartham rodanam karoshi. Why are you crying? Agni buhu karanau luthati. Agni buhu, that is Skanda. Skanda is a very interesting name. Agni buhu. One who is born of Agni also. Agni buhu karanau luthati. This Agni buhu is just pinching my ear. The ears of Ganesha are very large. So it attracted the attention of Agni buhu Skanda. So he pinched. Kinte skanda vicheshtitam. Skanda. Oh, Subramanya, what did you do? This is not proper. Parvati is addressing. Skanda is Kartikeya. Kartikeya. Karna, Okay. Skanda, Kartikeya, Subramanya, Agnibu are all names of this Skanda, that is Subramanya. Murugan. In Tamil we say Murugan, a very prominent deity in South India, especially Tamil Nadu. Then then why have you done this? When Parvati asked, then Skanda says, Pura mama chakshusham sankhya krita. Ganesha started counting the number of my eyes. You know, Skanda has got Kartikeya has got 6 faces, so 12 eyes. So Ganesha started counting them. He was amused by the large number of eyes Skanda had. Then Naitatte Pyuchitam Gajasya. Hey Gajasya, why did you do this? Parvati is asking. Then Ganesha replies, Amba Nasa Mimite. This Skanda was actually measuring my nose. Actually, Ganesha's nose were also the trunk of Gajanana. Trunk of Gaja is very long. So Kartikeya started measuring it. So this measuring, this Sankhya counting, all these things were actually they were being done in the form of spirit of competition, and therefore they were quarreling between each other. And tau evam sahasa vilokya hasitavyagra shiva naha patu. Parvati, let her protect all of us, who was actually consoling her 2 sons in such a way. So such events actually happen in all of our homes, where one brother, the elder brother or younger brother, or sisters quarreling amongst each other. All these things happen. So this brings a homely atmosphere when they are addressed to devas or devis. How even we can relate our home to Kailasha or something like that. So such things, such small stories, such small episodes, such small incidents are all narrated in this particular book called Bharatiya Ganita Parampara. In fact, 71 such episodes connected to our Itihasa Purana have been, along with mathematical things. We'll see them. In fact, this was inspired by the Bharatiya Ganita Pravesha English book. This is actually English book. It's a Sanskrit version, but enlarged with plenty of stories. Is Bharatiya Ganita Parampara. Atra kim asti ityukte Bharatiya Ganita Paramparayam, we will be able to see that whatever children are learning in the school now, 6th, 7th, 8th standard children,
They are all Bharatiya Ganitam only. So Bharatiya Ganitam is not something new to children. Only the names are different. The algorithm of square, square root, cube, cube root, the area of circle, triangle, etc. with very slight variations. किंचिदेव तत्र भेदः दृश्यते. अतः तत्सर्वं भाषायामपि संस्कृतेन यदि पाठ्यते तदा सर्वेपि अवगच्छन्ति यत् एतत् सर्वं भारतीयगणितमेव इति. तथा अत्र अस्मिन् पुस्तके भारतीयगणितपरम्परा इत्यस्मिन् पुस्तके वयं किं कृतवन्तः इत्युक्ते नूतनं किमपि अधिकं न कृतवन्तः. यानि अस्माकं पूर्वजैः लिखितानि आर्यभट ब्रह्मगुप्तादिभिः तानि सर्वाणि तत्र तत्र श्लोकशः पद्यानि वा भाष्यानि वा मन्त्राः वा श्लोकाः वा तानि तत्र स्थापयित्वा मध्ये मध्ये उपस्थापनम् उपसंहारः तावदेव अस्माभिः कृतमस्ति. आहत्य you find totally around more than about 400 quotes, which are 341 mathematical quotes. Mathematical quotes means formula and examples from like from Aryabhatiyam, Leelavati, Ganita Tilakam, etc. We are going to see the source works also, and other very interesting shlokas like Hey Heramba we just saw. The Samanya general quotations are also embedded in that particular work. Then after that, some source work. These 400 plus quotations in that 300 etc. are mathematical quotations. They have been taken from all mathematical works. All these we are seeing, the names we are seeing are all mathematical works like Shulbha Sutrani, Vedanga Jyotisham, Chandas Sutram. Vedanga Jyotisham is more astronomical. Chandas Sutram. Then Bauddha Sahityam, you have Lalita Vistara, etc. Some works where some mathematical things are also mentioned. Then Jaina Sahityam, Bakshali Pandulipi, the Bakshali manuscript, very famous manuscript. Then Surya Siddhantaha, it is also more of astronomical work. Aryabhatiyam, it is having a separate chapter on mathematics, like a previous speaker was mentioning about the Ganita Pada. And then Brahmasputa Siddhanta, which contains actually 3 chapters on mathematics. एकं गणितपादः अनन्तरं कुट्टकाध्यायः गणिताध्यायः कुट्टकाध्यायः छन्दश्चित्यादि अध्यायः. Then Aryabhatiya Bhashyam, written by many great stalwarts. One Bhaskaracharyasya Aryabhatiya Bhashyam is very famous with the Uddeshakas, and Neelakanta's Bhashyam also. Then Laghu Bhaskariyam, Mahabhaskariyam by Aryabhata, by Bhaskara 1. Actually, these are works of Bhaskara 1. Leelavati is written by Bhaskaracharya 2, who belongs to 12th century. Bhaskara 1 belongs to more about 8th century AD. Then Pati Ganitam of Sridharacharya, Ganita Sara Sangraha of Mahaviracharya, Mahasiddhanta of Aryabhata 2. Actually, we have 2 Aryabhatas and 2 Bhaskaracharyas, same name, but they are separated by a few hundreds of years between them. Then Ganita Tilakam of Shripati, Leelavati of course of Bhaskara 2, Bija Ganitam also of Bhaskara 2, Ganita Kaumudi of Narayana Pandita. Narayana Pandita of Bija Ganita. न श्रूयते महोदय. Algebra, work on algebra. Then Buddhi Vilasini, a Sanskrit commentary, and Bija Pallavam, a commentary. तत्र कट कृपया जय श्रूयते वा महोदय? श्रूयते वा? जय कॉल आगे श्रूयते श्रूयते क्षम्यताम्. अग्रे सरतु. अस्तु अग्रे अनन्तरम् अन्ये यानि उद्धृतानि पद्यानि सन्ति तानि सामान्य साहित्यानि, यथा गणितेतर साहित्यं यदस्ति तत् वेदतः पुनः इतिहासपुराणतः एवं स्तोत्राणि, रामायणं महाभारतं विष्णुपुराणम् इत्यादि स्मृतिग्रन्थाः, योगसूत्रभाष्यम् इत्यादि. एतेभ्यः ग्रन्थेभ्यः केचन स्वारसयुक्ताः गणितसम्बद्धाः श्लोकाः स्वीकृताः अस्माभिः. These are all not mathematical works. These are works which have some mathematics in here and there. So for those stories we have taken, those episodes, those quotations we have used. And how the lessons are designed also. The lessons are given unique names. The names are very interesting. We are going to see that. Shirshakam, then Ganita Vishayaha, then Tatra Abhyasaha,
then tatra jnanavardhini, something which has something to do extra additional information is jnanavardhini. Abhyasaha, the examples given in our regular textbook in NCERT schools, we have replaced them with the similar abhyasas, but all the abhyasas are taken from our original textbooks in the form of padyam. For example, even add the following numbers, multiply these following, they are also given in the form of padyas using beautiful bhuta sankhya, katapayadi sankhya and all, like stambhe rama jaladeo vishya mahidraha. It's a shloka which as though describes the nature, परंतु तत्र वयं कटपयादि संख्यां वा भूत संख्यां वा स्वीकृत्य पश्यामः चेत् गणितीय समस्या काचित् भवति, वयं द्रक्ष्यामः. संस्कृत भाषा अत विश्वमनोज्ञा इति संस्कृतभारत्याः एकं गीतमस्ति. तदनुगुणं वयं 70 घटनायुक्ताः उपाख्यानानि इतिहासपुराणेभ्यः जीवनचरितेभ्यः स्वीकृत्य तत्र स्थापितवन्तः. तत्र पाठस्य नाम पश्यामः चेत् 30 पाठेषु प्रथमं पाठं मङ्गलाचरणम् इति अस्ति. तत्र मङ्गलाचरणे गणितमीशं च वन्दे इति भास्कराचार्यस्य बीजगणितस्य प्रथमः श्लोकः अस्ति. गणितमीशं च वन्दे इति तस्य उपसंहारं करोति. अनन्तरं एहि मित्रवृन्द conclude. Mohan ji, please conclude. This is the Zero Temple, oldest recorded zero in the world in Gwalior. In Mahabharata, you have this fight between Ashtavakra as well as Bandi. You have this Uleka. These stories are quite interesting. Bhuta Sankhya are also how they are, why they are given these Aryabhatiyam. Then you have certain very interesting stories which are related to counting. Vargaha. Vargaha actually means a square. Then Shiva is actually having Pavarga Murtihi. Apavargaya me bhave. This is a very interesting shloka. Then Narayana is Vargamulam Harim Vande. So Vargamulam is square root. Dasharatha gives in the form of fractions. Ardhat Ardham Dado is Valmiki shloka. So these are the stories we have incorporated for that particular lesson. Then for geometry, Panchavatyam Kutiraha, this is also Valmiki's shlokas. We have given it in the form of stories. Then Trimurti and how they are related, and the small episode. Then Tribhujani, that is triangles. Then Chaturbujaha Narayanaha, Chaturbhujani, quadrilaterals, various types of art. This we have Akarna Purna Dhanvado Rama Raksha Stotram. We have related to Pythagoras theorem, how it is the book has the lesson. Very interesting. About circles, Dharma Chakra Pravartana is the story. Aprameyaha is something which we are not able to understand. We cannot conclude, that is value of pi actually. Avyaktam Vyaktimapannam is Bija Ganitam, that is Subjecta Ganitam. And these are the things which have prompted us, Professor K.V. Sharma's words that Sanskritam and Vijnanam should be. We have given some samples also. Actually, we studied. And Bharatiya Ganita Praveshaha, Aryabhatiyam Ganita Padaha, these are Leelavati and Bharatiya Ganita Parampara. These are the books we have done presently. They are available in Sanskrit Promotion Foundation site also, which we can just access. We have various yoga, Ayurveda, apart from Ganitam. All these things are there. These are what actually we have done. Any questions, you can just feel free to ask. Thank you, sir. Dhanyavadaha. Namaskara. Am I audible, sir? Hari Om. Shruyate va? Sarve shrotum shaknuvanti va? Shruyate. Astu Mahoday. एवं भारतीय गणित प्रवेशः इति आंग्लभाषया पुनः भारतीय गणित परंपरा इति संस्कृत भाषया पुस्तकद्वयं निर्मितमस्ति. तद् सर्वेपि पठित्वा भारतीय गणितं संस्कृतेन सरलसंस्कृतेन अपि ज्ञातुं पठितुं पाठयितुम् अपि यथा प्रभवेयुः. अस्तु महोदय, यत् किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हन्ति.
I have a small question. Actually, yeah, thank you for the presentation, and the books seems like very well organized. So I just wanted to know where those books can be actually Sanskrit bought. promotion. You can from Sanskrit promotion. You just Sanskrit Promotion Foundation or learnsamskrit.in. These are the different ways we can access the books from. Okay, thank you. SPF, Sanskrit Promotion Foundation. In fact, they are being followed by some schools, Patashalas like Agastya Gurukulam, Dharma Gurukulam in Parani. All these Patashalas they have started, and we have got some good, valuable feedbacks also, which we can incorporate in our second edition also. Interesting aspect is Anekaha Kathaha. Plenty of stories in mathematics. Mathematics taught with stories, especially, are very charming for children also. They will never feel bored. For example, for teaching square root, the algorithm of square root, before that, if you introduce what is Varga Moolam, before that you introduce what is Varga. Pavarga Rachita Murti Rapavargaya me bhavet. Shiva is Pavarga Rachita Murti. Pavarga means Parvati, Pani, Balendu, Bhasmangi, Mandagini Tatha, Pavarga Rachita Murgi, Pappa Babha Ma, Parvati, Pani, Balendu, Bhasmangi, Mandagini. Pavargaha, and he should give me not Pavargaha, Apavargaha. Apavargaha means Moksha. So such a interesting Mohanji. Okay. Dhanyavad. Okay. Thank you. Next. Yes, sir. I'm Sudarshan Krishna, PhD research scholar from Ramakrishna Mission Vivekananda College, Chennai. I'm Sudarshan Krishna. Okay. Yes, sir. I'm. Are you able to see my screen? Yes. Yes, what sir. is your? Yeah. Okay. Sudarshan Krishna. Excuse me. Hello. Am I audible? Yeah. Yes, ma'am. Okay. Yeah. The next presenter is Vijay Shri. Vijay It was Shri called here about or not? earlier. Okay. She is absent. Okay. Then Sudarshan Krishna. Please go ahead. Yes, ma'am. Thank you. And sir, please, can I proceed? Your time is 8 to 10 minutes. Yes, ma'am. Okay. I'll finish it. Okay. Thank you so much. Yeah. So, I would like to present here a lesser known work of Kavya Kanta Ganapati Muni. So I'll just straight away, as there is lack of time, I'll just straight away proceed. Omkaravadhanam Vandyam Kavina Madhimam Kavim Vande Ganapatim Devam Naraveshadharam Gurum. So a healthy body is one of the most important prerequisites for achieving the Purusharthas, that is Dharma, Artha, Kama and Moksha. The Ashtanga Hridaya says, Ayuh Kamayamanena Dharma Artha Sukhasadhanam Ayurvedopadesheshu Videya Paramadaraha. So we find in the 5th Sarga of Kumara Sambhava, we find Kalidasa also echoing this idea. When the 7 sages come to meet Parvati, who was doing severe penance, abjuring food completely, so he says, Vadanti Aparneti Chatam Puravidaha. And Kalidasa made the sages ask Parvati to take care of her health even while doing penance. Sharira Madhyam Khalu Dharma Sadhanam. Ayurveda is one of the Upangas of the Vedas. The Ayurvedic system gives a preeminent place for prevention of diseases, managing or curing diseases, both body and mind, and that manifest in a person, thus ensuring a healthy and long span of life. So, Swasthya Rakshanam and Aturasya Vikara Prashamanam, says the Charaka Samhita. The knowledge of this ancient medical science has been handed down through proper popular texts like the Charaka Samhita, Sushruta Samhita, and the Ashtanga Hridaya. The medical facilities as we see it today were not present during the olden times. The knowledge of this knowledge was of this basic yogic postures, medicine, diet, etc. were passed on hereditarily, and it was regularly practiced for maintaining good health. Scholars wrote handbooks to maintain this knowledge in an easily comprehensible manner. Until the 20th century, even lay Indians seem to have been acquainted with the basic knowledge of medicine, and it was used for curing common illnesses. During the late
18th and early 19th century, the influence of Western education had far-reaching impact on the Indian society and thought. There was much debate surrounding traditional Indian thought and Western understanding of the same. Through the process of debate and analysis, the contemporary understanding of ancient wisdom began emerging. In the forefront of this process were scholars, intellectuals, and reformers. This movement, for slowly that is what is often referred to as the Indian Renaissance of the 19th century. Progress was made in the field of medicine and education, among others. The thrust was on regeneration of society with emphasis on reforms. At this juncture, Vashishta Ganapati Muni, later known as Kavyakanta Ganapati Muni, was born in Kaluvarai, a town close to Srikakulam in Andhra Pradesh. He was the second of three boys born to Narasimha Shastri and Narasamba. When he was 18 years old, Ganapati Muni left home and began to travel as he was very much inclined towards tapas. Staying in places like Bhubaneswar, he performed tapas for long periods of time. While Ganapati Muni was residing in Varanasi, he came to know that a gathering of Sanskrit scholars was taking place in the city of Navadvip in Bengal. He took part in it and was awarded the title Kavyakanta for his knowledge in extempore Sanskrit prose and poetry. In 1903, he traveled to Arunachala, that is Tiruvannamalai in Tamil Nadu, to do tapas again. Before accepting a teaching position in Vellore, Tamil Nadu, in 1904, he paid a visit to Bhagavan Sri Ramana Maharshi, who was known as Brahmana Swami at that time. Following acceptance of Sri Ramana Maharshi as his guru, he composed his magnum opus Uma Sahasram in 1000 verses on goddess Uma, that is Parvati. That is a famous book and it is widely commented upon. Translations have been made. He also extensively wrote on different branches of Vedic learning, and his works have been collected and published by Sri Ramanashram Tiruvannamalai in 12 volumes as the collected works of Vashishta Ganapati Muni. And the Chikitsana Shasanam, which presently I am introducing to you, is one among these works. The work Chikitsana Shasanam is a concise handbook of medicine written in sutra style. It has 20 chapters, 384 sutras. The author has dealt with the process of treatment of important diseases as per the traditional Ayurvedic system. The author himself says that evam sutritam pradhana vyadinam chikitsitam yatha prachina matam. This is what the author says. And the list of the diseases which are dealt with, I just briefly go through them. The diseases are Jwara, Raktapitta, Kasa, Yakshma, Shvasadhima, and that is Chardana, Hridroga, Atisara. I'm just mentioning a few diseases. There are a lot of diseases. Prameha, 20 diseases he has dealt with. Kushta, Madatyaya, Vata, and finally Shukrakshaya. This list of diseases is very much similar to the list which is given in the Ashtanga Hridaya. The author seems to have followed the Ashtanga Hridaya closely. It is well known that according to Ayurveda, the imbalance of the Tridoshas is always the primary cause of disease. This imbalance presents itself in other bodily parts, inevitably leading to disease. Based on this principle, the author has outlined the process of treatment for treating each of these diseases in this work. Further, the author has tried to give clarity where confusion generally arises. A few examples are given here. Generally, fasting is considered good while dealing with fever and vomiting. But actually, fasting is helpful in controlling fever only if it's done at the outset. Langana Madhav Hitam, says the author. And only for Chardana, when fasting is good, only for Chardana arising out of Pitta and Kapha, not Chardana arising out of Vata. Langanam Avate. That is what the author says. Similarly, hot water is considered good when having fever, but it is to be taken only when the cause of fever is Vata or Kapha and not if it is Pitta. Pipasayam Ushna Jalam Peyam. For Jwara, from Pitta, liquids made out of bitter ingredients should be taken. Tiktakaihi Kotitam Pittaje. This is what the author says. Further, the author goes on to prescribe the pathya, that is the diet and conduct for each of these
ailments and says that the list of other diseases and the process of treatment are to be known from other Ayurvedic texts. Anuktam anyataha anuktanam cha roganam, says the author. Ganapati Muni makes a key statement at the end of the text, that is, continence and chastity are the actual patya when one is receiving medical treatment. Sarvatra bheshaja sevayam brahmacharyam patyam, says the author. I would like to conclude by saying that presently a holistic understanding of the body and health, a healthy lifestyle is the basic need. In the contemporary age where people tend to lay a lot of emphasis on physical fitness, yet where diseases which spring from defective lifestyles are prevalent around the globe, the holistic understanding of the body and the lifestyle is important. This lesser known work, Chikitsana Shasanam, is introduced to the academia so that the ancient tradition of Ayurvedic principles can be followed easily by the contemporary scholars. As it was rightly said in the inaugural session by our eminent scholars, that the need of the hour is to revisit and reinterpret old texts. Our author Kavya Kantaka Ganapati Muni has done this in the 20th century, and if we have his books studied deeply, we can find a lot of answers to the modern questions which are troubling us today. So I thank all the organizers for the opportunity. Thank you so much. Dhanyavadaha. Thank you, Sudarshan ji, and special thanks for wrap up within the time. So, any question and observation from other participants? Yeah. Any question? Okay, I think there is no queries. So yes, over thank to you, Chairperson sir, Dashankar Tiwari sir. Over to you. Any observation, sir? Yes, okay. It is okay. Next call. Next. दूसरे को बुलाइए. Samar Kumar Parthi. Samar Kumar Parthi. ओके आप उपस्थित हैं समर जी? जी 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 ओके शुरू कर दीजिए और ध्यान रखिएगा 8 से 10 मिनट. जी जी हाँ, टाइम एकदम सही मैडम कर रही हैं. हाँ. जी जी समय का ख्याल रखना बहुत अच्छा. नमो नमः. अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मानसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये. मम नाम समर कुमारः. अहम हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य शोधछात्रः. मम विषयः अस्ति अद्य शोधस्य विषयः अस्ति आयुर्वेदस्य बृहत्त्रय्यां प्रयुक्तानां कतिपय लौकिकन्यायानां तत्त्वमीमांसा दृष्ट्या अध्ययनम्. आयुर्वेदः भवति प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतिः. वयं जानीमः आचार्याः ऋषयः यथा अग्निवेश चरक दृढबल शुश्रुत वाग्भट प्रभृतयः आचार्याः स्व अनुसंधान माध्यमेन आयुर्वेदस्य मौलिकसिद्धान्तान् प्रकटीकृतवन्तः. ते एव सिद्धान्ताः आयुर्वेद वाङ्मयरूपेण उपलभ्यते. तत्र आयुर्वेदस्य अर्थः भवति आयुषः वेदः. आयुर्भवति यथोक्तं चरकसंहितायां सत्व आत्मा सत्व इन्द्रिय शरीरस्य संयोगः एव आयुः इति उक्तम्. तर्हि आयुर्वेदस्य लक्ष्यद्वयमस्ति, उद्देश्यद्वयमस्ति. स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्, आतुरस्य विकारप्रशमनं च वयं जानीमः. तर्हि आयुर्वेदशास्त्रं यदस्ति तत्तु विशालमेव, तत्तु अति सुबृहदस्ति. तर्हि पुनः एतत् वैज्ञानिकसाहित्यकारणात् तत्र विषयाः अत्यन्तक्लिष्टाः सन्ति. तर्हि अनायासेन कथं सामान्यजनैः तत् सामान्यजनाः कथम् अनायासेन तत् अवगच्छन्ति, तदर्थम् आचार्याः टीकाकाराश्च परवर्तिनः टीकाकाराश्च किं कृतवन्तः, तत्र बहुविध उपकरणमाध्यमेन क्रियाविधीनां प्रयोगं कृत्वा तान् विषयान्
क्लिष्टविषयान् सरलीकर्तुं प्रयासं कृतवन्तः। ताः क्रियाविधयः यथा वयं जानीमः, तन्त्रयुक्तिः अस्ति, लौकिकन्यायः, अपवादः, ताच्छिल्यम् इत्यादयः। तर्हि लौकिकन्यायविषये यदि वयं पश्यामः, तर्हि न्यायशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे न्यायस्य अर्थः भवति दृष्टान्तवाक्यं, वाचस्पत्यानुसारं लोकशास्त्रप्रसिद्धदृष्टान्तभेदेषु ते च लौकिकन्यायतया प्रसिद्धाः। तर्हि दृष्टान्तमाध्यमेन वयं किञ्चित् वदामश्चेत् तस्य अवबोधनं सुकरं भवति। एतत् अस्माभिः दैनन्दिनजीवने प्रयुज्यते, तथा शास्त्रकारैः अपि स्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु अपि उपयुज्यते। तर्हि प्रश्नः आगच्छति यत् आयुर्वेदस्य लौकिकन्यायानाम् अध्ययनं तत्त्वमीमांसा दृष्ट्या। आयुर्वेदस्तु चिकित्साशास्त्रं, तत्र कथं तत्त्वानि विद्यन्ते, पक्षः तस्य अस्ति वा न वा इति संशयः, प्रश्नः आगच्छति। अवश्यं तत्र आयुर्वेदस्य दार्शनिकपक्षः अपि अस्ति। यथोच्यते चरकसंहितायां सत्त्वम् आत्मा शरीरञ्च त्रयमेतत् त्रिदण्डवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। तत्र तत्त्वानां विवेचनं क्रियते, सत्त्वस्य मनसः विवेचनं क्रियते, आत्मनः विवेचनम् अस्ति। सम्यक्तया तत्र दार्शनिकपक्षाणामपि तत्र वर्णनं भवति। तर्हि वयं पश्यामः इदानीं लौकिकन्यायानां सन्ति। प्रथमं तु शीलापुत्रकन्यायः। शीलापुत्रकन्यायः इत्युक्ते अस्य न्यायस्य वर्णनं सुश्रुतसंहितायाः शारीरस्थाने निबन्धसंग्रहटीकायां कृता वर्तते। तत्र सृष्टिप्रक्रियायाः वर्णनप्रसङ्गे उच्यते। वयं जानीमः शीला पर्वतं तु सुबृहदस्ति, पर्वते बहवः किं सन्ति शिलाः विद्यन्ते। बृहत्शिला अपि अस्ति, क्षुद्र लघुखण्डानि अपि शिलायाः विद्यन्ते। यथा उच्यते पर्वते परमाणौ च पदार्थत्वं प्रतिष्ठितं, तथैव बृहत् पर्वते यत् तत्त्वं विद्यते तदपि लघुखण्डे अपि तथा एव तस्य यत् मूलगुणः भवति तस्य शिलात्वं तु समानम् एव तिष्ठति। तदर्थं सुश्रुत आचार्येण उच्यते यत् सृष्टेः मूलम् अव्यक्तम् अस्ति, एतत् अव्यक्तं त्रिगुणात्मकम् अस्ति। सत्वरजस्तमांसि एते गुणाः सन्ति, त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः। तर्हि अव्यक्तात् उत्पन्नः उत्पन्ना या सृष्टिः वर्तते, तत् सृष्टिः अपि त्रिगुणात्मिका वर्तते। एतत् सिद्धान्तं प्रकटीकर्तुं शिलापुत्रकन्यायस्य वर्णनं क्रियते। इतः परम् उच्यते शतपत्रवेधिनी न्यायः। अस्यापि वर्णनम् उत्पलशतपत्रवेधिनी न्याय तत्र चरकसंहितायां सुश्रुतसंहितायाम् अष्टाङ्गहृदये अपि अस्य वर्णनं वर्तते। वयं जानीमः यत् पद्मदलानि सन्ति, अपि शतसङ्ख्यकानां पद्मदलानां यदि उपरि यदि सूचिना तस्य भेदयितुं वयं चेष्टां कुर्मः, तत्तु शुचिः चुभयन् द्रुतगतिना क्रमेण छिद्राणि करोति। तर्हि द्वयोः दलयोः मध्ये यः भेदनः कालः वर्तते तत्तु अतीव सूक्ष्मः, तत्तु अगोचरः इति प्रतीयते। परन्तु स तु क्रमेण एव भेदयति। तथैव मनः, अत्र मनसः प्रकृतिः अत्र अस्मिन् न्यायेन निर्णीता वर्तते। किमुच्यते न, मनः तु एकस्मिन् काले एकेन इन्द्रियेण साकमेव
एकेन इन्द्रियेण साकं तिष्ठति तथा एकस्यैव विषयस्य ग्रहणं करोति इति। यदा सः पश्यति मनः चक्षुरिन्द्रियेण साकं तदा स तु रसनेन्द्रियेण रसं न गृह्णाति, तदा गन्धं न गृह्णाति, तदा तु पश्यति एव। परन्तु अतिसूक्ष्मकारणात् वयं वदामः मनस्तु सर्वं युगपत् करोति इति भाति, परन्तु तथा न। एवम् एतत् तु सिद्धान्तः। तथैव आगच्छति पिण्डब्रह्माण्डन्यायः। पिण्डब्रह्माण्डन्यायः वर्तते वस्तुतः ब्रह्माण्डे ये तत्त्वानि सन्ति तेपि व्यक्तिमध्येपि तदेव। अस्माकं पिण्डे शरीरे अपि तत् तत्त्वानि विद्यन्ते एव। यथा वात पित्त कफादयः अस्मिन् शरीरे सन्ति तथैव बहिरपि बहिर्जगति अपि तेषां दृष्टिगोचरः भवति। तर्हि लोकपुरुषसाम्यन्यायस्य प्रमाणीकरणाय एषः न्यायः प्रयुक्तः। तर्हि एतत् परम् अलातचक्रदर्शनन्यायः चरकसंहितायां। समय शेष है। ओके, हाँ, आप निष्कर्ष बता दीजिए 1 मिनट में। तस्य निष्कर्षः एवम् अस्ति यत् न्यायमाध्यमेन आयुर्वेदस्य बहवः पक्षाः प्रकटीकृताः अस्माभिः अस्माकम् आचार्यैः टीकाकारैश्च। तर्हि आयुर्वेदस्य दार्शनिकपक्षस्य अपि सम्यक्तया तत्र प्रकटीकृतम् एवमेव। यदि प्रश्नानि सन्ति कस्य प्रष्टुं शक्यते। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद समर जी। कोई प्रश्न या जिज्ञासा? ठीक है, तो प्रोफेसर तिवारी जी हम आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट को बुलाइए दूसरे। ठीक, नेक्स्ट है शुभश्री पटेल। शुभश्री पटेल। यस मैम। ओके, आप शुरू कर दीजिए शुभश्री जी। जी मैम। समय का ध्यान रखिएगा। जी मैम। सभा परिषद को मेरा सादर प्रणाम। आप लोग प्लीज जो पढ़ रहे हैं वो प्लीज कम से कम वीडियो ऑन कर दीजिए। जी मैम। जो पत्र वाचन करेंगे वो अपना वीडियो जरूर ऑन करें। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे शोध विषय का शीर्षक है आयुर्वेद साहित्य से प्राप्त उत्तम शोध पद्धति। आयुर्वेद की बृहत्त्रयी में चरक संहिता प्रमुख ग्रंथ है। चरक संहिता विमान स्थान के 8वें अध्याय में तंत्र गुण का उल्लेख मिलता है। आग्रही विद्यार्थी नवीन वैद्य बनने के लिए तंत्र गुण का उपयोग उत्तम पुस्तक चयन निमित्तार्थ करते थे। तंत्र गुण उत्तम लेखन तथा ज्ञान स्थापना का उच्च विधि है। हजारों साल पहले आयुर्वेद में ज्ञान की विस्तार के लिए नवीन सिद्धांत का स्थापना अर्थात अनुसंधान प्रक्रिया का जन्म हुआ था। अग्निवेश तंत्र का चरक द्वारा परिसंस्करण इसका ज्वलंत दृष्टांत है। कालांतर में शोध प्रक्रिया परिवर्तित होकर वर्तमान हमारे सामने इस तरह से प्रस्तुत हुआ है। आधुनिक दृष्टिकोण से शोध प्रक्रिया एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें किसी विषय के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में शोध समस्या का चयन, साहित्य उद्देश्य का निर्धारण, परिकल्पना प्रस्तुति, शोध दिशा निर्देश का पालन, शोध डिजाइन का निर्धारण, डेटा संग्रह, अनुसंधान पद्धति का अनुसरण, सरल शब्दों में डेटा की व्याख्या, परिकल्पना परीक्षण और परिणाम की स्थापना पता लगाना, यह सभी कदम शामिल हैं। तंत्र गुण का आधुनिक अनुसंधान प्रक्रिया के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से संस्कृत मूल पाठ का सहयोग विज्ञान की तकनीकी क्षेत्र में अधिक सरल होगा। फर्निक्स विश्वविद्यालय के अनुसार अनुसंधान समस्या के लिए विचार 2 स्रोतों से आते हैं, एक वास्तविक जीवन और दूसरा किसी भी विषय के क्षेत्र। बुद्धिमान आत्मनः कार्य गुरु लाघवम कर्मफल अनुबंधम देश कालश्च विदित्वा युक्तियुक्त दर्शनात् भीषक बुभुत्सु शास्त्रमेवादित परीक्षते विविधानि शास्त्राणि विसजा प्रचरन्ति लोके। बुद्धिमान शोधकर्ता शोध समस्या को 2 प्रकार से अवलोकन करके शोध विषय का चयन करता है। देश काल की स्थिति अनुसार अर्थात एक्शन रिसर्च और पूर्ववर्ती शोध प्रबंध की समीक्षा करके मौलिक
एक अनुप्रयोग अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, तुलनात्मक अनुसंधान आदि का। दुनिया में अनुसंधान करने के लिए अनेक शास्त्र शोध समस्याएं उपलब्ध हैं। तंत्रगुण में शोध समस्या के चयन से लेकर शोध परिणाम की स्थापना तक एक व्यवस्थित पद्धति का उल्लेख है। एक शोध समस्या वैज्ञानिक जांच की दिशा में पहला कदम है। एक बौद्धिक रूप से सतर्क और सक्रिय शोधकर्ता को पक्ष विपक्ष, दीर्घकाल तथा अल्पकालिक परिणामों पर विचार करने के बाद अनुकूल संस्थान में शोध कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय या पाठ का चयन करना होता है। सुमहत यशस्वी धीर पुरुष सेवित प्रथम तंत्र गुण है। यह साहित्य सर्वेक्षण को निर्देशित करता है। विकार का कारण मन में होने पर भी जो व्यक्ति विचलित नहीं होता वे धीर पुरुष कहलाते हैं। अनुसंधान में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वह व्यक्ति जो कठिनाइयों से विचलित नहीं होता और अपना काम पूरा करता है उसे विद्वान को एकेडमिक के क्षेत्र में धीर पुरुष कहा जाएगा। धीर पुरुष द्वारा प्राप्त शोध प्रबंध, पुस्तक, जर्नल आदि का उपयोग साहित्य सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। यह श्रेष्ठ शास्त्र के प्रमुख गुणों में से एक है। द्वितीय तंत्र गुण अर्थबहुलम है, जो शोध परिकल्पना के विकास को संदर्भित करता है। केवल सीमित शब्दों में विषय का उल्लेख करना अर्थबहुलता होने की विशेषता है। शोध कार्य का उद्देश्य अर्थबहुलता का मूल स्रोत है। व्यापक साहित्य सर्वेक्षण के बाद परिकल्पना को शोध के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तृतीय तंत्र गुण आप्तजन पूजितम है। अनुसंधान नैतिक दिशा निर्देश का पालन को तृतीय तंत्र गुण संदर्भित करता है। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। तर्क संग्रह में शब्द प्रमाण के अंतर्गत सत्यवादी और यथार्थवादी को आप्त कहा गया है। चरक ने यथार्थवादी को आदेश ग्रहण को आप्तजन्म पूजितम नाम से संबोधित किया है। शैक्षिक क्षेत्र में अथॉरिटीज के आदेश का पालन को आप्तजन पूजितम कहा जाएगा। अनुसंधान नैतिकता पालन करने के लिए पर्यवेक्षक, डीआरसी सदस्य तथा यूजीसी के दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाता आ रहा है। त्रिविध शिष्य बुद्धि हित चतुर्थ तंत्र गुण है, जो शोध प्रारूप को तैयार करने को संदर्भित करता है। समाज में 3 प्रकार के विद्यार्थी मिलते हैं: उच्च बुद्धिमान, मध्यम बुद्धि संपन्न, निम्न बुद्धि संपन्न। तीनों प्रकार के विद्यार्थियों का ज्ञान ग्रहण शोध कार्य का परिणाम होता है। शोध कार्य के परिणाम प्राप्त करने के लिए एक नमूना डिजाइन निर्धारित किया जाता है। अपागता पुनरुक्त दोष पंचम तंत्र गुण है, जो साहित्य चोरी को वारण करता है। विषय के क्रम में बार बार किसी विषय का पुनरावृत्ति करना अपागत पुनरुक्ति दोष कहलाता है। 3 प्रकार के विद्यार्थियों के लिए नमूना डिजाइन करने के बाद अनुसंधान में डेटा एकत्र करने की समय आता है। डेटा एकत्र करते समय पुनरावृत्ति दोष से बचना चाहिए। पुनरुक्ति दोष साहित्य चोरी को संदर्भित करता है, अतः प्राचीन ऋषियों ने भी साहित्य चोरी को पुनरुक्ति दोष के रूप में निश्चित किया है। षष्ठ तंत्र गुण आर्सम है, डेटा एकत्रीकरण को संदर्भित करता है। तंत्र गुण में आर्स शब्द ऋषियों द्वारा स्पष्टीकरण का वर्णन करता है। ऋषि मुनियों की व्याख्या अत्यंत प्रामाणिक होती थी। इस शोध में तथ्यों को एकत्रित करते समय जिस प्राथमिक स्रोत का अध्ययन किया जाता है उसे हम वर्तमान आर्सम के रूप में ले सकते हैं, जैसे शिलालेख, पांडुलिपि, प्राचीन मूल ग्रंथ आदि। सुप्रणीत सूत्रभाष्य संग्रह क्रम लेखन विधि संरचना को संदर्भित करता है। सूत्रभाष्य संग्रह के क्रम में प्राचीन पाठ संरचना का उल्लेख किया गया था। साहित्यिक दृष्टि से सूत्र शब्द का अर्थ संक्षेप में है। सूत्र की परिभाषा अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विस्वतो मुखम। शोध के शीर्षक में सूत्र के सभी गुण समाहित होते हैं। सूत्र में वर्णित कथन की चर्चा वार्तिक में 3 प्रकार से किया जाता है, जो प्रसंग को अत्यंत सुदृढ़ बनाने में सहायक होता था। वर्तमान शोध का विषय वार्तिक की उक्त, अनुक्त, दुरुक्त और चिंताधारा पर आधारित होता है, जिसमें मूल के सूत्र के रूप में विद्यमान सूक्ष्म विषय का प्रसार होता है और वह प्रबल ज्ञान से परिपूर्ण शोध ग्रंथ के रूप में उभर कर सामने आता है, जो पिछली किताब के साथ सोचने वाली नए ज्ञान को भी स्पष्ट करता है।
सूत्र का व्यापक वर्णन को भाष्य कहते हैं, जिसे विस्तृत वाक्य की व्याख्या होती है। शोध विषय के शरीर को भाष्य के रूप में लिया जा सकता है। आंकड़ों के विश्लेषण में शोधकर्ता प्राचीन भाष्य का प्रयोग करता है। सूत्र भाष्य द्वारा प्रतिपादित विषय को संक्षेप में लिपिबद्ध करना संग्रह कहलाता है। शोध निष्कर्ष को वर्तमान संग्रह के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। शोध विषय प्रस्तुति के लिए सूत्र भाष्य संग्रह उत्कृष्ट डिजाइन है। सूत्र के बाद शोध विषय में वार्तिक का ग्रहण स्वतः ही हो जाता है। स्वधारम अष्टम तंत्र गुण है, जो डेटा विश्लेषण को संदर्भित करता है। स्वधारम इति शोभना अभिधेयम, अर्थ की सुंदर अभिव्यक्ति स्वधार कहलाती है। लेखन पद्धति में सरल और सुंदर अर्थ वाले शब्द लिपि की शोभा बढ़ाते हैं। शोध विषय का शीर्षक अच्छी तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए, ताकि पुस्तक को पढ़ते ही पाठक के मन में विषय के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। अनवपतित शब्दम, अशुद्ध ग्रामीण शब्द को अनवपतित कहा जाता है। शास्त्रों में ग्रामीण शब्द का 1 मिनट में अपना प्रपत्र समाप्त कीजिए। जी मैं कंक्लूजन की ओर आती हूँ। अनवपतित शब्द अकष्ट शब्दम पुष्कला विधानम, यह डेटा विश्लेषण को संदर्भित करता है। क्रमागत अर्थ तत्व विनिश्चय प्रधानम तंत्र गुण परिकल्पना परीक्षण को संदर्भित करता है। तथा सामान्यीकरण शोध का अंतिम चरण है। सामान्यीकरण के संगतार्थ असंकुल तंत्र गुण सामान्यीकरण को संदर्भित करता है। प्रकरण आशु प्रबोधकम लक्षणावत उदाहरण, ये 4 तंत्र गुण अनुसंधान में अध्यायीकरण को सूचित करते हैं। अनुसंधान ज्ञान की सतत प्रवाहमान धारा है। यह मानव विकास की उत्पत्ति के समय से ही बह रहा है। आयुर्वेद में वर्णित तंत्र गुण इस प्रवाहमान ज्ञान धारा का स्थापना का विशिष्ट नियम है। मेरे शोध पत्र पुराने नियम के साथ आधुनिक अनुसंधान नियम के समांतर रूप से स्थापित करता है। शोध की प्रगति का लाभ केवल भारी मात्रा में उच्च बुद्धिमान तथा मध्यम बुद्धि संपन्न विद्यार्थी ले रहे हैं। वर्तमान के शोध लेखन शैली में कठिन शब्दों का प्रयोग अधिक परिणाम पर रहता है। कठिन शब्दों के कारण निम्न बुद्धि संपन्न शिष्यों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यदि स्वधारम अनवपतित शब्दम अकष्ट शब्दम पुष्कला विधानम क्रमागत अर्थ तत्व विनिश्चय प्रधान असंगतार्थम असंकुल प्रकरण आशु प्रबोधकम लक्षणावत उदाहरणवत आदि तंत्र गुण के माध्यम से अनुसंधान डेटा का विश्लेषण किया जाए तो निम्न बुद्धि संपन्न विद्यार्थियों को अति सरलता से विषय को ग्रहण कर पाएंगे। निम्न बुद्धि संपन्न शिक्षार्थियों की उन्नति विज्ञान की प्रगति में अत्यधिक सहयोगी साबित होगी। इसी प्रकार आयुर्वेदीय तंत्र गुण नियम का पालन दुनिया भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद शुभश्री। तिवारी सर, कोई टिप्पणी आपकी तरफ से? नहीं, ठीक, अच्छा है। नेक्स्ट को बुलाइए। ठीक है। अगला प्रपत्र अपना वाचन करेंगी मधुस्मिता डेका। मधुस्मिता डेका, आप है उपस्थित? जी जी ठीक है, आप शुरू कीजिए। समय का ध्यान रखिए, ठीक है? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके शुरू कीजिए। साक्षान्मूल प्रमाणाय विष्णोरमित तेजसे विधाय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम मधुस्मिता डेका, शोधछात्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालयतः। मध्य शोधपत्रस्य शीर्षको अस्ति विविध रोग चिकित्सासु अथर्ववेदे वर्णितौषधीनां प्रयोगः। ज्ञानक्षेत्रमनन्तं वेदाः च विविध विज्ञानराशयः। चत्वारो वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः। तत्र लौकिकविषयप्रावृत्तेन वैदिकसंहितासु अथर्ववेदः विलक्षणः वर्तते। धर्मयज्ञानुष्ठानादीनां महत्त्वं प्रतिपाद्यते, परमथर्ववेदः यज्ञेतरविषयानपि बाहुल्येन वर्णयति।
एतदेव ऋषिकृतवर्णनम् आयुर्वेदस्य आधारः। तत्र आयुर्वेदस्य आधारत्वेन उच्चरूपेण वा स्थिते अथर्ववेदे विविधचिकित्सासु प्रयुक्तौषधीनां वर्णनम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। अथर्ववेदः भेषजवेदोऽपि कथ्यते। एतरे ब्राह्मणे उक्तं यज्ञस्य हविषभिषक् यद् ब्रह्मा यज्ञायैव तद् भेषजं कृत्वा हरति। अथर्ववेदे औषधयः सोमः, दर्वः, भङ्गः, यवः, सः इत्येषु 5 वर्गेषु विभक्ताः। 5 राज्यानि विरुधां सोमश्रेष्ठानि ब्रूमः, दर्भो, भङ्गो, यवः, सः ज्ञते नो मुञ्चत्वहंसेः। एतेषां सोम औषधिः सर्वश्रेष्ठा कथिता। वैदिकसाहित्ये औषधिशब्दः व्यापकेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। अस्मिन् सर्वविधाः वृक्षाः वनस्पतयः च समागच्छन्ति। औषधिशब्दस्य सामान्यव्याख्या वर्तते औषधयः फलापाकान्ताः, अर्थात् येषां फलानि पाकं प्राप्नुवन्ति ता औषधयः। औषधादिभिः उपायैः रोगाणां प्रतिकारः चिकित्सा इति निगद्यते। अथर्ववेदे उपायभेदेन चिकित्सानां बहुविधाः प्रकाराः सन्ति। तत्र विविधप्रकारेषु रोगेषु विविधप्रकाराः औषधयः प्रयुज्यन्ते। ताभिः औषधिभिः मनुष्यस्य रोगाणां चिकित्सायाः वर्णनम् अथर्ववेदे उपलभ्यते। तमेव वर्णनम् आधारीकृत्य विविधरोगेषु अथर्ववेदे वर्णितानाम् औषधीनां प्रयोगः अत्र उपलभ्यते। यथा मानसिकरोगचिकित्सा। मानसिकरोगः प्रकारद्वयं भजते। प्रथमः क्रोध मोह ईर्ष्यादि मनोदोषरूपः, अपरः च उन्मादव्याधिरूपः। अस्मिन् प्रकरणे मनोदोषरूपस्य मानसिकरोगस्य चिकित्सा वर्ण्यते। एतेषु मनोदोषरूपः क्रोध मोह शोक ईर्ष्यादि दुःस्वप्नादयः अपि भयङ्कराः हानिकारकाः च रोगाः सन्ति। मनोदोषरूप मानसिकरोगेषु षष्ठमकाण्डस्य 43तमे सूक्ते एषा उपलभ्यते। यथा अयं दर्भो विमन्युकः स्वार्थचारणाय च मन्युर्विमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते। अयं दर्भः स्वस्मै परस्मै च विगतमन्युकारकः वर्तते, अर्थात् क्रोधम् अपकर्तुं युज्यते। अयं शान्तिं शीतलतां च प्रददाति। अतः क्रोधं कुर्वतः जनस्य अथवा भविष्ये क्रोधं करिष्यतः जनस्य क्रोधशमनाय अयं दर्भौषधिः उपयुज्यते। शिरोरोगचिकित्सा। शिरसि व्रणाः, वर्णिकाः, खालित्यं, शिरोवेदना च शिरोरोगेण अभिधीयन्ते। शिरोरोगस्य चिकित्सायै केशरोगे प्रयुक्ताः औषधयः हितकराः सन्ति, यतोहि केशरोगः अपि शिरोरोगः एव। अतः केशरोगे उक्ताः सौराष्ट्रमृत्तिकाः, भृङ्गराजादयः औषधयः अपि शिरोरोगे उपयुक्ताः सन्ति। अतिरिक्त शिरोरोगाय अथर्ववेदे पृथक् वर्णनम् उपलभ्यते। तस्य वर्णनम् अत्र क्रियते। यथा शीर्षामयमुपहत्यामक्षोस्तन्वो रपः कुष्ठस्तत्सर्वं निष्करद्वैव वृष्ण्यम्। अर्थात शिरोरोगं, नेत्रान्धं, नेत्रदोषं सर्वानपि दोषान् कुष्ठौषधि निराकरोति। निश्चयमेव देवसिद्धः कुष्ठः बलवीर्यप्रदायकः। एतस्याः कुष्ठे शीतरसचूर्णादीनां प्रयोगः शिरोरोगदूरीकरणाय अस्ति। संधिवातचिकित्सा। अथर्ववेदस्य 2. काण्डे 9मे सूक्ते दशवृक्षद्वारा संधिवातस्य चिकित्सायाः वर्णनम् उपलभ्यते। दशवृक्षेण तात्पर्यः दशमूलं। सूक्तम् अवलोकयामः तावत् दशवृक्षमुचेमं रक्षसो ग्राह्या अधीयैनं जग्राह पर्वसु अथो येनं वनस्पति जीवानां लोकमुन्यय। अर्थात् एतं रोगिणं वातरोगस्य बन्धनात् क्रीडसि, अर्थात् गठिया रोगस्य बन्धनात् सन्धिवातात् च मुञ्च। एताः व्याधयः एतस्य मनुष्यस्य पर्वसु जायन्ते। ये औषधे पुनः एतं जनं जीवितसङ्घे ज्वरचिकित्सा। ज्वरः न कोऽपि स्थानिकः रोगः। अस्य न केनापि स्थानेन अङ्गेन वा सम्बन्धः, अपि तु समस्तशरीरेण धातुभिः च सह सम्बन्धो अस्य। ज्वरस्य चिकित्सा अथर्ववेदस्य 5मकाण्डस्य 22तमे सूक्ते उपलभ्यते।
अग्निमानमपबाधतामितः सोमग्राव वरुणः पूतदक्षा वेदी वर्हि समिधः शुचुषाना अपद्वेषाश्च मुया भवन्तु। अर्थात सोमसधिं शुद्धजलेन सह पाषाणे पिष्ट्वा तस्य तत् स्वरसं होमद्वारा सेवनेन पक्वकषाय पानेन च ज्वर अथवा ज्वरकारणानि दूरीभवन्ति। अयं यो विश्वान् हरितान् क्रीणयुच्छो अधा हि तक्मन्नरसो हि भूया परे हि। अर्थात यह त्वम् अग्निवत् वर्धयन् पीडयन् सर्वान् अंगान् हरितं पीतं करोसि अलम् अनेन वेदेन त्वं विकीर्णो भव निश्चय मलमूत्रद्वारा दूरी भव। मंत्रे अस्मिन् ज्वरस्य लक्षणानि वेदद्वारा मलमूत्रद्वारा विरेचनेन वस्तिनाथ करणीयम् इति कथितम्। केशरोगचिकित्सा केशानाम् अनुत्पत्तिः असमये स्फीतत्वम् इत्यादिकं केशरोगेन अभिधीयते। अथर्ववेदस्य षष्ठमकाण्डस्य एतस्याः चिकित्सायाः वर्णनम् उपलभ्यते। देवी देव्यमधिजाता तां त्वा नितत्नि केशेभ्यो द्विगुणाय नमसि। समागतानां विविधानां रोगाणां निवारणाय औषधयः नितराम् आवश्यकाः। प्रपत्र वाचक या वाचिका को छोड़ के सब अपना माइक म्यूट कर दीजिए। अनुभूयमानेभ्यः दुःखेभ्यः निवारणोपायमन्विष्य तेषां कुशाग्रबुद्धिषु बहुदूरं गताः। मानवराशिः आदिकालात् प्रभृति दुःखनिवारकोपायाः अस्माकं ऋषिभिः प्रदर्शिता दृश्यन्ते। एतत्तु अद्यापि न निवृत्ताः। एकस्मिन् युगे दर्शिताः उपायाः अन्यस्मिन् युगे अप्रसक्ताः भविष्यन्ति। तथापि अस्माकं ऋषीणाम् उपायाः एकान्तेन अप्रसक्ता न भवन्ति। इति चेत् तैः दर्शिताः परातिवर्तिनः मूलकाः च इति कृत्वा वेदनाम ज्ञानराशिः ज्ञानमूलकत्वात् तत्र वेदे समेतां तत्त्वानां संकेतधिया साररूपेण वर्णनं विद्यते। प्रोक्तं च मनोना भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्धति। धन्यवादः। धन्यवाद मधुस्मिता। मैं एक बात कहना चाहूंगी सबको, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी है, ठीक है। कोविड ने हमको ये मौका दिया है कि आज हम डिजिटली या ऑनलाइन हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो सकते हैं, या हमको ये मौका मिला है कि हम घर में बैठ के संगोष्ठी प्रपत्र पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि इसकी गंभीरता को बनाए रखें। कोई माइक म्यूट करके फोन पे बात कर रहा है, कोई वीडियो ऑफ करके प्रपत्र वाच रहा है, ये सारी बातें ठीक नहीं है। आप सब लोग या तो शोधार्थी है या तो कहीं ना कहीं शिक्षक शिक्षिका है। तो मेरा अनुरोध है आप लोग जो संगोष्ठी की गंभीरता को है उसको बनाए रखिए, ये अनुरोध है सबसे। ठीक है, तो तिवारी सर आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? ठीक है, नेक्स्ट बुलाइए। ठीक है, डॉक्टर सुजाता शांडिल्य आप है? सुजाता जी आप? ठीक है, पहले तो अपना वीडियो ऑन कीजिए जी, और बाकी सब अपना माइक म्यूट करेंगे। जी आप शुरू कर जी, 8 मिनट में आपको समाप्त करना है प्रपत्र। जी मैम जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं आज आप लोगों के समक्ष संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद चिकित्सा विषय पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाह रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले विषय लिया है मेरा संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद चिकित्सा। तो आयुर्वेद क्या होता है? आयुर्वेद शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का अर्थ क्या होता है? तो शरीर, इंद्रिय, सत्व मतलब मन एवं आत्मा का जो संयोग होता है वो आयु कहलाता है। और वेद धातु से गहन प्रत्यय होकर वेद शब्द बनता है, अर्थात जिससे अस्तित्व का बोध हो, जिससे ज्ञान हो, जिससे विचार किया जाए तथा जिससे प्राप्ति हो, उसे वेद कहते हैं।
हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्योक्तं आयुर्वेदः स उच्यते। हित आयु, अहित आयु, सुखायु और दुखायु तथा उस आयु के लिए जो हितकर हो अथवा अहितकर है। आयु का मान और उसके लक्षण का वर्णन जिसमें होता है उसी को हम आयुर्वेद कहते हैं। प्राचीन समय में राजाओं अथवा जो धनिक व्यक्ति थे उनके पास से चिकित्सा से कुछ सुख प्राप्ति के अंतर उपहार स्वरूप जो धन की प्राप्ति होती है, चिकित्सक को जो संरक्षण मिलता है और अपने अधिकार में रहने वाले प्राणियों की जो रक्षा होती है, वही आयुर्वेद के अध्ययन का प्रयोजन है। आयुर्वेद के अवतरण के संबंध में काश्यप संहिता में भी कहा गया है कि आयुर्वेद का अवतरण चरकादिवत ही है। काश्यप के मत से स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि के पूर्व ही आयुर्वेद की रचना कर दी थी। ब्रह्मा से यह ज्ञान दक्ष प्रजापति ने प्राप्त किया और दक्ष ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमार जो थे उन्होंने यह आयुर्वेद का ज्ञान भगवान इंद्र को दिया और इंद्र ने यह ज्ञान कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु नामक जो 4 ऋषि थे उन ऋषियों को दिया था। इन चतुर्विद ऋषियों ने यह ज्ञान अपने शिष्यों अर्थात एवं उनके पुत्रों को दिया था। संस्कृत साहित्य में जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण है, जिसे आदि काव्य भी कहा जाता है तथा वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। रामायण में शल्य तंत्र के बारे में भी एक वर्णन आया है, जिसमें सीता जी ने हनुमान जी को संदेश दिया है कि यदि राम जी जल्दी नहीं आएंगे तो अनारी राक्षस रावण मेरे अंगों को अवश्य तेज शस्त्रों से बहुत जल्दी काट देगा। जिस प्रकार यह शल्य चिकित्सा गर्भस्थ मृत शिशु के अंगों को काटकर बाहर करते हैं तथा शल्य तंत्र में जब भी किसी शव को सुरक्षित रखना होता है तो उसे किसी विशेष औषधि का उपयोग करके रखा जाता है। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में भी राजा दशरथ के शव को भरत के आने तक तेल द्रोणी में सुरक्षित रखा गया था। रामायण में कुटज, अर्जुन, कदम, नीम, सप्तज, अशोक, असन, सप्तपर्ण, कोविदार, बंधुजी आदि द्रव्यों का वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त रामायण के युद्ध कांड में औषधीय पर्वतानयन अध्याय है, जिसमें हनुमान औषधि पर्वत को लंका में लेकर आए थे। औषधि पर्वत की पहचान बताते हुए हिमालय के पास सुवर्ण पर्वत और कैलाश के शिखर का वर्णन भी आया है। इस सबके बीच में सभी औषधियों से युक्त वर्णन है। ये औषधियां मृत संजीवनी, विशल्य करणी, सार्वण करणी, संधान करणी, इन सबको लेकर हनुमान जी वहां शीघ्र ही आए थे। जैसा कि कहा भी गया है वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में, मृत संजीवनी चैव विशल्य करणीमपि सावर्ण्य करणीमेव चैव संधान करणीम यथा ता सर्वास हनुमान गृह्य क्षिप्तमागानुचमर्हसि। शक्ति लगने पर लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं तब राम ने उनको मृत समझा और उस समय सुषेण वेद ने उनके जीवित होने के जो लक्षण बताए हैं, इनका उन्होंने कुछ लक्षण बताए थे। उसमें मुख्य लक्षण ये थे कि इनका मुख नहीं बदला है, न ही काला पड़ा है और न ही कांति रहित हुआ है। ये अच्छी प्रभा से युक्त है, प्रसन्न है, हथेलियां भी इनकी रक्तवर्णीय है अर्थात कमल के समान है, नेत्र निर्मल है और मृत व्यक्तियों का ऐसा रूप नहीं होता है। तो वे राम जी से कहते हैं कि आपका भाई दीर्घायु है अर्थात लंबी आयु वालों का ही ऐसा मुख होता है। तो रामायण में रावण की पान भूमि का उल्लेख भी आया है। उसमें दिए गए आंसुओं के नाम, पान भूमि का वर्णन, मग मासादि का वर्णन पूर्णतः आयुर्वेदीय बताया गया है। यहाँ पर जैसे रावण जी की पान भूमि अग्नि के बिना भी जलती हुई दिखती है। इसका अनेक प्रकार से संस्कार किया गया था। अनेक प्रकार के ठीक प्रकार से बनाए गए अनेक मांस वहां पर थे। अनेक प्रकार के सुगंधित चूर्ण रखे हुए थे। बहुत सी मालाएं वहां पर थी। अनेक प्रकार की निर्मल प्रसन्न सुरा, शर्करा सव, माधवी, पुष्पासव, फलासव आदि वहां रखे थे। सुवर्ण एवं स्फटिक के पात्र वहां पर थे। जाम्बूनद के पात्र ओले बर्फ के अंदर रखे हुए थे। मैडम मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है? ये किसी का प्रेजेंटेशन शुरू हो गया शायद इसमें। हेलो हेलो। हाँ, आप तो अच्छा वही मैं देख रही हूँ। कोई शायद पीपीटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। शेयर
जी जी, वही मुझे लगा, मैंने कहा मेरा वीडियो नहीं दिख पा रहा है क्या? स्क्रीन पे। तो जो भी है आप प्लीज थोड़ा सा संयम बनाए रखिए, आपका जब समय आएगा आप एक मिनट आप पढ़िए सुजाता जी। जी 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 मैम जी। भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो भगवत गीता है, जो महाभारत का एक अंश है। इस महाभारत काव्य में भी अश्विनी कुमारों द्वारा कृत चिकित्सा कर्मों का उल्लेख है। तमुपाध्याय प्रत्युवाच अश्विनो स्तुहि तौ देव विभशो त्वाम चक्षुमन्तमं कर्तारविति। महाभारत की सभा पर्व में नारद युधिष्ठिर के मध्य वेद के अष्टांग आयुर्वेद में निपुणता के विषय में संवाद से स्पष्ट होता है कि उस काल में आयुर्वेद के 8 अंग प्रचलित थे। इसी महाकाव्य के आदि पर्व में दुर्योधन द्वारा भीम को विष देने का वर्णन भी आया है। जैसे दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया, जिससे भीम मूर्छित हुए और निश्चेष्ट हो गए, तथा दुर्योधन ने भीम को लता पाशों से बांधकर नदी में ढकेल दिया। वहां पर सर्पों द्वारा काटने से कालकूट विष नष्ट हो गया था, क्योंकि स्थावर विष को जांगम विष नष्ट कर देता है। इसके बाद महाभारत में मंत्र चिकित्सा का भी वर्णन आया है। तो महर्षि काश्यप जो राजा परीक्षित के पास जा रहे थे, रास्ते में उन्हें तक्षक नामक सर्प ने कश्यप को देखकर पूछा कि हे ब्राह्मण, कहाँ इतनी तेजी से जा रहे हैं? तो काश्यप जी ने कहा कि कुरुओं के राजा परीक्षित के पास जा रहा हूँ, आज उनको तक्षक सर्प काटेगा तथा मैं उनको जीवित करूंगा। तब तक्षक ने कहा कि मैं ही तक्षक हूँ तथा मेरे काटे हुए को तुम जीवित कर सकते हो। मैं इस वृक्ष को काटता हूँ, तुम इसे जीवित करके दिखाओ। यह जब उन्होंने प्रश्न किया, तक्षक सर्प ने वृक्ष को काट लिया और जब कश्यप ने उस वृक्ष की संपूर्ण राख को एकत्रित करके फिर से उसे जीवित कर दिया। जैसे यदि वृक्षम जीवयामास काश्यपस्तक्षकेण वै नूनम मंत्रेरहत विशो न प्रणश्येत काश्यपात। परीक्षित ने सर्प से बचने के लिए जिन साधनों की व्यवस्था की, उनमें मंत्र सिद्ध ब्राह्मण, औषधीय तथा वेद थे। जैसे रक्षां च विदते तत्र भीषजोषधानि च ब्राह्मणान मंत्र सिद्धांश्च सर्वतो वै न्ययोजया। महाभारत में रोग के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक शारीरिक और एक होता है मानसिक। शारीरिक रोगों के भी 3 कारण बताए हैं, उसमें है शीत, उष्ण और वायु। तो मन के गुण भी 3 है, सत्व, रज एवं तम, जिसमें अब इसके अनंतर जो है संजीवनी विद्या का भी वर्णन आया है महाभारत में। फलिष्यति न तो विद्या यत त्वं मामा तत् तथा यद्यापश्यामि तु यम तस्य विद्या फलिष्यति। महाभारत का जो आदि पर्व है, उसके 70वें अध्याय में ययाति के चरित्र वर्णन में एक कथा बृहस्पति के पुत्र कच्छ और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के विषय में है कि एक बार ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था। देवासुर संग्राम में विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने बृहस्पति को अपना पुरोहित बनाया और असुर ने शंकराचार्य जी को। देवता जिन दानवों को युद्ध में मार देते थे, शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें फिर से जीवित कर देते थे। बृहस्पति के पास संजीवनी विद्या नहीं थी, इसी से देवताओं ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा। कच्छ ने देवताओं की बात स्वीकार की और शुक्राचार्य जी के पास जाकर ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके 5 वर्षों तक संजीवनी विद्या सीखी। जब दानवों को इस भेद का पता चला तब उन्होंने कच्छ को मार दिया, परंतु शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी के कहने से उसे फिर से जीवित कर दिया। उसी प्रकार 2 बार हुआ, शुक्राचार्य कच्छ की भक्ति से प्रसन्न हुआ और उसे संजीवनी विद्या का वरदान दिया। कच्छ विद्या सीखकर जब गुरु के घर से लौटने लगा तब देवयानी ने कच्छ से विवाह का प्रस्ताव किया, परंतु जब कच्छ ने गुरु कन्या होने से पूजनीय मानकर उनके प्रस्ताव को अस्वीकार किया, इससे क्रोधित होकर देवयानी ने कहा कि तुम्हारी ये विद्या फलवती नहीं होगी। इस पर कच्छ ने कहा कि तुम्हारा यह वचन काम के कारण है, धर्म से नहीं है, इसलिए मैं जिसको भी यह विद्या सिखा दूंगा उसको फलवती होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि जो मृत व्यक्ति को जीवित करने की विद्या है, संजीवनी विद्या का अस्तित्व पूर्व काल में ही था। संस्कृत साहित्य में स्मृतियों का आधार श्रुति है। ये स्मृतियां प्राचीन भारतीय सभ्यता पर अधिक चिंतन करने में सक्षम है। इनमें मुख्य है मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति में भी चिकित्सा के संदर्भ में जो सूक्तियां की गई है, उयम चिकित्सकस्याननम
चिकित्सक के अन्न को ग्रहण करना निषेध है तथा उसी प्रकार चिकित्सक या वैद्य यदि पशु की चिकित्सा में मिथ्यावर्तन करे तो उसे प्रथम साहस का दंड देना चाहिए तथा मनुष्य की चिकित्सा में मिथ्यावर्तन करने पर मध्यम साहस का दंड देना चाहिए। चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरताम दमः अमानुषेषु प्रथमो मनुष्येषु तु मध्यमः। मनुस्मृति में वर्णित गृहस्थाश्रम का आचार आयुर्वेद में वर्णित आचार से साम्य रखता है। मनु ने उद्भज्जों का भेद औषधि वनस्पति वृक्ष और वल्ली के रूप में किया है। निष्कर्ष पढ़िए सुजाता जी। सुजाता जी हाँ निष्कर्ष पे आ जाइए। निष्कर्ष पढ़िए जी तो ये जो मेरा विषय है संस्कृत साहित्य में औषधीय उसमें उसके अंतर्गत संस्कृत साहित्य में अनेक ग्रंथों में जैसे महाभारत है रामायण है और जो हमारे संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान है बाण भट्ट है उन्होंने भी अपनी रचनाओं में आयुर्वेद चिकित्सा का वर्णन किया है। आयुर्वेद जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति में मानी जाती है जो कि अनादि एवं शाश्वत है। जो शास्त्र या विज्ञान आयु का ज्ञान कराए और उसे आयुर्वेद की संज्ञा दी गई है। अर्थात आयुर्वेदानुसार स्वस्थ व्यक्ति के मानदंड जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका मानदंड वही है कि व्यक्ति जिसके शारीरिक एवं मानसिक दोष साम्य हो तथा परिणामतः शरीरस्थ अग्नि साम्य हो तथा उनसे उत्पन्न धातु निर्माण प्रक्रिया भी साम्य हो और फलस्वरूप परिपाचित मल निष्कासन प्रक्रिया भी साम्य होगी। उस व्यक्ति की आत्मा इंद्रिय मन भी प्रसन्न होगा। स्वास्थ्य परियोजनार्थ सभी ग्रंथों में रसायन चिकित्सा ऋतुचर्या आदि का सम्यक पालन कर व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहता है अपितु पूर्ण ऊर्जावान एवं रोगों से मुक्त होकर पूर्णायु शतायु का भोग करता है। धन्यवाद। धन्यवाद सुजाता जी। So we can move on the next participant if there is no question or observation. तिवारी जी अगले पार्टिसिपेंट जी बुलाइए डॉक्टर M.S. सचीस। डॉक्टर M.S. सचीस आप है उपस्थित है? ठीक है नहीं है फिर हम बुलाते हैं मिलन बर्मन। मिलन बर्मन yes ma'am, am I audible? ठीक yes you are audible Milan. So please go ahead, your time is 7 to 8 minutes, okay, wrap up within that. Okay Milan, go ahead. मिलन शुरू कीजिए अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। Just 1 second, I will share my PPT madam. Okay sure। वीडियो ऑन कर लीजिए। Yes ma'am, am I visible? You are audible but not visible. आप दिखाई नहीं दे रहे। Now? नहीं अभी भी नहीं। Okay madam, I will start. Respected chairperson and others dignitaries, my name is Dr. Milan Borman and my topic is the value of pi from Sanskrit text to modern calculation. Okay. So before going to presentation, what is pi? Pi is an important concept that helps to understand some mathematical concept. Pi indicates mainly the relation between circumferences of a circle and its diameter. So now we see how to relate a Sanskrit text with the pi. If you see the Samhita period, that is Rigved Samhita, there are more reference that this time stereos have been made and
Jojurved also mention so many reference. That means without knowledge the pi or without knowledge the ratio between circumferences and diameters of a circle, it is not possible. After that, go to the Brahman period. The Shatapad Brahman also clearly mention that Grahapatya Agni is a circle shape and Ahabhana Agni is a square shape, and both are equal areas. So in this Brahman period, Shatapad Brahman period, or particularly Shatapad Brahman, the authors of Shatapad Brahman or the seers of Brahman, they know very well the relationship between circumferences of circle and its diameter, as well as the value of pi. Okay. But one important thing is that time our seers have not clearly mentioned or have not elaborately mentioned about pi. Now we go to the Vedanga period, especially the Kalpa Sutra and Shulva Sutra. We know the Kalpa Sutra as four: Shulva Sutra, Gidya Sutra, Dharma Sutra, and Shulva Sutra. In the Shulva Sutra mainly gives the construction rules about the sacrificial altars. So in this construction rules of sacrificial altars, Shulva Sutra Karos or author of Shulva Sutras gives many more complicated calculation and transformation, like square to circle, circle to square, square to rectangle. So in this calculation, we got so many value of pi. If you see the Bodhan Shulva Sutra, Potol 1 and Sutra number 113, in this calculation, we got the value of pi 3.00, and another Sutra in the Potol number 1, that is 60, Sutra number 60. In this calculation, we got the value of pi 3.004, and after that 58 number Sutra 3.047, and many more. But after that, the commentators of the Shulva Sutra, they have explained it very well and try to give the accurate value of pi, but they have not give the accurate value, because the pi value is still there. It's a irrational number. Okay, so the commentator like Mohidhar of Kaptan Shulva Sutra, he gave the value of pi 3.1605, and the commentator of Sundararaj of Apostamba Shulva Sutra, he gave the value of pi 3.1415, and after that the Dwarkanath Joju, he also a commentator of Bodhan Shulva Sutra, he gave the value of pi 3.1583, and after that we see the Aryabhatta 1, he also gave the value of pi 3.1416, and modern calculation, the value of pi is approximately 3.1415. So we can say that from the above evidence, the value of pi has been developed from the Sanskrit text, especially in the Shulva Sutra. Thank you, sir. प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए, पीछे से बहुत अनम्यूट आवाज आ रही है पीछे।
कीजिए, बहुत आवाज आ रही है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए सब। ठीक है, ओके, धन्यवाद मिलन। तो हम अगले पार्टिसिपेंट को बुलाएं सर। बुलाइए बुलाइए। हाँ, हाँ बुलाइए बुलाइए बुलाइए। तो हमारी अगली प्रवक्त्र वाचिका है डॉक्टर मधुबाला सिन्हा मैडम। मधुबाला मैडम, आप है यहाँ पे उपस्थित है? यस मैम। ओके मधुबाला मैडम, हाँ प्लीज प्लीज आप पढ़िए। अच्छा, इस सत्र में उपस्थित सभी को मेरा वंदन नमन। मैं डॉक्टर मधुबाला सिन्हा, पटना बिहार से। मेरे शोध पत्र का विषय है आर्ष ग्रंथ रामायण तथा महाभारत में चिकित्सा विज्ञान। महर्षि वाल्मीकि की रामायण हो या वेद व्यास का महाभारत, दोनों का ही जब सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है तो हमें उसमें अनेक वैज्ञानिक तथ्य दिखलाई देते हैं जो विस्मित कर देते हैं। पर मेरा शोध पत्र मुख्यतः चिकित्सा विज्ञान पर बेस्ड है। बहुत अधिक विकसित था उस समय। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखने से ये पता चलेगा। तो पुराने समय में राजतंत्र था, रामायण काल में भी और महाभारत में भी। तो दोनों ही समय युद्धों की बहुत अधिक बहुलता थी, बहुत अधिक युद्ध होते थे। तो युद्ध में आहत सैनिकों की चिकित्सा की विशेष व्यवस्था थी। युद्ध के लिए सेना के प्रस्थान करने पर चिकित्सकों का समूह सेना के साथ जाता था, जो अस्त्र से आहत सैनिकों को तत्काल स्वस्थ कर देता था। रामायण में जहाँ संजीव करुणी औषधि से लक्ष्मण की मूर्छा दूर की गई, वहीं महाभारत में दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे, जो मृत दानवों को पुनर्जीवित करने में दक्ष थे। वीर जाम्बवान एक उच्च कोटि का चिकित्सक भी था, जिसे दिव्य औषधियों का ज्ञान था। वे दिव्य औषधियां थी मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकर्णी, संधानी। एक मैम ने अभी ये उल्लेख किया भी था। मैं बताऊंगी कि इनमें मृत संजीवनी मूर्छा दूर करके चेतना प्रदान करने वाली औषधि थी। विशल्यकरणी शरीर में बिंधे बाण आदि को निकालकर व्रण भरने तथा पीड़ा दूर करने वाली औषधि थी। वहीं सुवर्णकर्णी शरीर को पूर्ववत आभा से युक्त करने वाली औषधि थी, जबकि संधानी टूटी हड्डियों को जोड़ने वाली औषधि थी। युद्ध कांड में जाम्बवान ने इन महौषधियों का प्रयोग किया था, जिसकी गंध मात्र से छत विछत वीरों के शरीर से बाण निकल गए और व्रण भी ठीक हो गए, सभी निरोग हो गए और सारी पीड़ा दूर हो गई। तावप्युभो मानुष राजपुत्रो तम गंधमाघ्राय महौषधि नाम बभूवतु तत्र तदा विशल्या वुतस्थुरन्ये च हरिप्रवीराः सर्वे विशल्याः विरुजाः क्षणेन हरिप्रवीराश्च हताश्च ते स्युः गन्धेन तासां प्रवरौषधीनां सुप्ता निशान्तेष्व संप्रबद्धा। रावण के शक्ति अस्त्र से मूर्छित लक्ष्मण के उपचार के लिए महान वैद्य सुसेन ने भी इन्हीं औषधियों का प्रयोग किया था। रामायण हो या महाभारत, दोनों में ही शरीर में बाण लगने पर उसे कुशलता पूर्वक निकालने का वर्णन है। महाभारत में शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के शरीर से बाण निकालने के लिए कुशल चिकित्सक वहां उपस्थित हुए थे, किंतु उन्होंने दुर्योधन से कहा कि इन चिकित्सकों को धन देकर सम्मान पूर्वक विदा कर दो, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। धनम दत्त्वा विसृज्यतां पूजयित्वा चिकित्सकाः। चिकित्सक शक्तिवर्धक रसायनों का भी उपचार करते थे। रोगों के निवारण में औषधि के साथ साथ मंत्रों का भी वे प्रयोग करते थे। रुरुद्धो पांडु पांचाला व्याधि मंत्रौषधैरिव, अर्थात कर्ण को पांडवों और पांचालों ने अपने बाणों से वैसे ही रोक दिया जैसे चिकित्सक मंत्रों और औषधों से रोगों की रोकथाम करते हैं। शल्य चिकित्सा भी होती थी रामायण काल में भी, महाभारत काल में भी। मैम ने भी इसे कहा, मैंने भी इसे उद्धृत किया है कि गर्भस्थ शिशु को निकालने के लिए
तीक्ष्ण उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। सीता कहती है, तस्मिन् ना गच्छति लोकनाथे गर्भस्थ जंतुरिव शल्य त्रितः नूनम ममंगान्य चिरादनार्यः शरैश्चितैश्चेत्स्यति राक्षसेन्द्रः। महाभारत में भी वर्णन है कि महर्षि जमदग्नि की आज्ञा से उनके पुत्र परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सर काट दिया था। पुनः परशुराम के अनुरोध पर जमदग्नि ने रेणुका को पूर्ववत स्वस्थ कर दिया था। यह शल्य चिकित्सा के अति विकसित रूप को प्रकट करता है। अंग प्रत्यारोपण के भी दृष्टांत मिलते हैं। रामायण में राजा अलर्क का उल्लेख है, जिन्होंने एक ब्राह्मण को सहर्ष अपनी आंखें दे दी थी। याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्या विभमा ददौ। एक अन्य उदाहरण है, जब शापग्रस्त इंद्र प्रजनन शक्ति से हीन हो गए थे, तब पितृदेवों ने मेढ़ के अंग निकालकर इंद्र में प्रत्यारोपित किया था। फिर संतानोत्पत्ति के लिए विशिष्ट जल का निर्माण होता था। राजा युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जन्म अपने पिता के गर्भ से हुआ था। वैद्यों में श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों ने उसे पिता के गर्भ से निकाला था। वस्तुतः युवनाश्व ने प्यास से व्याकुल होकर यज्ञ मंडप के पास एक पात्र में रखे घृत मिश्रित जल को पी लिया था। यह जल संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से अभिमंत्रित था। दक्ष चिकित्सकों की सहायता से निसंतान स्त्री पुरुष को संतान प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। गांधारी के गर्भ से उत्पन्न पिंड के 100 टुकड़े कर उसे घृत कुंड में संरक्षित रखा गया, जिससे कालांतर में 100 पुत्र एवं एक कन्या उत्पन्न हुई। इसे क्लोनिंग या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जा सकता है। महाभारत में वर्णन है कि राजा सगर की पत्नी वैदर्भी ने एक तुम्बी को जन्म दिया। उस तुम्बी के एक एक बीज को निकालकर घी के भरे हुए गर्म घट में पृथक पृथक रखकर उसकी रक्षा की गई और कालांतर में उससे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। यहाँ स्पष्ट है कि वैदर्भी के भ्रूण को ही विशिष्ट पात्रों में रखकर शिशु को उत्पन्न किया गया। ये निश्चित रूप से टेस्ट बेबी जैसे ही थे, अर्थात महाभारत काल में चिकित्सक भ्रूण के बंटवारे के विषय में जानते थे। साथ ही उनके पास शरीर के बाहर मानव भ्रूण को विकसित करने की तकनीक भी थी। रामायण में भी सगर की कथा है, महाभारत में भी सगर की कथा है, रामायण में भी कथा है। वहां कहा गया है, घृत पूर्णेषु कुंभेषु धात्रस्तान संवर्धयन, माने धात्री ने उसका संवर्धन किया। महाभारत के आदि पर्व में सत्यवती ने भीष्म से कहा था कि मैं महाराज वसु के वीर्य से उत्पन्न हुई हूँ। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया, जिसे मल्लाह ने पकड़कर उसके पेट को काटकर मुझे बाहर निकाला और पुत्री बनाकर पाला। मेरे मत्स्य गंध को महर्षि पराशर ने दूर कर मुझे पूर्णतः कन्या बना दिया। पुरुष के वीर्य का मत्स्य के गर्भ में जाना, मत्स्य कन्या का जन्म और उसका कन्या स्वरूप धारण करना चिकित्सा विज्ञान का उत्कर्ष द्योतित करता है। महाभारत में वर्णन है कि राजा बृहद्रथ की निसंतान 2 पत्नियों ने संतान प्राप्ति के लिए एक फल का आधा आधा भाग खाया। फलस्वरूप उनके गर्भ से शिशु शरीर का आधा आधा भाग उत्पन्न हुआ। जरा नामक राक्षसी ने उन्हें जोड़कर बालक रूप दे दिया, जो जरासंध कहलाया। रामायण में चिकित्सा के लिए पथ्य संयत भोजन को महत्वपूर्ण माना गया है। वहां वर्णन है कि कुपथ्य से व्यक्ति रुग्ण होता है। अपथ्य स संभुक्ते व्याधि रन रसे यथा। पुनः रोग उत्पन्न करने वाले भोजन का निषेध किया गया है। रामायण में अन्यत्र भी कहा गया है कि मरणासन्न व्यक्ति न औषधि का सेवन करता है, न पथ्य ही उसे रुचिकर लगता है। ये उक्तियां तत्कालीन चिकित्सकों के उच्च स्तरीय ज्ञान की द्योतक है। महाभारत में अवस्था के स्थानांतरण का वर्णन है। राजा ययाति को शुक्राचार्य के शाप से वृद्धावस्था प्राप्त हो गई थी, जिससे वे संतप्त थे। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मैं युवा अवस्था से संपन्न हो कामों को भोग करना चाहता हूँ, मेरी सहायता करो। तुम मेरी वृद्धावस्था ले लो, मैं तुम्हारी युवावस्था प्राप्त करूंगा। ययाति रब्रवीत तम वै जरा में प्रतिगृह्यताम यौवनेन त्वदीयेन चरेयम विषयान्नहम्।
सबसे छोटे पुत्र पुरु की स्वीकृति पर ययाति ने उसकी युवावस्था प्राप्त कर ली, किंतु कालांतर में भोगों की निस्सारता का विचार करके पुत्र पुरु से अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली। यह चिकित्सा विज्ञान का चमत्कार ही है जो वर्तमान समय में असंभव प्रतीत होता है। उसी प्रकार राजा द्रुपद की पुत्री शिखंडिनी को एक यक्ष ने अपना पुरुषत्व प्रदान कर स्वयं उसका स्त्रीत्व धारण किया था। शिखंडिनी ने भविष्य में यक्ष का पुरुषत्व लौटाने का वचन दिया था। महाभारत में ही लिंग परिवर्तन का एक और उदाहरण मिलता है। इला पुरुरवा की माता भी थी और पिता भी। सा वै तस्या भवन माता पिता चैवेति महश्रुतम। इला वस्तुतः स्त्री थी। पढ़िए बस बस मधुबाला सर, मैडम। बस में मेरा तो 5 मिनट भी नहीं हुआ। वो स्त्री भी थी सर, वो और पुरुष भी बन जाती थी। ये सब उस समय की बात है। और एक बार जब ये हुआ, विष के प्रभाव से, सर्पदंश से जब ये प्रमदवरा की मृत्यु हो गई, तो आधी आयु देकर उसके भावी पति ने उसको नया जीवन दिया। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। शव के साथ सोकर भी 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बहुत सारी बातें हैं। निष्कर्ष के रूप में तो मैं यही कहूंगी सर कि बहुत ज्यादा विकसित था। रामायण और महाभारत दोनों ही कालों में चिकित्सा विज्ञान का अति विकसित रूप दिखलाई देता है। बहुत सारी बातें हैं जो अभी हमारे समझ में आती हैं, बहुत सारी बातें हैं जो समझ में नहीं आती हैं। वो असंभव सा लगता है। आवश्यकता है उस पर गहन चिंतन किया जाए, उस पे ज्यादा ये किया जाए, रिसर्च किया जाए, और कुछ ऐसी मतलब गहन अध्ययन के पश्चात कुछ ऐसा आए सामने में जिससे हम लाभान्वित हो सके। यही है सर। बहुत सारी बातें थी जो छूट गई, कोई बात नहीं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मधुबाला मैडम इस रोचक उपस्थापन के लिए। तो इसी के साथ जो है इस सत्र का समापन होता है। और मैं तिवारी सर से आग्रह करूंगी कि अगर आप पूरे सत्र के उद्देश्य से अगर कुछ आप टिप्पणी या सुझाव देना चाहते हैं सर, आपका स्वागत है। जी जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 तिवारी सर, आवाज आ रही है, आप बोलिए प्लीज। हाँ सबको, हाँ जितने हमारे पहले तो सभी प्रतिभागियों के और हमारी मैडम संयोजिका, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही समय का ध्यान रखते हुए सबने अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। और फर्स्टली आई एम हैप्पी टू थैंक मिस्टर जम्बू गुहा पीटीए धमालोका, who has presented his paper Recreational Maths in India. Recreational Maths in India. आवाज आ रही है मैडम? जी सर जी। ठीक है, ठीक है। He has highlighted Ganit Sar Sangra of Mahaviracharya, and he permitted Mahaviracharya has also given the theory of permutation and commutation that was later followed by Harrigan and so on. And Lilavati, he has quoted Lilavati, magic square. And I want to suggest Dhamaloka that Ramanujan had also given the magic square.
and his guru was G.H. Hardy. When he was in hospital, Ramanujan, G.H. Hardy approached Ramanujan, and he told Ramanujan that the number of my car is bad omen. That was 1729. Then Ramanujan replied that the number is not bad omen. The number is good omen, and he calculated the numbers and cubic 1729 into 12 cube plus 1 cube and 10 cube plus 9 cube. Then he became glad to see from him, and he said that I learned much from him than he learned from me. That was the beauty of the Guru and Professor G.H. Hardy. And Ramanujan also gave the magic square, the beauty of magic square, you can say. And he has also quoted Pythagoras' theorem, that is from Bodhayana Sula Sutra. This is also called nowadays Sula Sutra, Bodhayana Sula Sutra. You can see the 4 Sula Sutras are published from INSA, Bodhayana, Katyan, Apastam, and Manav Sula Sutra. They are from INSA. INSA is Indian National Science Academy. It is in Delhi. So I am thanking Dhamaloka for his presentation. Next is M.B. Mohan. इनका है भारतीय गणित परंपरा. इनकी पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है. इन्होंने गणेश जी को बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्या किया है कि गणेश जी जो कैसे करते हैं, गणयति गणेशम गणकस्य लक्षणम. इन्होंने दिखाया कि कैसे स्कंद है, मुरुगन स्वामी है जो स्कंद स्वामी है, कैसे उनका जो है 6 माउथ हैं, 12 आईज हैं. और इसको देखे हुए फिर उन्होंने संख्या पद्धति को ही बताया. वाल्मीकि रामायण में भी संख्या पद्धति हम देखते हैं कि वहां पर है. केवल वहां पर संख्या राम का स्ट्रेंथ ही नहीं है, केवल संख्या पूरा बताया गया किस प्रकार से 4 सचिव थे और कितनी सेना थी. इसका भी आप वाल्मीकि रामायण के स्कंदकांड प्राप्त करते हैं, आप देख सकते हैं. बहुत ही अच्छा, उनको भी धन्यवाद मेरा वी मोहन जी को. और उसके बाद सुदर्शन कृष्णा जी, उन्होंने अभी चिकित्सा शासनम काव्यकंठ गणपति मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ पर he has focused introduction to the lesser known Ayurvedic compendium. His paper was also beautiful, and he has compared with the Charak Samhita and Atharvaved. Swasthasya swasth lakshanam aturasya vikar prashanam cha. He has shown. Okay, thank you, Sudarshan Krishna ji. And next is Samar Kumara. ये इनका शोध पत्र आयुर्वेदस्य बृहत् त्रयाम प्रयुक्तानाम कतिपय लौकिक न्यायानाम तत्व मीमांसा दृष्टया अध्ययनम. इन्होंने तत्व मीमांसा की दृष्टि से बहुत ही सारा तत्व दिया है, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं और आगे और भी अच्छा करें, इसलिए शुभकामना देता हूं. अब है सुभाश्री पटेल. आयुर्वेद किसमें इन्होंने तंत्र गुण को दिखाया है कि कैसे तंत्र गुण को आयुर्वेद में कैसे किया जाता है, उसका कैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी को बताया कि शोध कैसे करना चाहिए. तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से प्रकट किया. तो सुभाश्री पटेल को मैं धन्यवाद देता हूं और आगे और अच्छा करें इस क्षेत्र में, इनके लिए शुभकामना भी देता हूं. और नेक्स्ट है मधुस्मिता डेका. इन्होंने अथर्ववेदे विविध रोगेषु चिकित्सा. अब अथर्ववेद के बारे में इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे बहुत से जो रोग हैं उनकी चिकित्सा कैसे किया जाना चाहिए, मानसिक रोग का कैसे करना चाहिए. तो इन्होंने उसका भी निदान बहुत अच्छे तरह से बताया. अथर्ववेद तो शुद्ध मूल स्रोत ही है आयुर्वेद का, और सुश्रुत संहिता और चरक संहिता का मूल स्रोत तो आयुर्वेद ही. तो बहुत ही उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इस शोध को और भी आगे बढ़ाएं, इसलिए शुभकामना भी देता हूं. नेक्स्ट है सुजाता शांडिल्य. संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद चिकित्सा. सुजाता जी ने बहुत अच्छे तरह से दिखाया है कि कैसे
भगवत गीता में, रामायण में औषधि कैसे मृत संजीवनी के रूप में लाया गया, और इन्होंने आयुर्वेद से तुलना करते हुए इसको भगवत गीता में भी बताया। अश्विनी कुमारों ने कैसे किया, मंत्र चिकित्सा की बात की। कि सुजाता शानिल को भी धन्यवाद देता हूं, और इसको कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए सलाह भी देता हूं। सुजाता जी धन्यवाद आपको। और नेक्स्ट है मिलान बर्मन। मिलन बर्मन ने वैल्यू ऑफ पाई को दिखाया है फ्रॉम संस्कृत टेक्स्ट टू मॉडर्न कैलकुलेशन। तो मिलन बर्मन ने पाई को दिखाया है बहुत अच्छा तरह से। पाई का यजुर्वेद में जो उन्होंने बताया है कि यज्ञ की वेदिका कैसे बनती थी, वहां पाई का वैल्यू। तो आई वांट टू show him that firstly Bodhayan gave the value of pi, that is 3.1428. 3.1428, and after 3.0885, this was given by Bodhayan Sulasutra. And Katyan Apastam also gave, but Archimedes gave the value of pi 3.1428, but it was not accepted all over the world. The value given by Aryabhat, the value of pi given by Aryabhat in Aryabhatiam of Ganit Pad in Slok 10, that is Chaturadhikam Shatam Asht Gunam Dvasastis Tatha Sahasranam Avidvayavishkambasya Asan Navritta Parinam. That is 100 plus 4 is equal to Chaturadhikam Shatam. Shatam 100 plus 4, Ast Gunam 100 plus 4 into 8 is 832. Chaturadhikam Shatam Ast Gunam Dvasastis Tatha Sahasram. Dvasasti means 62,000, and the 62,000 will be added to 832. Ayut Dvayavishakambhasya Asan Vritta Parinaha. Ayut means 10,000. Dvaya means 10,000 into 2, that is 20,000. And 62,832 will be divided by 20,000, and the resultant will be equal to 3.1416. This is the value of pi, which is universally accepted even today. Even today, our students are using, engineering, medical students, so it is universally accepted. Okay, so I am very happy to see his calculation of Milan Barman. So he also tried to go ahead also in his research realm. Okay, thanks to Milan Barman. And next is last Dr. मधुबाला सिन्हा. इनका बहुत ही अच्छा, लेकिन समय का अभाव रहने से सिन्हा जी को हम लोग समय नहीं दे पाए, इसलिए हम लोग के लिए थोड़ा ये हो रहे हैं, इसलिए वो माइंड ना करेंगे। बहुत ही उन्होंने डीप ड्रिंकिंग किया है, तो वो बहुत धन्यवाद की पात्र है कि समय अभाव है, लेकिन और अच्छा कीजिए आप। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ आपको। रामायण और महाभारत में बहुत कुछ चीज है क्योंकि आज के साइंटिस्ट के लिए जरूरत है। इसमें जो है विज्ञान के जो है, आपने गर्भस्थ शिशु के लिए चिकित्सा की बात की, जो कि आज साइंस की जरूरत है। तो इसलिए आज मॉडर्न साइंस को जो है ना, उसको जरूरत है हमारे जो एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट के साथ, उसके साथ कंपेयर करना और उसको आगे की उस तथ्यों को निकाल कर वहां पर ले जाना। जो साइंस के विद्यार्थी हैं, वो कॉमर्स के हैं, वो नहीं समझते हैं, उनको बताना है कि हमारे यहाँ ये चीज है। वो समझते हैं कि सारा वेस्टर्न का है, उस चीज को बताना है हमें। इसलिए हम एक चीज आप लोगों को बताते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहता है कि वी वो ए लॉट टू द इंडियंस, वी वो ए लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. आइंस्टीन ने भी माना है कि हम इंडियन से ही लेते हैं। अब लास्टली आप लोगों को एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि संस्कृत टेक्स्ट के बिना कुछ हो ही नहीं। आज भी हमारा संस्कृति उसी पर निर्भर है, सारा साइंस उससे भरा हुआ है, वेद से लेकर के आज तक। हमने अमेरिका में भी एक पेपर पढ़ा था वो एग्रीकल्चर साइंस पर, तो वो ये चाहे मैथमेटिक्स पर भी हमने, जेम्स ग्लोवर थे हमारे प्रिंस, तो इस सब चीजों को बताना है उन लोगों को भी। अब जो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर इज ए स्टोर हाउस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथोडोलॉजी।
The work of our ancient scholar should be thoroughly examined and where possible should be integrated with modern sciences. Ignited Minds, पेज 87 में आप इसको देखेंगे. So thanks to all of you. धन्यवाद सबको. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपने एक एक प्रतिभागियों को अलग अलग रूप में आपने संबोधित किया और प्रत्येक प्रपत्र पे आपने गहराई से और बहुत विस्तृत रूप से आपने आलोकपात किया. इसके लिए बहुत बहुत आभार. और इस सत्र के समापन के साथ ही मैं इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी जी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारा मार्गदर्शन किया और साथ ही सत्र की शोभा भी वर्धित की, तथा साथ ही समस्त प्रतिभागियों को जो देश के हर एक कोने से यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं और जिन्होंने अपना अपना प्रपत्र वाचन किया, उनको मैं आभार व्यक्त करती हूँ. निस्संदेह मुझे लगता है इस सत्र से हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा और यही ज्ञान जो आदान प्रदान हमने की, यही अंततः संगोष्ठी का जो है लक्ष्य और उद्देश्य है. तो आप सबको मैं सत्र की संयोजिका डॉक्टर वेदपर्णा दे हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ. और साथ ही हमारा जो अगला सत्र है उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर रंजीत तिवारी जी, जिनका मैं स्वागत करती हूँ और इस सत्र के समस्त प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत करती हूँ. ठीक है, मैं डिलीट हो जाए या वो करता हूँ, लेफ्ट हो. ठीक है, ओके, थैंक यू. ओके सर. आइए सर, ये लिस्ट है. हेलो, इनको सबको बता दो. ये रमैया जी ना. हेलो. At the outset, I welcome and congratulate to all the respective members from the inner core of my heart in this seminar. I also welcome the respected chairperson, Dr. Ranjit Kumar Tiwari, sir of this seminar. Now, I am saying respectively about those who will place the prepare presenter one by one. Dr. V. Yamuna Devi, Dr. B. Preeti, Ujjwal Das, Dr. Maheshwata, Dr. Devaraj Panigrahi, Shanti Mishra, Shubhadeep Ghosh, Nitish Kumar. Now the paper will be placed by Dr. B. Yamuna Devi and his title is Extraction and Application of Natural Dyes as Recorded in Sanskrit Literature. Excuse me. हेलो. Ma'am? मैं डॉक्टर सुप्रिया संजू, मेरा भी इसमें ऐड हुआ है पेपर लास्ट में. सुप्रिया संजू यहाँ पे तो आगे है सर. मैडम प्लीज आप बने रहिए. हमारे जो अभी लिस्टेड जो प्रतिभागी है वो अपना प्रपत्र पढ़ ले तो सबको मौका मिल जाएगा. आप प्लीज बने रहिए. मैं बनी हुई हूँ, बट मेरा पेपर है या नहीं इसमें, क्योंकि मुझे कल इसी सेशन के लिए वो आया था, मेल आया था कि इस सेशन में मैं बनी रहूं. ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए कि मेरा इससे पहले वाले में था, इससे पहले वाले में भी नहीं था आई थिंक, बट इस सेशन में है. ठीक है, इसी सेशन में करेंगे, आप बने रहिए. ओके, तो लास्ट में होगा क्या? लास्ट में होगा. Excuse me, sir. I am also facing the same issue, and my session was also about to start from 2 p.m. onwards, and I am also facing the same issue as the respective lady said. So my name is Tirthendu Ganguly. I'm from Banaras Hind University. Tirthendu Ganguly जी ना? Yes, yes. ठीक है, आप बने रहिए. Okay. नमस्कार तिवारी जी, नमस्कार. देवराज पनिग्रही बोल रहा हूँ. हाँ जी सर, नमस्ते. हाँ नमस्ते. हाँ, मेरा है ना इस सेशन में. है सर, आई एम डॉक्टर यमुना जी. पनिग्रही जी आपका है.
हाँ मेरा Sir, मेरा namaste. हाँ नमस्ते. May I present the paper, sir? Am I audible, sir? Yes, ma'am, you are audible. Please go ahead. Yeah. Yes, ma'am. Thank you. Just a minute. I'll share the screen. Dr. Yomana Devi ji? Yes, ma'am. Okay, okay, ma'am. एक-एक खोलना सर, टिक लगाते जाइए. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. I am Dr. V. Yamuna Devi, Assistant Professor at the Kuppuswamy Shastri Research Institute, Chennai. Today I will be presenting on the extraction and applications of natural dyes as recorded in the Sanskrit literature. Namastabhayai Sabhapatibhyascha. Natural dyes are most sought after worldwide today. The pollution induced into the environment by the chemical dyes has compelled the society to resort back to the age-old methods of extracting and employing the natural dyes in various industries, especially textile and cosmetic industry. A glimpse of scientific knowledge of extracting the colors from organic and inorganic sources as known to our ancestors from the Sanskrit text shall be looked into today. The clothes were dyed and textile industry flourished as early as Paninian times is evident from the Ashtadhyayi. The Arthashastra of Kautilya has laws framed for the defaults of the dyers. Manasollasa of Someshwara describes the painting techniques, elaborating on the preparation of natural dyes used as colors for painting. The Vishnu Dharmottara also deals with the art of painting, elaborating on color techniques. The Brihat Samhita of Varahamihira talks about hair dye. So the references in the Ashtadhyayi clearly shows that the art of dyeing had been well developed during the early 6th or 7th century BC. So Panini, he mentions about various professionals and artisans, and one among them are the Rajakas. These Rajakas are called so as they dye the cloths, Rajyate Anena Vastraniti Rajakaha. And these are different from the Nirnejakas, who are the washermen. There is a sutra dealing with Tena Raktam Ragat. So here Raga refers both to the color and the dye stuff, both. And the cloth which is colored with red is called Lohitaka. That which is colored with black is called Kanaka. And the Laksha and Jatu were popular commercial dyes during the time of Panini. The other well-known dyes are Manjishtha, Neeli, Rochana, and Maharaja are mentioned by Katyayana in his Vartika. Thus, the art of extracting the dyes and its application on the cloth was well known as early as 6th century BC during the time of Panini, is explicitly known from his work. By the time of 1st century CE, Arthashastra of Kautilya gives various laws for giving or delivering the dyed cloths. So here he says, the Arthashastra says that a dyed cloth in red should be delivered to the customer within 5 days, and that with blue after 6 days. And a precious garment dyed in saffron or lac juice or manjishtha, which needs to be worked upon for a longer period, should be given within 7 days. So, Mukulavadatam Shila Patta Shuddham Dauta Sutra Varnam Pramrushta Shvetam Chaikaratrottaram Dadyuhu. So, all the white cloths, it is said, should be delivered within a day, and the others are already given. And further, the text Arthashastra also fixes the penalties in case of dispute concerning dyeing of the cloths. For most precious cloths, the fine was 1 panna. For middling cloth, half a panna.
for lowest quality of the cloth, a quarter pana, and for the rough garments, 1 mashaka or 2 mashakas, and double for the dyed garments. Thus, it is evident that the use of dyed cloths was popular during the 1st century, and this sector of cloth especially had grown into a big industry that rules had been laid to regulate them. Coming to colors in painting. So colors have fascinated the human from early times. The art of painting developed as man discovered the science of extracting colors from the natural resources around him. The Ajanta-Ellora cave paintings are admired to this day for their attractive and long-standing colors acquired from natural dyes. The Manasollasa of Someshwara deals with the extraction of dyes from natural resources in the chapter dealing with Chitrakala. It gives details on making of colors from plants and minerals. The dye materials are classified as Shuddha Varna Dravyas and Mishra Varna Dravyas, and accordingly the colors obtained from them. The 6 basic colors mentioned are white, crimson red, reddish brown, green, and black. These are said to be obtained from the conch, lead, lac, metal, and yellow ornament, and the soot, respectively. The mixed colors are obtained from combining these basic colors, and Someshwara gives an elaborate list of mixed colors, and a chart is presented here. So the verse goes like this: Haritalam Sudhalaksha Tata Hingulakam Rupa Neelam cha Manujashreshta Tathanye Santyanekashaha Deshe Deshe Maharaja Karyaste Stambanayutaha Lohanam Patra Vinyasam Bhavetvapi Rasakriya. And moving on to the cosmetic industry. So people were aware that the white hair, if there is gray hair, ornaments and ornamentation do not beautify. The Brihat Samhita of Varaha Mihira mentions the art of hair dyeing with these natural colors. And he says, Srag Gandha Dupambara Bhushanadhyam Nashobate Shukla Shiroruhasya. So that is why he prescribes a wonderful hair dye. He says, cook the grains of kodrava in sour gruel or vinegar in an iron vessel. Grind them well with iron dust and make a fine paste. After washing the hair with sour gruel or vinegar, apply this paste to the head. Then covering the head with green juicy leaves, remain for 6 hours. Thereafter, remove the paste from the head and apply a paste of myrobalan. Cover it again with green leaves and retain it for another 6 hours. On being washed, the hair will become black. So it was well known that the cosmetic industry had also known the art of extracting the dyes and applying it for benefit. Thus, a glimpse into Sanskrit literature reveals that the ancient Indians had mastered the art of extracting the natural dyes and had the knowledge of their various applications. There are still many texts to be explored to know the various techniques employed by them. This paper is only a propeller for research scholars to pursue further in this line and explore the richness of the past and apply it for the future. By such efforts, the environmental hazards caused by chemicals can be reduced and completely eradicated. I thank the organizers for having given me this opportunity to present the paper. And I also thank our director, Dr. V. Kameshwari of the Kuppaswamy Shastri Research Institute, who has been contributing a lot to research, especially scientific research. Many students of many research scholars have done on mathematics and Vrikshayurveda under her guidance. And I thank the organizers once again for this opportunity. Thank you, sir. Dhanyavada. धन्यवाद महोदय. इदानीं डॉक्टर बी प्रीति. डॉक्टर बी प्रीति महोदय अस्ति वा? Yes sir, namaste. Namaste. Sir, my camera is not working.
So I have a PPT and I'm going to present that. Is it okay, sir? Okay. Okay, 1 minute, sir. Just sharing my PPT. Okay, Namasabhayai. I'm Dr. V. Preeti. I'm working as an assistant professor in the Kuppaswamy Shastri Research Institute, Chennai. And today I'm going to talk about rainbow, ancient Indian vis-a-vis modern scientific views. The natural phenomenon known as rainbow has always attracted people's attention. The rainbows inspire awe and excitement in addition to promising brightness. The colors of a rainbow are light, fresh, and pleasant. When the sun shines on the water droplets in the Earth's atmosphere during rain, it is an optical and meteorological phenomenon that creates a spectrum of light to appear in the sky known as the rainbow. This spectral color arc typically includes violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, and occurs in the sky in the opposite direction from the sun. The internal reflection and refraction of light rays that enter the raindrop result in the rainbow's colored rays, with each color being bent through a slightly different angle. Indradhanus, or the rainbow, is the name for the multicolored sun rays that appear as the wind scatters them across a clouded day. The Brihat Samhita explains this phenomenon as regards Suryasya vividha varnaha pavanena vighatita karasabhre viyati dhanus samsthana ye drishyante tadindra dhanuhu. Modern theory of rainbows. Rainbows are formerly known as the iris, the colored rings seen in the heavens. A rainbow forms when water droplets reflects and bend sunlight, separating it into its range of hues. The National Oceanic and Atmospheric Administration assert that light is refracted or bent as it as it penetrates a raindrop. When this light strikes the other side of the raindrop, it is refracted once more and returns to the observer through the curved inner surface of the raindrop. The wavelength of many colors make up white light differ because light transmits in waves. The raindrop functions as a little prism. In this prism, light with a shorter wavelength refracts slightly more than light with a longer wavelength. Red, orange, yellow, green, blue, and violet are the colors of a rainbow in the longest to shortest wavelength order. A rainbow also contains wavelengths of invisible light such as infrared and ultraviolet radiation. In dews and mist, fogs and clouds, as well as when it does not rain, rainbows can appear. When water droplets of many kinds interact with sunlight, a rainbow occurs. Even in the desert region, we can frequently see a rainbow without ever noticing a drop of water on the ground. When sunlight strikes the accumulating droplets in the sky that evaporates before reaching the ground, the arc of rainbow above the earth is produced. In general, only one bow is visible clearly. This is referred to as a primary rainbow. Being red on the outside and violet on the interior, it displays a lovely array of colors from the spectrum. It is occasionally possible to see the secondary rainbow. This bow is more delicate than the primary bow and displays the same color with the crucial distinction that the colors are arranged differently. Violet is on the outside and red is inside. A work by a man of science, Antarico de Dominus. In a chapter of his work, it is illustrated how the primary bow is made up of two refractions and one reflection, and the secondary bow is made up of two refractions and two reflections. The formation and colors of the rainbows, as mentioned in ancient texts and modern science.
Ancient Sanskrit texts contain numerous references towards the rainbow. The rainbow, also known as the Indradhanus, or the bow without a string, is said to form from the reflection of sunlight in the clouds, according to Taittiriya Aranyaka. I have given the quotes in the PPT, you can see that. The earliest work that discusses the formation, colors, and variety of rainbows is the Brihat Samhita. The rainbow, according to Varaha Mihira, is continuous, brilliant, glossy, thick, and multicolored, touching the earth on both ends, and it hardly ever appears a double. In the commentary of Brihat Samhita, the commentator Bhattotpala highlighted the other sages' perspectives on the rainbow. According to Rishi Putra, the formation of the two unbroken rainbows, one merging in the other and appearing beautiful, are also seen. Brihaspati records twin rainbows, straight and long with deep red and blue colors. From Brihat Samhita, we get to know that rainbows were seen in pink, yellow, and blue colors. The Brihat Samhita records the fact that the rainbows occurs during night also, and they could be of white and other colors. And you can see the picture. This is the rainbow which have been appeared in the moonlight, that is a lunar rainbow. The commentary also explained the term Sita Varnadhyam as white, red, yellow, and dark hues. American scientist and author William R. Collis included a list of rainbow variants in his catalog of geophysical anomalies. Along with the primary or secondary bows, he lists unusual multiple rainbows that sometimes appear. He also talks about that the rainbows cross the primary or secondary rainbows, white offset arcs, and bows on the moon, crimson rainbows, which are uncommon and can only be seen at sunrise and sunset, moving rainbows, and white rainbows visible during the fogs. This is the picture of red rainbow and the white rainbow, that is fog rainbow. Madam. Yes, sir, I'm going to finish there. Okay. 1 minute. The effects of the rainbow. While the Westerners analyzed the details of its formation, shape, and colors, Indians have also predicted the effects of the rainbow formations. Varaha Mihira lists the following effects of rainbow formation on the basis of their colors, the direction in which they appear, and their shape. According to Brihat Samhita, the rainbow appear in front of the marching armies indicates their defeat. Brihat Samhita also mentions an unbroken multicolored double rainbow that emerges in front of people in March. It is lucky and predicts beneficial rains. A pink, yellow, and blue rainbows seen in the intermediate quarter, according to Brihat Samhita, implies calamity from battle, fire, and famine. Varaha Mihira further adds that a rainbow seen in the middle of water causes drought on land, causes diseases if seen on a tree, causes danger from weapons or battle if seen on an anthill, and causes the murder of the minister when seen during the night. According to Brihat Samhita, a rainbow seen at night in the east will bring trouble or ill health to the king, and if seen in the south, west, or north, it will lead in the demise of the commander-in-chief, a prominent figure, and the minister, respectively. As a result of the analysis of the rainbow in Brihat Samhita provided above, it is clear that the ancient Indians were well aware of the numerous sorts of rainbows that may appear in various places and at various times. The effects of the rainbow have not yet been considered by modern science, which is more focused on the rainbow's development. It is up to the current scientists of India to observe and examine the teachings of the great sages like Varaha Mihira on this matter. The validity of the statements of our ancient sages, when proved, will be beneficial to mankind. Thank you. Okay, thank you, madam. इदानीम् उज्ज्वल दास भवान् किञ्चित् अल्पसमयेनैव समापनीय। अहं दृश्यते वा? हरि ओम्। आं महोदय। अहं दृश्यते वा? अस्तु। उज्ज्वल दास न? आम् आम् आम्।
नारायणं नमस्कृत्य नरों चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वभ्यश्च गुरुवर्येभ्यश्च अपि च अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वभ्यश्च प्रतियोगिभ्यः नमांसि। अहमस्मि उज्ज्वलदासः। अहमिदानीं पण्डिचेरी विश्वविद्यालये प्राचीनन्यायस्योपरि शोधकार्यं कुर्वन् अस्मि। अत्र मम शोधपत्रस्य विषयः अस्ति न्यायवैशेषिकन्याये गतिविज्ञानम्। विज्ञानस्य सर्वासु शाखासु एका मौलिकी शाखा अस्ति भौतिकविज्ञानम्। भौतिकविज्ञाने सर्वेषु चर्चितेषु विषयेषु गतिः इति सिद्धान्तः अतिशेते। अधुनातन वैज्ञानिक युगे प्रौद्योगिक उत्कर्षकाले गतिनिर्धारणं विकासस्य बहुषु पक्षेषु अन्यतममिति प्रवदन्ति मनीषिणः वैज्ञानिकाश्च इति। भौतिक विज्ञानानुसारं गतिः एतादृश विषयः यत्र समयेन सह वस्तुनः अवस्थानस्य परिवर्तनं भवति। गतेः विविधाः प्रक्रियाः भवन्ति। गतिं विना अग्रचालनं न सम्भवेत्। विश्वब्रह्माण्डस्य उत्पत्तौ गतेः प्राधान्यमस्ति। गतिः यदि न स्थास्यत् तर्हि इयं सुन्दरी पृथिवी अस्माकं वासयोग्या न भविष्यत्। वयं निश्चितरूपेण अमृष्महि। फलतः पृथिवीं सक्रियकरणाय गतेः अपरिहार्यम् अवदानमस्ति। गतिः भौतिकविज्ञानस्य विषयः, तथापि न्यायवैशेषिकन्याये गतिविषये अपि च तस्याः प्रयोगविषये समुचितरूपेण वर्णना दृश्यते। पाश्चात्यदेशे विज्ञानेन गतिं सत्त्वरूपेण आविष्कृतात् बहुवत्सरात् पूर्वमेव न्यायवैशेषिकदार्शनिकाः गतिविषये आलोचितवन्तः। प्रकृतेः रहस्यम् अतीव विस्मयकरम्। अस्माद् विस्मयादेव प्राचीनकाले ऋषि मुनि दार्शनिकाः तीक्ष्णमेधया प्रकृतेः रहस्यस्य उद्घाटनाय अपि च मानव जीवनस्य उपरि प्रकृतेः महत्त्वं ज्ञातुं सर्वदा तत्पराः आसन्। ते विद्वांसः बौद्धिकबलेन तार्किकबलेन च प्रकृतेः सर्वाणि तथ्यानि सूक्ष्मरूपेण विश्लेष्य सिद्धान्तं प्रति गच्छन्ति स्म। प्रकृतिः एव विज्ञानस्य प्रयोगक्षेत्रमिति मन्यते स्म। यद्यपि न्यायवैशेषिकन्याये भौतिकविज्ञानस्य विविधाः विषयाः वर्णिताः सन्ति, तथापि शोधलेखे अस्मिन् गतिविषये वर्णना करिष्यते। वैदिकाः दार्शनिकाश्च पृथिव्यां प्रथमसामाजिकाः आसन्, ये च तत्कालानुसारं प्रयोगानुकूलं पदार्थम् आविष्कृतवन्तः। यद्यपि ते आध्यात्मिकवादिनः सन्तः स्वदिव्यदृष्टिबलेन विश्वसृजनतत्त्वं प्रत्यक्षितवन्तः। वेदशास्त्रं तु सर्वेषां ज्ञानविज्ञानानां बीजरूपं सूक्ष्मरूपेण आदधाति। बीजात्मकज्ञानस्य अंकुरोद्गमः उत्तरोत्तरकाले भारतीयदार्शनिकैः भाष्यव्याख्याकर्तृभिः बहुधा विश्लेषितः। न्यायवैशेषिकन्याये द्रव्यादिभेदात् सप्तपदार्थाः प्रसिद्धाः। यद्यपि न्यायदर्शने षोडशपदार्थाः स्वीकृताः सन्ति, तथापि न्यायदर्शने प्रतिपादितानां षोडशपदार्थानां वैशेषिकस्य अभ्युपगतसप्तपदार्थेषु अन्तर्भूतत्वात् उभयदर्शने सप्तपदार्थाः स्वीक्रियन्ते। तयोः मतानुसारं सम्पूर्णं जगदिदं सप्तपदार्थेषु अन्तर्भूतम्। सप्तपदार्थेषु तृतीयः पदार्थः कर्म। भौतिकविज्ञाने या गतिः इत्युच्यते। उज्ज्वल जी सारांश तत्र संक्षेपेण निष्कर्षरूपेण। अस्तु। न्यायवैशेषिकदर्शने कर्मणः लक्षणं दीयते। संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समवायिकारणं कर्म कर्मत्व जातिमद्वा। अनन्तरं वैशेषिकदर्शने कर्मणः लक्षणं दीयते एकद्रव्यम् अगुणं संयोग विभागेषु अनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्। अर्थात् एकद्रव्यत्वे सति अगुणत्वे सति संयोग विभागेषु अनपेक्ष। नमस्ते। वदतु शीघ्रं। अनन्तरं तर्कसङ्ग्रहे कर्मणः लक्षणं दीयते कर्म चलनरूपं गतिर्वञ्च इति। तं कर्मणः उत्पत्तिः कथं भवेत् न्यायवैशेषिकदृष्ट्या। कर्मणः उत्पत्तिः भवितुं नार्हति। कर्मोत्पत्तेः हेतुः द्रव्यं गुणश्च। गुरुत्वं द्रवत्वं वेगः प्रयत्नः धर्मः अधर्मः अभिघातः नोदनं स्थितिस्थापक संस्कारश्च एतानि कर्मोत्पत्तेः कारणानि। संयोग विभागो अपि कर्मजनकरूपतया निरूपितौ। कर्मणः विभाजनं कथं क्रियते। न्यायवैशेषिकन्याये कर्म पञ्चविधम्। उत्क्षेपणम् अवक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनं च इति। भ्रमणं रेचनं स्यन्दनम् ऊर्ध्वजलनं तीर्जय गमनादीनि सर्वाणि कर्माणि भ्रमणे अन्तर्भूतानि। एवं
हाँ, भौतिकविज्ञाने गतिः, भौतिकविज्ञाने गतेः लक्षणं कथम् इति चेत् गतिः इत्युक्ते वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः यत् समयेन सह कस्यचित् अवस्थानस्य यदि परिवर्तनं भवति तर्हि स गतिशील इत्युच्यते। भौतिकविज्ञानं दृष्ट्वा गतेः उत्पत्तिः कथं भवेत्? सजीव वस्तुः गतिं न करोति, निर्जीव वस्तु नाम निष्क्रिय वस्तुः गतिं कर्तुं न शक्नुवन्ति। निष्क्रिय वस्तु तदा एव गतिं करोति यदा तस्य उपरि अतिरिक्तस्य कस्यचित् बलस्य प्रयोगः क्रियते। तत्र न्यूटन इति महोदयेन सर्वप्रथमं 87 ईसव्याब्दे प्रकाशिते तस्य फिलोसफिया नेचुरालिस् प्रिन्सिपिया मैथमेटिका इति ग्रन्थे प्रतिपादितानि गति विषयकानि तस्य त्रीणि सूत्राणि। तेषु प्रथमं सूत्रमस्ति एव्री ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू बी इन द स्टेट of rest or uniform motions unless there is external force acting on it। अर्थात बलस्य प्रयोगं न क्रियते चेत् स्थिर वस्तु स्थिरं स्थास्यति, अपि च समवेगेन चलमानं वस्तु चलमानं भवेत्। गतिविषयकं न्यूटन महोदयस्य द्वितीयं सूत्रमस्ति the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। अर्थात वस्तुन भरोवेग नाम अभिघात इत्यस्य परिवर्तनस्य गतिः तस्योपरि प्रयुक्तस्य बलस्य समानुपातिकम्, अपि च यस्यां दिशि बलस्य प्रयोगं क्रियते तस्यां दिशि भरोवेग इत्यस्य परिवर्तनं भवति। गति विषयकं तृतीयं सूत्रमस्ति टू एव्री एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अर्थात यदा एकं वस्तु अन्यैकस्य वस्तुनः उपरि बलस्य प्रयोगं करोति तदा तद्वस्तु अपि प्रथम वस्तुनः उपरि विपरीत दिशि समबलस्य प्रयोगं करोति। तत्र गतेः विभाजनं कथं क्रियते? वयम् अस्मान् परितः विविधाः गतयः पश्यामः, कापि चलति, कापि कम्पते, कापि भ्रमति, कापि सरति। एतानि विविधानां गतीनाम् उदाहरणानि। फलतः गतेः समाप्तिः नास्ति। अत्र वयं कासाञ्चन महत्त्वपूर्णानां गतीनाम् आलोचनं कुर्मः याभिः सह नैववैशेषिकनये प्रतिपादितानां गतीनां सम्बन्धम् अस्ति। सरलरैखिकगति, घूर्णनगति, वक्रगतिः, चलनगतिः, पर्यायवृत्तगतिः, सरलस्पन्दनगतिः। गतिविषये भौतिकविज्ञानेन सह न्यायवैशेषिकदर्शनस्य साम्यम्। न्यायवैशेषिक दर्शने उक्तस्य कर्मणः भौतिकविज्ञाने उक्तस्य च गतेः आलोचनेन ज्ञायते यत् भौतिकविज्ञाने उक्तस्य गतिलक्षणस्य न्यायवैशेषिकदर्शने आलोचितेन कर्मणा सह साम्यमस्ति। अपि च वैशेषिकदर्शने कर्म प्रक्रियायां प्रतिपादितेषु संस्कारस्य त्रिषु भेदेषु वेगस्य विवेचनं तु सर्वथा न्यूटन इति महोदयेन आविष्कृतैः गतिनियमैः साम्यम् अभवति। वेगस्य वर्णनावसरे प्रशस्तपादेन उक्तं तत्र वेगो मूर्तिमत्सु पंचसु द्रव्येषु निमित्त विशेष अपेक्षात् कर्म न जायते। अर्थात पृथिव्याप तेज वायुमनांसि इति पंचसु द्रव्येषु निमित्त कारणस्य सहायेन कर्म न जायते। संयोग विभागयोः कर्मजत्तमिति निमित्त विशेष आमां सिद्धान्तं प्रति गच्छामि। हरि ओम्। शीघ्रं समापयतु। अस्तु अस्तु। निष्कर्षः उपर्युक्तेन आलोचनेन ज्ञायते यत् न्यायवैशेषिकाचार्याणां कर्म विवेचनेन सह भौतिकविज्ञाने आलोचितस्याः गतेः साम्यमस्ति। अनेन ज्ञायते यत् गतिविज्ञानविषये न्यायवैशेषिकदार्शनिकानां सम्यक् ज्ञानम् आसीत्। गतिविषये ते दार्शनिकाः बौद्धिकबलेन यौक्तिकबलेन च या युक्तयः प्रदत्तवन्तः ता अभ्रान्तः सन्ति इति। प्राचीनकाले यन्त्रादीनि कानिचित् नासन्, तथापि ते दार्शनिकाः बुद्धि युक्ति विचार विवेचन आध्यात्मिक बलैः विज्ञान विषयान् प्रत्यक्षीकृतवन्तः। अनेन ज्ञायते यत् तेऽपि विज्ञान विषये ज्ञानवन्तः निपुणाश्च आसन्। अस्माकं देशः भारतवर्षः प्राचीनकालादेव सनातन धर्मपूर्वकम् आध्यात्मिकवादम् अनुसरति। सर्वेषां जनानां मङ्गलाय आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक शक्ति विकासाय च सर्वेः प्राक्तनाचार्याः ऋषयः दार्शनिकाः समाज सुधारकाश्च स्वात्मानं नियोजितवन्तः। यद्यपि तेन भौतिक विज्ञानस्य वैज्ञानिकाः आसन्, परन्तु तेषाम् आविष्कृत विषयेषु भौतिक विज्ञाने प्रतिपादितस्य गतिविज्ञानस्य उल्लेखो दृश्यते। दार्शनिकाः आध्यात्मिकवादिनः आसन्। पारमार्थिक ध्यानबलेनैव ते सर्वाणि भौतिक जातानि वस्तूनि प्रत्यक्षरूपेण ददृशुः। दर्शनसूत्राणि रहस्यात्मिकानि गूढानि इति मत्वा विषय अयं दृष्टिपथं न आगतः। पुनश्च विज्ञान विषयः पाश्चात्य वैज्ञानिक प्रवाह इति मत्वा अस्माकं शास्त्रेषु विद्यमानं विज्ञान विषयं चर्चयितुं क्लिष्टम् अनुभवन्ति आधुनिकाः। धन्यवादः।
धन्यवादः। अग्रे सन्ति डॉक्टर महाश्वेता। आम् अस्मि महोदय। महोदय भवती पत्रवाचनं करोतु। किन्तु धन्यवादः महोदय। अहं डॉक्टर महाश्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभागः, संताल परगना महिला महाविद्यालयः, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटीतः, दुमका झारखण्डतः। सर्वप्रथमं सभागारे उपस्थिताः आभासी पटले च विद्यमानाः सर्वेभ्यः प्रणमामि। अनन्तरम् अहं स्वप्रबन्धं निवेदयामि। मम प्रबन्धः हिंदी भाषायाम् एव अहं प्रस्तौमि। मम विषयः वर्तते भारतीय धर्म ग्रंथ एवं संस्कृति में पर्यावरण चिंतन। अधुना समग्र विश्व की ज्वलंत समस्या है शुद्ध और समय 5 मिनट, पर्यावरण। 5 मिनट में खत्म करना है। आप ओके देखिए। ठीक है, मैं संक्षेप में कहूंगी। ठीक है। परिउपसर्ग पूर्वक ब्रिय धातु से निष्पन्न पर्यावरण शब्द हमारे चारों ओर विद्यमान पदार्थों का बोध कराते हैं। वास्तव में पर्यावरण में हमारे सम्मुख उपस्थित सारे प्राकृतिक पदार्थ आ जाते हैं। प्रकृति पंचभूतों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पर्यावरण प्राकृतिक परिवेश होता है। प्रकृति के सौंदर्य के प्रति जब तक सामाजिक जीवन में सहज सद्भावना रही, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहा। लेकिन जैसे जैसे समष्टि जीवन के प्रति हम आस्थाहीन होते जाएंगे, वैसे वैसे आलस्य, घमंड, पाखंड आदि से निर्मित हमारा जीवन भी संवेदना शून्य, प्रकृति निरपेक्ष और ध्येयहीन हो जाएगा। प्रकृति की रमणीयता और स्वच्छता समाप्त होती जाएगी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रकृति एवं पर्यावरण ही इसके उत्तरदायी तत्व हैं। समस्त प्राणियों में मानव सर्वाधिक बुद्धिजीवी के रूप में स्वीकारा गया है, लेकिन हमारी बुद्धिमत्ता ने पर्यावरण संबंधी तत्वों के दोहन एवं द्विदोहन से उसे क्षत विक्षत कर दिया, जिसका परिणाम वर्तमान समय में पर्यावरणीय समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। प्रकृति के प्रति हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की जो दृष्टि या सद्भावना थी, उसे हम छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि कहीं अल्प वृष्टि है तो कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है तो कहीं तेजाबी वर्षा भी हो रही है, जिसका दुष्परिणाम धरती के समस्त प्राणियों पर पड़ रहा है। पर्यावरण के जो घटक तत्व हैं, वायु, जल, पेड़ पौधे, भूमि, आकाश, सूर्य आदि, वेद में इन तत्वों को देव के नाम से कहा गया है। दिव्य गुणम समन्वितम। ये सभी तत्व अपने दिव्य गुणों के दान से पर्यावरण को शुद्ध व स्वस्थ रखते हैं। वेद कहता है कि मनुष्य वेद प्रतिपादित 100 वर्ष आयु तक या उससे भी अधिक शुद्ध वायु में श्वास ले, स्वच्छ जल का पान करे, शुद्ध अन्न भक्षण करे, शुद्ध मिट्टी में खेले कूदे और शुद्ध भूमि में खेती करे। लेकिन आज कुछ भी शुद्ध सुलभ नहीं है। कारण है कल कारखानों से निकले अपद्रव्य, धुआं, गैसें, कूड़ा, कचरा, मोबाइल आदि डिवाइस भी एक कारण है। पर्यावरण का शुद्ध होना शुद्ध सभ्यता एवं पवित्र संस्कृति का संकेत होता है। हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। प्राचीन ऋषि मुनियों का प्रकृति संबंधी चिंतन सर्वथा वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक था। हमें इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है और मैं संक्षेप में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में जो पर्यावरण के बारे में चिंतन है उस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। मानव सभ्यता का विकास जो है प्रकृति की गोद में ही हुई है। मानव ने प्राकृतिक तत्वों के संरक्षण का दायित्व पहले ही समझ लिया था, तभी तो संस्कृति में पेड़ पौधे और पशु पक्षी सभी समानांतर रूपेण चलते हैं। वेदों, पुराणों, स्मृतियों, महाकाव्यों आदि प्राचीन धर्म ग्रंथों में प्रकृति, जीव जंतु, पर्वत, नदी आदि पक्षों के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का महत्व दिया गया है। तभी तो देवमंडल में देवता की आराधना के साथ साथ हम वनस्पति, जंतु एवं उनके वाहन इत्यादि को भी वट, पीपल, नीम, तुलसी, आंवला, अशोक आदि वृक्ष तथा नाग यहाँ पर्वत और सर्प दोनों के अर्थ में मैं कह रही हूँ, गाय, बैल, हाथी, चूहा जैसे जीवों के प्रति भक्ति भाव का मूल कारण पर्यावरण संतुलन में मनुष्य के योगदान को प्रदर्शित करता है। ऋग्वेद में पर्यावरण, ऋग्वेद आदिकालीन प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। इसके औषधि सूक्त में वृक्षों और वनस्पतियों के औषधीय गुणों के बारे में बताया गया है तथा उन्हें माता की उपाधि दी गई है और माता पूजनीय है। अतः औषधि सूक्त में वनस्पतियां भी पूजनीय हैं। औषधियां विभिन्न रोगों और प्रदूषण को दूर करती हैं। ऋग्वेद में पृथ्वी एवं आकाश के बारे में क्रमशः कहा गया है।
कि पृथ्वी मेरा भरण पोषण करती है, अतः वह मेरी माता है, और आकाश मेरी रक्षा करता है, अतः वह पिता तुल्य है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः उरुव्य च सा महिनीया सश्चता पिता माता च भुवनानि रक्ष। यजुर्वेद में पर्यावरण, वैदिक साहित्य में वृक्षों के संरक्षण के लिए वहां देवत्व का आधान किया गया है। वृक्ष तो पूजनीय है ही, उसके पालक प्रणम्य है। वृक्षाणाम पतये नमः, वनानाम पतये नमः, औषधीनाम पतये नमः, अरण्यानाम पतये नमः, वृक्षेभ्यो नमः, नमो वन्याय। यजुर्वेद में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्य को अनुशासित करने की बात कही गई। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्यस्मित् धनम्। अथर्ववेद में पर्यावरण, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी वृक्ष स्वीकार किया गया है। पर्यजन्य अर्थात पृथ्वी रूपी माता से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियां होती हैं, और माता के रूप में भरण पोषण संवर्धन संरक्षण करते हैं। इसका पालन पिता तुल्य मेघ द्वारा वर्षा इत्यादि करके किया जाता है। अथर्ववेद में अंतरिक्ष के महत्व को बतलाते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार समस्त प्राणियों का जीवन हृदय के धड़कन पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष भी हमारे ब्रह्मांड के धड़कन के समान है। यस्या हृदयम परमेव। ब्राह्मण ग्रंथों में पर्यावरण, भारतीय धर्म ग्रंथों में वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी पर्यावरण की संवर्धन एवं संरक्षण हेतु निर्देश मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वायु की विशेषता बतलाते हुए कहा गया है कि वायु यज्ञ का प्राण है तथा इसके द्वारा अंतरिक्ष की बाधाओं और यज्ञ में दी गई आहुति को सर्वत्र फैलाने वाला कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है कि वायु ही यज्ञ वाहक है, वह देवताओं के लिए हवि का वहन करता है। वायु ही यज्ञ का प्राण है। जब अग्निहोत्र होता है तभी वह आह्लादित होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में यह भी उल्लेख है कि देवतागण मुख रूपी अग्नि के द्वारा असुरों को दूर भगाते हैं। असुर से अभिप्राय वातावरण में विद्यमान अथर्ववेद में अंतरिक्ष के महत्व को बतलाते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार समस्त प्राणियों का जीवन सुनाई दे रहा है? हाँ बेटा। अंतरिक्ष भी हमारे ब्रह्मांड के धड़कन के समान है। यस्या हृदयम परमे व्योम। ब्राह्मण ग्रंथों में पर्यावरण, भारतीय धर्म ग्रंथों में वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी पर्यावरण की संवर्धन एवं संरक्षण हेतु निर्देश मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वायु की विशेषता बतलाते हुए कहा गया है, वायु यज्ञ का प्राण है तथा इसके द्वारा अंतरिक्ष की बाधाओं और यज्ञ में दी गई आहुति को सर्वत्र फैलाने वाला कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है, वायु ही यज्ञ वाहक है और वायु ही, ये भी उल्लेख आया है कि देवतागण मुख रूपी अग्नि के द्वारा असुरों को दूर भगाते हैं। असुर से अभिप्राय वातावरण में विद्यमान प्रदूषण, क्योंकि यज्ञाहुति होने पर सुगंधित द्रव्य वायु द्वारा दुर्गंध रूपी राक्षस का नाश करते हैं। यज्ञो ही भूतानि धन। उपनिषदों में पर्यावरण, उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार है। उपनिषद वह ब्राह्मण विद्या है जो समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाले सांसारिक क्रियाकलापों का नाश करती है, जिससे संसार की कारणभूत अविद्या के बंधन शिथिल पड़ जाते हैं और उसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपनिषदों में जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष का विशद वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है कि पर्यावरण में वायु और अंतरिक्ष के कारण सृष्टि के सभी तत्वों को शक्ति मिलती है, जिससे विकास गति अग्रसर होती है। उपनिषद कालीन ऋषि मुनि एवं मनीषियों द्वारा विद्यार्थियों को अपने निकट बैठाकर प्रकृति के गूढ़ रहस्यों के बारे में शिक्षा दी जाती थी। प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षित कैसे रहें, ऐसे विषयों पर विशेष शिक्षा दी जाती थी। तैत्तिरीय उपनिषद की सृष्टि प्रक्रिया में उल्लेख है
कि परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अंत और अंत से पुरुष की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पंच महाभूतों की अवस्थिति परमात्मा। मैम आप सुन पा रही है? समाप्यामि वा। परमात्मा और पुरुष के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इस है, और इससे स्पष्ट है कि सृष्टि का निर्माण पंच तत्वों के सामूहिक संतुलन का परिणाम है, और इसी से पर्यावरण का निर्माण होता है तथा इसके असंतुलित होते ही प्राकृतिक विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि पृथ्वी के अंदर मैडम आपका माइक बंद हो गया है, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। मैडम फिर से बंद हो गया, प्लीज अगेन टर्न ऑन। ठीक से टर्न ऑन करिए, हाँ अच्छे से, हाँ अब ठीक है, और कुछ ना। स्मृतियों में पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण के नियम के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति में उल्लेख है कि जो व्यक्ति हरे पेड़ पौधे की कटाई करे उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। पुनः यह भी कहा गया है कि जो पशुओं को मारने की अनुमति प्रदान करता है वह, जो उन्हें मारता है वह, जो उन्हें क्रय विक्रय करता है वह, और जो उन्हें पकाता है, जो उन्हें खाता है, सभी हत्या के दोषी हैं। उन सबको प्राकृतिक नियमानुसार दंडित किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में निर्देश है कि गांव की सीमा पर तालाब, कुआं, बावड़ी, झरना में से कुछ न कुछ अवश्य बनवाने चाहिए। साथ ही वट, पीपल, नीम, सेमल, साल, ताल एवं दूध वाले वृक्ष भी लगाने चाहिए। सीमा वृक्षांश कुर्वी क्षीणा उचय उपादपान। रामायण में पर्यावरण के विषय में तो कहना ही क्या है। महर्षि वाल्मीकि जो है आदि कवि माने गए हैं, और इसमें राम राज्य के आदर्शों के एवं पर्यावरण, हाँ, समस्त तत्वों का समावेश है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, महाभारत में भी मैंने चिंतन किया है, महाभारत के भी चिंतन को बताया है। उसमें गीता में व्यास जी कहते हैं अन्नात भवन्ति पूजा यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भव। तो अगर मैं समूचे भारतीय धर्म ग्रंथों में जो चिंतन किया गया है प्रकृति के ऊपर या पर्यावरण पर, तो वे प्रकृति संरक्षण या पर्यावरण के संरक्षण के प्रति गहन संवेदनशीलता ऋषि मुनि मनुष्यों ने रखी है, और सामान्य लोगों तक इस संदेश को उन्होंने पहुंचाया ही नहीं, वरन प्रकृति एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रकृति के घटकों को स्वच्छ रखना मानव का धर्म भी बतलाया है। नीम, पीपल, बट, आंवला, तुलसी, केला, धतूरा, सतुआ आदि वृक्षों एवं वनस्पतियों को प्रत्येक धर्म में किसी न किसी रूप में पूजनीय माना गया है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सभी वृक्ष कुछ कीटाणुनाशक हैं तो अधिकतर ऑक्सीजन के मुख्य उत्सर्जक हैं। इस प्रकार प्राचीन धर्म ग्रंथ पर्यावरण संरक्षण ग्रंथ हैं, और यदि हमारे संस्कार में इन सभी वृक्षों या पौधों का व्यवहार है तो हमारा एकमात्र धर्म या हमारा एकमात्र परम कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण है। हमारे ऋषियों द्वारा स्वस्ति वाचन मंत्र में पर्यावरण चिंतन को प्रकट किया गया है। पर्यावरण जब प्रदूषित होने लगता है तो हमारा भी अपक्षय होने लगता है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही प्रकृति के सभी जगह यथा स्थिति विद्यमान रहने की प्रार्थना हमारे संस्कार में दिया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित न हो। पर्यावरण संरक्षण से अभिसिंचित शांति मंत्र को हमें साकार करना चाहिए। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। समाप्तः। धन्यवादः महोदय। इदानीं डॉक्टर देवराज पाणिग्राही महोदय निवेद्यते स्वकीय पत्र वाचनार्थं। इंदु महोदय श्रूयते वा? श्रूयते।
समयः नास्ति, 3:30 एव अस्माकं समापन समारोहः प्रारम्भः करणीयः। संक्षेपेण प्रस्तौमि। अस्तु अस्तु। नमो नमः। अद्य अस्मिन् आभासिक पटले मित्रवर्याः अस्य सत्रस्य सभाध्यक्षाः तिवारी अन्ये जे सह पत्र प्रस्तोतारः श्रोतारः च तान् सर्वान् प्रणामं विनिवेद्य मम ज अनुबन्ध वर्तते तस्य संक्षेपेण अत्र चर्चा करोमि। तस्य प्रबन्धस्य नामकरणम् एवं प्रकारेण वर्तते वैदिक वाङ्मये वायु महाभूतपरक पर्यावरण चिन्तने वैज्ञानिक दृष्टि। एवं प्रकारेण अस्माभिः सर्वैः ज्ञायते वैदिक ग्रन्थेषु नैकेषु स्थानेषु पर्यावरण संबंधी तत्र निर्देशः चिंता चेतना ऋषीणाम् अस्माभिः प्रदत्तः। अत्र मम निबन्धे मुख्यतः पंच महाभूतेषु वायु महाभूतम् अधिकृत्य एव तत्र निबन्धः विशेषरूपेण प्रस्तुतः मया। अत्र लौकिक साहित्यं यदि विचारयामः पंचतंत्र ग्रंथे वृक्षांश्चित्वा तरून् हत्वा कृत्वा रुधिर दर्शनं यद्येव गम्यते स्वर्गं नरकं केन गम्यते। महर्षिणा विष्णुशर्मणा एतद् उद्घोषयन्ति। अनेन श्लोकेन तत्र पर्यावरणं कथं हानि भवति, कथं अस्य रक्षणं भवति इति एतेषां निर्दर्शनम् अत्र वर्तते। वैदिक साहित्ये तु वैदिक संहितायां वैदिक ब्राह्मण ग्रंथेषु सर्वत्र सर्वेषां महाभूतानां कथं पर्यावरण संरक्षणे योगदानं वर्तते अत्र सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र तत्र विद्यमान निदर्शनमपि दृश्यते। वायुमहाभूतं प्रति कथं ऋषीणां मुख्यरूपेण तत्र निर्देशः वर्तते, कथं वा वायुमहाभूतेन पर्यावरण संरक्षितं, न केवलं पर्यावरणम् अस्माकं शारीरिक सुस्थतामपि भविष्यति इति एतेषां विषयाणां वैज्ञानिकदृष्ट्या तत्र विवेचनं कृतवन्तः। तत्र उदाहरणरूपेण स्वल्पमेव अत्र दर्शयामि, समयः नास्ति, बहु तत्र उदाहरणानि सन्ति, परन्तु संक्षेपेण तत्र द्वित्राणाम् उदाहरणानां तत्र उद्धरणम् अत्र भविष्यति। ऋग्वेदे श्वासानुकूलः शुद्धवायुः कथं भविष्यति, कथं शुद्धवायुः अस्माभिः स्वीक्रियन्ते तद्विषये तत्र ऋग्वेदे दशममण्डले द्वाविमौ वातो वात आपरावतः ते अन्यया वातु परान्यो वातु जद्रपः। अन्यत्रपि वायुद्वारा वायुना कथम आरोग्यतां भवति तद विषये अपि ऋग्वेदे उल्लेखः दृश्यते। आवातो बाहि भेषजं विवातो बाहि जद्रप त्वां हि विश्व भेषजो देवानां दूतयसि। एवं प्रकारेण अन्यत्रपि दृश्यते। वात आवातु भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे प्राण आयुंषि तारिषत्। ऋग्वेद दशम मंडले एतेषां ऋचानां तत्र उद्धरणं दृश्यते। अत्र अन्यत्र अपि विभिन्न रूपेण तत्र
मारुतां मन्ये अधिमे ब्रुवन्तु प्रेमं वाजं वाजसाते अवन्तु आशुनीव सुजवान अहवे ऊतये ते नो मुञ्चन् तो अहंसः। एवं प्रकारेण अन्यत्रपि विभिन्न प्रकारेण अन्यत्रपि बहूनि तत्र उदाहरणानि दृश्यन्ते। अपामुदारं भिन्दी पुरोवातो वर्षन् अस्विरावृन् स्वाहा इति तैत्तिरीय संहितायामपि वायु शोधनेन वायुना कथं पर्यावरणः तत्र सुरक्षा वर्तते, वायुना कथं पर्यावरणे शुद्धि भविष्यति, एवं शुद्ध पर्यावरणेन कथम अस्माकं सुजीवन सुनिर्वहणं भविष्यति ततपि तत्र निर्देशः दृश्यते। बान्ति पर्णशुशोवातः ततः पर्णमुचोपरि ततः पर्णरुहुवाता ततो देवः प्रवर्षति। निरुक्त में भी निरुक्त ग्रंथे भी एतेषां तत्र निर्दर्शनं दृश्यते। तत्र बहूनि उदाहरणानि वर्तन्ते, परन्तु समयाभावानि अहम् एतेषां तत्र वाचनं न करोमि। मधुवाता ऋतायन्ते मधुक्षरन्ति सिन्धवो माधुना सन्तोषति इति ऋग्वेदे मन्त्रपि दृश्यते। अनेन अपि मधुवाता वातानां वायुः तत्र कथं मधु वर्षन्ति, मधुना कथम अस्माकं जीवनं सुरक्षितं सुसञ्चालितं च भविष्यति इति एतेषामपि तत्र निदर्शनं वर्तते। वायु प्रदूषित वायु तस्य कथं शोधनं भविष्यति, यज्ञ माध्यमेन कथं तत्र शोधनं करिष्यामः इति एतेषां विषये अपि तत्र निदर्शनं वर्तते। वशो पवित्रमसि शतधारं वशो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वशुः पवित्रेण शतधारेण श्रुत्वा कामदुच्चः ददतो वात ते गृहे अमृतस्य निधिः ततनो देहि जीवसे इति वायुशोधन प्रकारं कथं भविष्यति यज्ञ माध्यमेन इति एतेषामपि तत्र निदर्शनं वर्तते। अन्यत्र बहु तत्र उदाहरणानि तत्र दृश्यन्ते, ताम् अहम् उपेक्ष्य अग्रे निष्कर्षं तत्र किं तत्र भवति इति अस्य निष्कर्षस्य वाचनं करिष्यामि। पूर्वं सूचितं यत् अद्यतन पर्यावरण समस्यावत् वैदिक पर्यावरण नासीत् कापि शोकोद्वेग कार्यं। वैदिक पर्यावरण वैदिक कालिक पर्यावरणः तथा क्षति नास्ति यथा अधुना वर्तते। तथापि वैदिक ऋषीणां तत्र सूदूरदृष्टि विचारः आसीत् कथम अग्रे समये मानवः पर्यावरणं संरक्षेयुः इति विषये तत्र निर्देशः कृतवन्तः ऋषयः। ऋषयः क्रान्तदर्शिनः इति मत्वा यस्मात् कारणात् पंचमहाभूतानां सृष्टिकारणा गुणानां दिव्यता अनुभवे सिद्धा एते परमपुरुषाः वेदवाणी माध्यमेन तेषां विषये जानि तत्त्वानि प्रकटितवन्तो। यद्यपि समग्रतया अभ्रान्ततया च अस्माकं बोधन परिसरे न आयन्ति, तथापि यावत् बोद्धुं शक्यते तस्य आधारेण वायुमहाभूतस्य time is over. Please, within 1 minute, you finish say concluding observation. ओके ओके। इति हेतुः पर्यावरण संरक्षणे महत्वपूर्णं चेतनां वहन्तः ऋषयोः अस्माकं दिग्दर्शकाः आसन्। तथा च पर्यावरण निर्माणे प्रमुख भूमिकां वहन् वायु सृष्टि संचालने संरक्षणे जगत् गतिशीलकरणे च कारणम् इति वेद संदेशो मानव सभ्यतायै काले काले स्वीकरणीयः इति सम्। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। अस्तु, नमो नमः। इदानीं शान्ति मिश्र महोदय तत्र निवेद्यते स्वकीय पत्रवाचनार्थं। शान्ति मिश्र।
शांति मिश्र है क्या? नास्ति चेत् अग्रे गच्छामः। शुभदीप घोष जी, वैदिक गणित के आलोक में रेखा गणित। जी सर, नमस्ते सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है चलिए। अच्छा, नमस्ते। ओम वेद पुरुषाय नमः। आभासी पटल में उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। मैं शुभदीप घोष श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोधरत हूँ। मेरा आज का विषय है वैदिक गणित के आलोक में रेखा गणित। तो ये हम सभी को विदित है कि गणित समस्त विज्ञान का मूल है। गणित ही सृष्टि रचना के मूल में है। संसार की प्रत्येक वस्तु किसी नियम से बद्ध है, उसमें कई क्रम है, उस नियम और क्रम का ज्ञान ही गणित है। वेदांग ज्योतिष में गणित शास्त्र का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार मयूरों की शिखाएं और नागों में मनिया सर्वोच्च स्थान पर है, उसी प्रकार सारे वेदांगों में गणित का स्थान सर्वोपरि है। यथा शिखा मयूरानम नागानम मनयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्रानम गणितम मूर्धनि स्थितम। प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ महावीराचार्य अपने गणितसार संग्रह ग्रंथ में कहा है कि गणित के विषय में अधिकतम क्या ही कहा जा सकता है। इस चराचर जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके मूल में गणित ना हो। विश्व के इतिहास में रेखा गणित का अभ्युदय तब से हुआ है जब मानव ने देशिक विस्तार में फैली आकृतियों में विभेद करना प्रारंभ किया। वास्तव में विविध वस्तुओं का अलग अलग नामकरण उनकी रेखा गणितीय आकृतियों से बनी अलग अलग पहचान पर अवलंबित था। इस तथ्य का अनुभव करते हुए आगे चलकर दर्शन शास्त्र न्याय सूत्रकार ने किसी जाति की पहचान बनने वाले रैखिक आकार के लिए अलग से आकृति ये पारिभाषिक नाम प्रदान किया तथा इसके अलग पदार्थ के रूप में परिगणित भी किया है। संस्कृत में अभिलेख शब्द का प्रयोग इस प्रकार मतलब लेखन के लिए होता रहा है। आगे चलकर अच्छे उपकरणों से रेखाओं द्वारा आकृतियों का निर्माण किया गया है। उपकरण चाहे जो भी हो, विश्व में जो भी आकृतियां निर्मित हुई है वे अनंत रेखा या लेखा के आलेखन का कमाल है। धीरे धीरे आलेखन में प्रयोग हुई इन रेखाओं के मापन तथा इनके बनने वाली आकृतियों में निर्माण के नियम बनाए गए। इस प्रकार क्रमशः रेखा गणित का शास्त्र के रूप में विकास हुआ है। प्राचीन काल में इन रेखाओं के निर्माण के लिए सबसे बढ़िया उपकरण होता था रज्जु या रस्सी। तो आपस्तंभ विषय सूत्र आदि में भी रज्जु क्रिया के द्वारा इनका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह शास्त्र ही धीरे धीरे गणित शास्त्र या तथा रज्जु शास्त्र या रेखा गणित के रूप में अति प्राचीन काल से ही पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया था। इस शास्त्र के ये नाम इसके कार्य तथा उपकरण के भली प्रकार प्रकट करते हैं। ये इस शास्त्र के उद्भव तथा विकास की प्राचीन परंपरा से हमें जोड़ते हैं। सभी पारिभाषिक शब्दों के साथ ऐसा भी होता है कि इंग्लिश में इस शास्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है जियोमेट्री। यह शब्द मूलतः भूमि मापन अर्थ को प्रकट करता है, क्योंकि यह जियो अर्थात भूमि तथा मीटर अर्थात नापना, इन दोनों शब्दों के सम्मिलित से निर्मित हुई है। आजकल इस शास्त्र के अपने प्राचीन नामों को छोड़कर इस इंग्लिश नाम के आधार पर बनावटी सांस्कृतिक रूप ज्यामिति के प्रयोग की जा रही है। प्राचीन रेखा गणित में जिया एक पारिभाषिक शब्द है। जी की अनेक प्रकार के रेखाओं के केवल एक विशिष्ट प्रकार की रेखा को मतलब संसूचित करता है। तो ज्यामिति शब्द इस रेखा के मापन का वाचक होकर रेखाओं के इस विशाल शास्त्र को केवल इस छोटी सी रेखा में संसीमित कर देता है। तो हमें यह अधिकार कैसे प्राप्त है कि इंग्लिश के तद्भुत रूप को अपनाने के फेर में किसी शास्त्र के विशाल स्वरूप को काट छाट कर विकृत करे, क्योंकि जियोमेट्री जो शब्द है ये थोड़ा विस्तृत है, लेकिन हमारा जो रेखा गणित है वैदिक काल से आ रही है जो गणित है वो बहुत ही विस्तार है, उसका विस्तार बहुत दूर तक है। इसी का उदाहरण देते हुए मैं कहूंगा कि हमारा रेखा कितना विस्तृत है कि आपस्तंभ शूल्ब सूत्र आदि में स्वर्ग की कामना वाले यजमान के लिए श्वेन व बाज के आकार में की वेदी के चयन के विस्तार से उल्लेख है।
शेनचितं चिन्वित सुवर्ग काम इति विज्ञायते। यह खुले हुए पंख तथा फैले हुई पूंछ के आकार की होती थी। इसके लिए अनेक आकार की ईंटों का प्रयोग होता था। मापक ईंट वर्गाकार मतलब 24। हाँ जी जी सर। Time is already over. Please, within हाँ 1 minute. ये सर ये मेरा लास्ट पैराग्राफ है, मतलब मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। Please directly you explain the concluding portion. You come to the concluding portion. ओके सर ओके। तो हम उसमें दिए हैं कि जो मापक ईंट का वर्गाकार है वो 24 × 24 अंगुली होना चाहिए। ये इसको पंचभागीय भी कहते थे, क्योंकि मापक पुरुष की ऊंचाई के 120 अंगुल का 5वां भाग होती थी। इस व्याख्या के अनुसार पंचदश भागीय अर्थात 15वें भाग वाली ईंटें 8 × 8 के आकार की होती थी। ऊर्ध्वाधर ईंटें मापक ईंटों को ढेर गुना अर्थात 36 × 24 अंगुल की होती थी। इसकी मोटाई घुटने का 6 अंगुल 13 तिल होती थी। 34 तिल के 1 अंगुल ये उस समय का मापक एक व्यवहार होता था। पहली बार इस यज्ञ की दीक्षा लेने वाले यजमान के लिए घुटने तक ऊंची वेदी बनानी होती थी। इसके लिए 200-200 ईंटों की 5 परत अर्थात कुल 1000 ईंटों की जरूरत होती है। दूसरी बार वाले यजमान के लिए तभी तक ऊंची 10 परत वाली कुल 2000 ईंटों की वेदी बनती थी। तीसरी बार वाले के लिए मुंह तक ऊंची 15 परत वाली 3000 ईंटों की बनती थी। तो ऐसे ही क्रम से दिया गया है। तो हमारा जो ये रेखा गणित है, मेरा मूल कहने का विषय यही है कि हमारा जो ये रेखा गणित है केवल इंग्लिश का जो जियोमेट्री है भूमि मापन तक ही सीमित नहीं है। कोई भी विषय हो, कोई भी वस्तु हो, उसका गणित या उसका मापन क्रिया जो भी हो वो ही इस रेखा गणित में आया है। आज से हजारों साल पहले वैदिक युग और उससे पहले भी रेखा गणित प्रचलन थी। हमारे जो पूर्वज ऋषिया थे वो इस विषय में भली भांति जानते थे। तो इसके लिए हमें इसको अपनाना चाहिए और भारतीय जो संस्कृति, हमारा जो परंपरा है रेखा गणित वैदिक गणित के विषय में, वो हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए और सारी जगह सबको हमें दिखाना भी चाहिए। यही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः। धन्यवाद प्रदीप जी। इदानीं रम्या आर महोदयां निवेदयामि तत्र वायुपुराणे ब्रह्माण्डविज्ञानविषये स्वकीयं पत्रवाचनं करोतु। रम्या आर महोदया अस्ति वा? श्रूयते वा? रम्या जी? अस्तु, नास्ति चेत् इदानीं येन सुधाकर जब प्रताप रागी भाया श्री दोहाई हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते सर। रम्या जी वदति। रम्या मैडम? रम्या और विशेषर दास जी? नहीं, और एक तीर्थेंदु महोदय जी क्या? पहले तो रम्या महोदया बोलेंगे। अस्तु, तीर्थेंदु गांगुली जी? Yes, I'm here. आप स्टार्ट करिए। Hello. हाँ, सुनाई दे रही है। आइए। Should I? हाँ, लेकिन 3 से 4 मिनट में अपना पेपर ये करिए, निष्कर्ष बताइए।
Okay. So namaste to everyone. The title or the paper that I'm about to present is titled as Science and Sanatan, a study of select Sanskrit texts in terms of modern cosmology and astrophysics. Now, since we are out of time, I'll be very brief. And I'll try to give you the gist of what I've produced in this paper. Now, Albert Einstein, while writing to the German philosopher Erich Gutkind, said that science without religion is lame. And therefore, science and religion should always coexist. However, if you try to marry up science to religion, the problem that emerges is that either you would be called out as a heretic or you would be called as a pseudo. Ramya Bhatt Mahodaya, Cosmology and Cosmogony in Vayu Purana, श्रूयते वा? रम्या मैडम, इदानीं अनन्तरं भविष्यति, आपका इसके बाद में होगा। अभी एक पेपर चल रहा है। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। Shall I proceed? Continue. Yes. Okay. So if you try to marry off science with religion, what happens that mostly you are either called heretic or you are called a pseudoscientist. But the Sanatan Dharma, which is not a religion, but rather a way of life, is not merely at most scientific, but at the same time, it's quite relevant to the present aspects of modern cosmology and astrophysics. Let's say, what about the Big Bang? Most of us, we know that the universe, according to modern astrophysicists, the universe started with the Big Bang. But what happens before the pre-Big Bang time? Because if there is a beginning of the universe, there must be a before time, right? So, mostly according, this is a general consensus that before the Big Bang, nothing actually existed, and it was a kind of a void. And if we go back to Mahabharata Adiparva, it also describes the same phenomena. For instance, it says that at first the entire cosmos was a void filled with utter darkness in the body of Brahma. Out of that state emerged a cosmic egg. Then the Brahma himself entered into this and caused the birth of Brahma, the creator of the universe. Brahma slowly created the various regions and domains of the universe. Now, if we take Stephen Hawking's theory of everything in this regard, he also says that, if we try to analyze the origin of the universe according to the predictions of Einstein's general relativity, we come across the fact that at some time in the past, between 10 to 20,000 million years ago, the distance between neighboring galaxies must have been zero. At that time, which we call the Big Bang, the density of the universe and the curvature of space-time would have been infinite. Now, this quite, echoes what Mahabharata has said. And long before, Vedavyas had written down long before. The next thing is that now we have discussed about the pre-Big Bang. What about the Big Bang? The Srishti Tattva, the Big Bang. Now, our universe model, there are three Friedman models that are there. The first model of Friedman says that our universe is an expanding universe, but it will once again crumple down at certain time. So this would be called as Big Crunch. So we have Big Bang, we have the beginning, it is an expanding universe, and then there will be a Big Crunch as well. Now, if we go back to the Aitiriya Upanishad or even the Bhagavad Puran or Brahmanda Puran, this third model of the first model of Friedman's cosmology is there. It's perfectly there. I will not describe much, but I would just like to mention the sources. Bhagavad Puran, Tritiya Skandha, chapter 8, verse number 13 to 22, and Brahmanda Puran, chapter 4, 68 to 85 sloks. Now, the universe and the inflation theory that I have called that the universe is constantly expanding. Now, do we have any reference to that? Yes, Aitiriya Upanishad, 1.1.14 says, at first, before the universe became into being, nothing existed.
except the Paramatma. It decided to create the universe. At first, it built the various locus or the Hello, various. sir. Hello. Yes, yes. Please conclude your paper within 1 minute. Oh, okay. Yeah. I'm about to do that. So the inflation theory is also there, and that is why Carl Sagan in his book The Cosmos. Carl Sagan is one of the most renowned astronomers. He writes that Hinduism is the only religion which the time scales correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. The concepts of space that we have, that we find in the Chandogya Upanishad or the Prashna Upanishad or the Taittiriya Upanishad, the formation of galactic and intergalactic elements, the various aspects related to the multiverse theories, the concept of black holes, the wormholes, time travels, all these are there. And there is a very beautiful example of that in the Vishnu Puran, in that episode where the Dravata goes back to Brahmalok. So having said all those things, since we are out of time, I would also like to mention that the age of the universe, this is the final concluding statement that I'm making. The age of the universe predicted by modern science modern astrophysicists is for 13.8 billion years ago. And if we take Bhagavad Purana, the calculations that are there in Bhagavad Purana, third Skanda, chapter 11, 18 to 28 sloks, we come across that the age of the universe is 8.6 billion years ago. So 8.6 billions and 13.8 billions, there is a huge difference, but you can also understand that there is also a kind of similarity, because back then someone had been writing about it with that much accuracy. And who knows, science is not, just making some predictions, and whereas we are making some certain attributes to it. So the purpose of my research paper has been to establish an analogy, and it has been much more detailed, and without much detailing, I couldn't go into much proceedings. So if time permits in future, I would be able to do that. And thank you for listening. Thank you. Thank you, Ganguly. Thank you. इदानीं रम्या मैडम अस्ति वा? हाँ अस्ति महोदय अस्ति। प्रारम्भं करोतु। हाँ महोदय। समयः बहु कालः। हाँ महोदय। Namaste to all. I am here to present. Actually, my PPT is not working. I am trying to share it. Anyway. Ramya, you're on mute. Ramya. Please unmute yourself. Am I audible? Yes, you're audible. Okay, ma'am. My topic here is cosmology and cosmogony in Vayu Purana. I would like to share a PPT with you all, but I'm not able to start the PPT. So I will just go ahead with my paper. I myself is a research scholar, Madras Sanskrit College. Now my paper mainly deals with is concerned with the cosmology and cosmogony in Vayu Purana, as I said. The theory of creation, destructions of universe, planets, stars, earth, revolution of all beings, timescales, dynasties, society, culture, etc. has been dealt in large. Madam, yes. शेयर कर Yes, सकती है? sir. अभी शेयर कर Sir? सकती है? Please share Sir, your PPT. yes, sir. Yes, sir. I'm trying to share, sir. Please, sir. Just a minute, sir. Just a minute. Sir, please, just a minute, sir. I'm trying to share. Maybe I can show this one. Sir, just a minute, sir. Share.
Sir, are you able to see my share, sir? No, madam. Support a document. अस्तु भवती वदतु Astu Mahodaya. Sorry. Shamyatam. The theory of creation, destruction of universe, planets, stars, earth, evolution of all living beings, time scale, etc. has been dealt in large by various Hindu sacred texts. The earliest among them is Vedas. So Vedas are called as Shruti texts, which are supported by Smriti texts. And it is also well-known fact that Vedas are containing different statements on cosmogony and cosmological matters. For example, if we see the Rig Vedas, Purusha Sutta explains cosmic man. Nasadiya Sutta explains the matter of origin in detail. Idea of earth as global globe date back to Vedic times, even before Jyotisha Shastra. So though Vedic compositions are not intent to present the physical aspects of creation of universe, efforts are made to bring science aspects to bring about the nature of supreme. Here they accept that there is a supreme from where everything has come. So the Purusha Sutta in chapter 9 says that earth was manifest as circular. Even before the modern science says that like earth is round or earth is spherical. And so even before all this modern science is invented, our Purusha Sutta has explained it in chapter 9, like the earth is manifested circular and appeared like a watermelon. So this is here what I want to show my PPT. Actually, I'm not able to present my PPT. So I think you can just take your imaginations on this. Sahasra Shirsha Purushaha Sahasrakshaha Sahasrapad Sabhumim Vishwato Vritva Ati Yatishta Dashangulam. Here Dasha Angulam, Dasha, it refers to, according to the dictionary, Dasha refers to watermelon. Angulam, the 10, it also refers to the 10 fingers. So Dasha Angulam refers here to the watermelon shape. Might be they would have compared the earth to watermelon because might be it is uneven, like how the shape of the watermelon surface looks on the top. So even before this modern science could invent it, our Vedic text has given an indication that the earth should have been circular. So lots of things like that. Not only this, there are lots of examples. I have taken only this as an example for my paper here. And also again, Upanishad text says that Tameva Bhanta Manu Bhati Sarvam Tasya Bhasa Sarvamidam Vibhati. So he supreme shines, everything shines after him by his light. So here they accept that there is a supreme material that we can compare it to the modern science, what they say God particles. And even now also they are not able to find out what is that God particle. They say in modern terms as God particle. But here we say that there is a supreme. So well-versed, we can say that something has come out of nothing. That is clearly explained in Vedas, supported by, since Vedas could not be understood by the common man, it has been given, supported by Smriti texts like Puranas or Itihasas, and again Vedas are supported by Upanishads and lot of works by different great sages and scholars who have visioned this. And again in Ramayana, for example, just one example from Ramayana. In Ramayana, we can see that natural phenomena are compared in so many places. One in Kishkinta Kanda, there Shirodam Samatikramya Tato Drakshayata Vanaraha Jalodam Sagaraseshtam Sarva Bhuta Bhayavaham. Here, the natural phenomenon of ocean fire that has been mentioned in Ramayana itself, that can be compared to the modern submarine fire. In modern science, you can compare it to the submarine fire. So such events, such frequent occurring events has been mentioned, and also from the beginning, from where universe has come from nothing to so much it has expanded. All this phenomena is it's all explained in our texts. Again in Mahabharata, conversations in Bhishma Parva, section 5, Bhishma Parva Mahabharata, conversations happen between Dhritarashtra and Sanjaya in detail, where the formation of lands, description of waters, continents of earth is explained by Sanjaya to Dhritarashtra as looking like people, tree, and hair. When analyzed, hair, that is the rabbit, when analyzed, becomes similar to the modern globe.
This is a very famous one. Everyone knows that in Mahabharata text, even the pictures have come out. Actually, I put that pictures in my PPT, which I'm not able to present it here. So these are all the, when Sanjaya says to Dhritarashtra how the earth looks like, he talks about the continents formation, like how the two people leaves and a hair is like in the map. The world map has been clearly described by in this incident. So Mahabharata period itself, our people have found out what is the pictorial representation of continents and all other details. So this is again a scientific fact which we were not able to find out. Even now also, very recently only they found out there are 7 continents and all this inventions happened. But even before this, Vyasa's Mahabharata, it has been explained very clearly. And again, Puranas. Puranas have a Pancha Lakshanam. Puranas is a branch of learning, we can say. They all primarily deal with the... Actually, time is very short. So please... sir, I will finish, sir. Actually, already I am not showing my PPT also. I will finish, sir. Primary creation is there. Destruction of the world, including chronology, is there. Genealogy of gods is there. Sages. Manu periods like Manvantras, everything has been explained in Puranas. Puranas definition itself includes Sargascha, Pratishargascha, Vamsho, Manvantaranicha, Vamshanu Charitam cha Eva Puranam Panchalakshanam. So Purana hides all the natural scientific aspects in the form of stories. They have been given to common people or layman, like how they have to understand it in a simpler way. So they have put it in the form of stories. But all the stories can be compared to some scientific events or some modern concepts. So now why I have taken the importance of Vayu Purana, why I have taken this Vayu Purana as my presentation is, Vayu Purana is one of the oldest Puranas, and it is included sometimes as a major Purana, or sometimes it is not been included in few textures as a major Purana. We will leave it, but Vayu Purana has been mentioned, that Vayu Purana's mention has been done in the Harivamsa of Mahabharata. So we can take it as an Vayu Purana is the oldest Purana because its mention has already happened in the Harivamsa. Harivamsa is the later chapter added to the Mahabharata. There itself, there has been a mention of Vayu Purana. And Vayu Purana deals with actually, to summarize in a very short, there are 4 padas dealing with the various aspects. Prakriya Pada, Anusanga Pada, and Upodghata Pada, and Upasamhara Pada, which is having Upasamhara Pada is having totally of 12,000 shlokas, and Gaya Mahatmya and lot of geographical aspects of the earth has been clearly explained there. And there are also 14 lokas that has been explained, which can be taken as eternal, but it can also be further, it also deals with the gross matters like geographical divisions of the world. As I told, planetary mandalas of the astronomical interest and 7 worlds of earth. The 7 dvipas. Now we say that there are 7 continents and everything has been invented in the later period. But even before that, they have divided it like Plakshadvipa, Salmali Dvipa, Kushadvipa, Kraunchadvipa, Shakadvipa, Pushkaradvipa, and Jambudvipa. So already they have divided the earth into 7 continents in Vayu Purana. And again, they say that Jambudvipa is again divided into 9 continents. Yes, sir, I'm finishing, sir. Vayu Purana also describes the pilgrimage places in Bharatavarsha, such as Ganga, Kaveri, Prabhasa, Gaya, and etc. So such detailed studies can be done, or researches also can be done further into these places. And Yuga, Manvantara, everything has been explained very clearly. All this is having the whatever the modern science says, the calculation of time for millions of years, all that calculations has been done very detailed, like yugas and manvantras, etc. And pralaya, dissolution, has also been discussed in Vayu Purana. Naimitika pralaya, prakrita pralaya, atyantika pralaya, which can be compared to the modern science of destruction of the earth periodically and again coming into a form that can be compared to that. Again, there are a lot of controversies, though there is erupting between the modern geographical rationals. Yes, sir. Yes, sir. Traditional theories. We have been taken some researchers to, we are all taking actually some steps to identify such explanations and to justify our Puranic concepts. Thank you, sir. Thank you. Thank you for giving me this opportunity, sir. Dhanyawad. Thank you, madam. Idanim Shanti Mishra Nasti Praisa. पुनः Shashidhara.
येन शशिधरः अस्ति वा? अस्तु महोदय, अहं शशिधरः वदामि। एकं निमिषम्। Hello, can you hear me? Sir, myself requesting you to please log out one of your Zoom link, or else echo is coming out, please. Okay, sir. Sorry. Can you hear me now? Hello. Yes, Yeah, yes. now clearly audible. Please start. Okay, okay. Thank you, sir. My name is Dr. Shashidhar from Usman University. My topic is agriculture science in Sanskrit literature. The glory of agriculture. Sanskrit is not just a language; it is voice of India's soul, tradition, and wisdom. This language is a link between our Puranic sense and the modern sense. Agriculture is the circulatory system of any country. It is sustains the body of the nation. Indic civilization is a spiritual civilization, and then Krishikshetra farming. The sacred test of the farming is the gift of the supreme God to mankind itself. This sacred knowledge is not our struct. The farmer on how to fill his family's belly, but also on the society itself can do so in harmony with the natural rhythm of the world and cosmic order of the universe. The glory of the agriculture. In various Vedic literatures, there are many statements which tells various aspects of the agriculture and its glory. For example, in the Akshasuktam, Akshasuktam of the Rig Veda, the where she also explains the greatness of the agriculture to become wealthy and happy. In this Rig mantra, the Alusa advised to one gambler how losses everything by playing with dice to stop gambling and engage himself in agriculture to become wealthy and happy. अक्षोर्मधिव्याः कृषिमि कुशस्वः वित्तोरवस्व बहुमन्यमानाः. Now, my second heading is space between in two plants. The Agni Purana says that it is best to plant trees at intervals of 2 cubits and interval of 6 cubits in next, and verse is the interval of 2 cubits. Closely planted trees become a fruitless. Shukraniti also mentioned this same diameters in the Shukraniti Saram. Underground water and pumping machine. If there is an ant hill covered by holy Kushak grass to the northeast of the Kovidar, means ebony tree, there will be limitless water at the depth of 22.5 cubits between the tree and ant hill. The appearance of the snake of the color of the lotus at the depth of 5 cubits from upper level, followed by layers of red earth and brownish. Ruby indicate the presence of the heavy water. The Rigveda Gatiyantra or Ashmachakra applies for raising water from the well mentioned the Rigveda, as the latter records describe the consisted of the row of the earthen pot tied the rim of the drum shaped wheel turning into the vertical plane over water. The wheel having spokes worked like a capstan. It was moved by the gaining of horizontal wheel turned by man or waste to the vertical water host. So, next one, seedless fruits and vegetables. The paste prepared out of modiyesti, sugar, custom, madhupushpakam, together applied to the root of the trees, produces seedless fruits and vegetables. Hello? Hello? Actually, time is over, so please come to the Preparation. part. Okay. Okay.
I will conclude the conclusion of my presentation. There is so many methods mentioned in the Krishi Shastram. Some of them about seed purification, groundwater, nature of the soil, horticulture, sowing of the seeds, process of the plantation, nourishment of the plants, treatments of the trees, botanical marvels, rain making, indications of the groundwater, storage of the seeds, time of the sowing seeds, weeding the field, and management of the agriculture. एतदेव मम पत्रमस्ति. This is my paper. Thank you to all participants and the Assam University. Thank you, sir. Thank you, sir. इदानीं शान्ति मिश्रा अस्ति वा? नास्ति चेत् शान्ति मिश्रा नास्ति न? बहु सम्यक् प्रकारेण यथा संस्कृतज्ञाः विज्ञानं न जानन्ति, वैज्ञानिकाः संस्कृतं न जानन्ति इति जनाः वदन्ति, तथापि अत्र बहु उत्तमतया स्वस्वविषयं प्रतिपादनं कृतवन्तः. तत्र डॉक्टर सुप्रिया, आपने कहा था लास्ट में आपका पेपर होगा. डॉक्टर सुप्रिया नाम तो नास्ति अत्र. ओ सुप्रिया संजु न? जी. अस्तु, भवती पठतु शीघ्रं. निमेषद्वये 2 मिनट में. अच्छा. सर्वेभ्यो नमः. मम नाम डॉक्टर सुप्रिया. अहम् अमेठी विश्वविद्यालय हरियाणातः अस्ति. मम शोधपत्रस्य विषय अस्ति वैदिक साहित्य में विद्यमान संस्कृत साधना का वैज्ञानिक महत्व. ओनली कंक्लूजन मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है? आपने 2 मिनट का ही समय दिया है, या थोड़ा और भी कर सकती हूँ? मैडम, एतत् समापन समारोह चल तदा प्रारंभ ठीक 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 ठीक. भारतीय संगीत अपनी मधुरता, लयबद्धता तथा विविधता के लिए जाना जाता है. वर्तमान भारतीय संगीत का जो रूप दृष्टिगत होता है, जो मानवीय लय एवं तालबद्ध अभिव्यक्ति है, वैदिक काल में ही भारतीय संगीत के बीज पड़ चुके थे. सामवेद उन वैदिक ऋचाओं का संग्रह मात्र है जो गेय है. प्राचीन काल से ही ईश्वर आराधना हेतु भजनों के प्रयोग की परंपरा रही है. यहाँ तक कि यज्ञ आदि के अवसर भी समूहगान होते थे. ध्यान देने की बात यह है कि प्राचीन काल की अन्य कलाओं के समान ही भारतीय कला भी धर्म से प्रभावित थी. वास्तव में भारतीय संगीत की उत्पत्ति धार्मिक प्रेरणा से ही हुई है, परंतु धीरे धीरे यह धर्म को तोड़कर लौकिक जीवन से संबंधित होती गई है. इसी के साथ नृत्य कला, वाद्य तथा गीतों के अनेक नए नए रूपों का आविष्कार होता गया. कालांतर में नाट्य भी संगीत का एक हिस्सा बन गया. समय के साथ संगीत की विभिन्न धाराएं विकसित होती गई. नए नए राग, नए नए वाद्य यंत्र और नए नए कलाकार उत्पन्न होते गए. भारतीय संगीत जगत अनेक महान विभूतियों के योगदानों के परिणाम स्वरूप ही इनका विशाल रूप धारण किए हुए है. इसकी वैज्ञानिकता, इसके संगीत के द्वारा चिकित्सा, इन सभी विषयों को मैंने इस शोध पत्र में शामिल किया है, किंतु मैं सीधे कंक्लूजन पे जाती हूँ. मैं निष्कर्ष से ये कह सकती हूँ कि वैदिक संगीत अपने विविधताओं के साथ वैज्ञानिकता को प्राप्त किए हुए हैं. स्वरों का उतार चढ़ाव, रागों का समय निर्धारण आदि संगीत के वैज्ञानिक पक्ष को दर्शाती है. संगीत की स्वर साधना, नाद ब्रह्म की साधना, भारतीय ऋषि मुनियों ने संगीतिक साधना के द्वारा अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी. वे मंत्रों के प्रभाव को भलीभांति जानते थे. नाद के उचित प्रयोग से स्वर, ताल, लय और एकाग्रता का सम्मिश्रण होता है, और यह सम्मिश्रण मानसिक व शारीरिक चिकित्सा में सहायक होता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर के अवयव पंच महाभूतों
के अवयवों से ही निर्मित होते हैं। प्राचीन काल में ही विभिन्न मंत्रों के स्वस्वर उच्चारण तथा सामवेद की ऋचाओं के गायन द्वारा जनमानस के विभिन्न रोगों का निवारण किया जाता था। संगीत मनुष्य के मन मस्तिष्क पर अत्यंत ही गहरा प्रभाव डालता है, जिससे मनुष्य उस परम आनंद को प्राप्त हो जाता है और अपने शारीरिक और मानसिक विकारों के कष्ट को भूल जाता है। ईश्वर उनके लिए बिल्कुल समीप होता है, जो ईश्वर की बातें सुनते हैं और अपनी उससे कहते हैं। इस दिव्य मिलन के लिए हाड़ मांस के स्थूल नेत्र या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अंतःकरण अपनी दिव्य इंद्रियों के सहायता से इस कार्य को आसानी से पूरा कर लेता है। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी कोई बाकी है क्या? पेपर प्रेजेंट करना है, नाम नहीं बोला गया है, ऐसे कोई है तो? प्राय नहीं है। शांति मिश्रा का नाम 2-3 बार बोला जा चुका है, तो इसको शीघ्र समाप्त करेंगे। मैं आप लोगों का पत्र सुन के कुछ ऐसा कहना चाहता हूं कि समय का अभाव, प्रश्नोत्तरस्यापि समयः अस्माभिः न प्रदत्तः, कारणं 2:00 एव एषः आसीत्। 3:00 वयं प्रारम्भं कृतवन्तः, 1 घण्टा लेट् चलति यानं। तदर्थं किञ्चित् अहं वक्तुम् इच्छामि यत् अस्माकं भारतवर्षस्य राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तेः बहुदशकानन्तरमपि उचित आत्ममूल्यांकनस्य न्यूनता कारणात् आत्मसम्मानाभावात् भारतीयानां विचारप्रक्रियायां संस्कृतशिक्षणं प्रति पीडादायिका उदासीनता वर्तते। संस्कृतम् अस्माकं प्राचीन भण्डागारम् इति तथा च व्यापक ज्ञानाधारम् इति ज्ञातुं विलम्बो जातः। भारतीय छात्राः प्रायशः न जानन्ति यत् सहस्र वर्षेभ्यः भारतीय प्रतिभा विज्ञानानुसंधाने समग्र विश्वे जगद्गुरु रूपेण विख्यातो विद्यते। ज्ञानस्य विविध क्षेत्रेषु स्वीय अद्वितीय उपलब्धि कारणेन अंतर्राष्ट्रीय समुदायेनापि भारतस्य प्रशंसा समय समय कृता अस्ति। संस्कृत वाङ्मय विज्ञान कारणात् एव भारतं जगद्गुरु पदव्याम् आसीत्, जगद्गुरु रूपेण विख्यातः आसीत्। अद्य सत्रेऽस्मिन् तत्र व्याख्यानं कृतवन्तः डॉक्टर बी जमुना देवी। तस्या व्याख्यानम् अतीव रोचकं पुनः सूचनादायकं च आसीत्। तथैव भी प्रीति महोदय रेनबो एन्शियंट इंडियन तस्य इति विषये बहु सुन्दरतया स्वकीयम् एतद् पत्र उपस्थापनं कृतवती आसीत्। महोदयायाः कृते वयं समयं न्यूनं दत्तवन्तः। तत्र पत्रम् आसीत् अतीव इंद्रधनुष सदृश एव, रेनबो सदृश एव कलरफुल आसीत्, बहु तत्र इन्फॉर्मेटिव आसीत्। तथैव उज्ज्वलदास न्याय वैशेषिक नये गति विज्ञान विषये उक्तवान् आसीत्। महोदयं किञ्चित् अहं वक्तुम् इच्छामि। तत्र एकं पुस्तकम् अस्ति प्राइड ऑफ इंडिया। किञ्चित् तत्र पश्यति चेत् इतोपि भवान् तत्र वस्तुं प्राप्तुं शक्नोति। तथैव डॉक्टर महेश्वरी महाश्वेता महोदय भारतीय धर्मग्रंथ एवं संस्कृति में पर्यावरण चिंतनं संपूर्ण तत्र वैज्ञानिक रीत्या तत्र विश्लेषणं कृतवती आसीत्। पुनः देवराज पाणिग्राही महोदय अपि पर्यावरण चेतना विषय वैदिक वाङ्मय पर्यावरण चेतना विषयकं शोधपत्रं प्रस्तुतवन्तः आसन्। एते महोदयाः अतीव सूक्ष्मतया विषय उपस्थापनं कृतवन्तः। एते विद्वांसः सन्ति। पुनः
वैदिक गणित के आलोक में रेखा गणित इति शुभदीप घोष शोध छात्रेण तत्र प्रस्तुतं कृतमासीत् पत्रं तदपि बहु उत्तमम् आसीत्। रम्या महोदया तत्र वायुपुराणे ब्रह्मांड विज्ञान विषयकं स्वकीयं शोधपत्रम् उपस्थापितवती। तत्र एते सां पुनः गांगुली सुप्रिया शर्मा एतेषां कृते समय अपि वयं न्यूनं दत्तवन्तः। एतेषां पत्रोपस्थापन विषये तत्र वयं वक्तुं शक्नुमः। एतादृश सेमिनार् एतादृश आलोचना चक्रं तत्र अस्माकं संस्कृतज्ञानां कृते पुनः वैज्ञानिकानां कृते अपि मध्ये मध्ये आवश्यकमस्ति। कारणं संस्कृतवाङ्मयः वैज्ञानिकः तर्कपूर्णः ज्ञान विज्ञान रहस्य समन्वित अनितर साधारण असाधारणं च वर्तते। यत्र विश्वेस्मिन् विद्यमानानां विद्यानां सिद्धान्तानां च मूलं विस्तरेण समुपलभ्यते। तथापि भारतीयाः छात्राः गवेषकाश्च इमां विचारसरणिं नानुसरन्ति। एतत् चिन्तनीयो विषयः अस्ति। तदर्थं एतद् संस्कृतभारती तत्र साहाय्येन एतस्य संस्कृत विभाग असम विश्वविद्यालय संस्कृत विभागस्य आयोजने पुनः सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम असम यूनिवर्सिटी द्वारा तत्र एतद् बहु उत्तमं कार्यं कृतम् अस्ति इति मन्ये। वयम् अस्माकं यत् एतादृश संस्कृते संस्कृतवाङ्मये यत् ज्ञान विज्ञानम् अस्ति यत् कारणम् अस्माकं संस्कृतज्ञानां दुर्बलः पक्षः यत् वयम् इमां ज्ञानराशिं विश्वपटले समुपस्थापयितुं प्रयासशीलाः न भवामः। अत एव वयं ये शिक्षकाः शोधार्थिनः स्मः एते वयं छात्राणां विषये एतादृश विषयेषु मार्गदर्शनं कुर्मः इति किञ्चित् उक्त्वा अहम् अत्रैव स्वकीयं मन्तव्यं समापयामि। सर्वेभ्यः धन्यवादः। मध्ये मध्ये तत्र वयं टोकाटोकी कृतवन्तः शीघ्रं समापयन्तु इति भवन्तः क्षमां करिष्यन्ति इति विचिन्त्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादः सर्वेभ्यो नमो नमः। Thanks to the respective chairperson Dr. Ranjit Kumar Tiwari sir for presiding over the seminar and for offering his valuable time for us, and thanks to those who have placed the paper present in front of us, and along with all who are kindly watching at these seminars. With thanks. Dr. Supriya Sanju, are you here? Hello? Hello? Dr. Supriya Sanju? Yeah, I'm here. Please name the title for your paper. वैदिक साहित्य में विद्यमान संगीत साधना का वैज्ञानिक महत्व। वैदिक साहित्य में विद्यमान संगीत साधना का वैज्ञानिक महत्व। वैदिक साहित्य में विद्यमान संगीत साधना का वैज्ञानिक महत्व। Okay, ma'am. Thank you. Okay. Tirthendu Ganguly, are you here? Hello? Yes, I'm here. Please name of the title of your paper. Science and Sanatan, a study of select Sanskrit texts in terms of modern cosmology and astrophysics. Science and Sanatan, a study, STUDY, STUDY,
of select 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 Sanskrit text in terms of modern cosmology and astrophysics. Okay. Thank you. Okay, therefore, सबको नमस्ते, नमः, नमो नमः।